GST advocate on behalf of All India Federation of Tax Practitioners Eastern Zone and Bhubaneswar Tax Bar Association welcome you all to this one-day tax conference, Gyan Vikas, with the topic addressed being digital transformation in taxation. Tax transformation is a form of digital transformation that integrates processes, people, technology, and data to understand tax liabilities and forecast how decisions will impact them. The goal is to make tax tasks faster and better, lower risks and costs, and help in making smarter decisions. The digital revolution in India started with the Government of India initiating the Digital India program in 2015 for boosting growth, creating jobs, and improving productivity. Fast forward 2024, the fruit of the initiative promoting digitalization and simplification of the taxation ecosystem across India bore fruits through 4 primary parameters: improved income tax portal, increased usage of tax technology, automation and customization, and advantages of data accessibility. These developments reflect India's commitment to modernizing its tax administration and making it more efficient through digital means. These developments, and to enlighten us further on this, we shall all join for the inaugural session of Gyan Vikas, and I, on behalf of AIFTP and Bhubaneswar Tax Bar Association, welcome our Chief Guest, Honorable Dr. Justice B.R. Sarangi, Judge, Orissa High Court, our guests of honor, Sri Saroj Kumar Mahapatra, IRS, Principal Commissioner of Income Tax 1, Bhubaneswar, National President AIFTP, Sri Narayan Prasad Jain, Sri Vivekananda Mohanty, Senior Advocate and Chairman, AIFTP Eastern Zone, Sri Manas Ranjan Mahapatra, Senior Advocate, Orissa High Court and former Chairman of Orissa State Bar Council, Sri Ramesh Kumar Dhar, President, Bhubaneswar Tax Bar Association and Conference Chairman, Sri Pradosh Patnaik, Conference Secretary and National Joint Secretary, AIFTP. I welcome you all onto the dais. I request the dignitaries on and off the dais to kindly stand up for the recital of the state anthem. Bande Utkala Janani, Bande Utkala Janani, Bande Utkala Janani. Bande Utkala Janani,
वन वन भूमि राजित अंगी नीलपुधर मण साजित रंगी कळ कळ मुखरित चारु विहंगी जननी 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 वन्दे उत्कल जननी सुन्दर साळि सुशोभित क्षेत्र ज्ञान विज्ञान प्रदर्शित नेत्र जोगी ऋषि गण ओट जपवित्र जननी 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 वन्दे उत्कल जननी सुन्दर मन्दिर मण्डित देश चारु कलामणि शोभित वेश पुण्यतीर्थ चय पूर्ण प्रदेश जननी 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 वन्दे उत्कल जननी उत्कल सुरवर दर्पित गेह हरिकुल शोणित चर्चित देह विश्वभुमण्डल कृतवर स्नेह जननी 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 वन्दे उत्कल जननी कविकुल मौळि सुनन्दन वन्द्य भुवन विभूषित कीर्तिय निन्द्य धन्ये पुण्ये चिरशरण्ये जननी 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 वन्दे उत्कल 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 जननी I request the dignitaries on the dais to kindly light the lamp and spread the divine fragrance. क्या बन रहा ठीक हो गया आगे बताइए मैम कितने साइड घर दूर এটা ঘর দৌড় দপদপ লাগুন কার দিন
form of expression of ଟିକେ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ। admiration, respect and awe, I request the members of the organizing committee to present the bouquets to the dignitaries on the dais. Now I request Shri Tushar Kanta Sahu, Assistant Secretary Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a bouquet to Honorable Dr. Justice B.R. Sarangi, Judge, Orissa High Court. ଆଗେ ରହିଲା ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ରହିଯାଉଛି ଆଉ କିଛି Now I request Shri Manoj Kumar Panda, Executive Committee Member, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a bouquet to Shri Saroj Kumar Mahapatra, IRS, Principal Commissioner of Income Tax 1, Bhubaneswar. I request Shri Sushil Kumar Samantrai, Executive Committee Member, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a bouquet to our National President, AIFTP, Shri Narayan Prasad Jain. I request Shri Vikram Kumar Parik, Member, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a bouquet to Shri Vivekananda Mohanty, Senior Advocate and Chairman, AIFTP, Eastern Zone. I request Shri Niladri Keshari Sahu, Executive Committee Member, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a bouquet to Shri Manas Ranjan Mahapatra, Senior Advocate, Orissa High Court and former Chairman, Orissa State Bar Council. I request Shri Prasant Kumar Satkati, Member, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a bouquet to Shri Ramesh Kumar Dhar, President, Bhubaneswar Tax Bar Association and the Conference Chairman. I request Shri Saroj Kumar Sahu, Executive Committee Member, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a bouquet to Shri Pradosh Patnaik, Conference Secretary and National Joint Secretary, AIFTP. Now I request Shri Ramesh Kumar Dhar, President, Bhubaneswar Tax Bar Association and our Conference Chairman, to deliver his welcome address. জয় জগন্নাথ। Good morning, ladies and gentlemen. It is my pleasure to extend a warm welcome to each one of you and express my gratitude to your participation in the tax conference organized by All India Federation of Tax Practitioners Eastern Zone and Bhubaneswar Tax Bar Association. Today we are privileged to have distinguished guests and speakers who have graced the occasion with their presence embodied by excellency and dedication in their respective fields. As chairman of the conference committee, I am honored to witness the gathering of such esteemed professionals and experts in the field of taxation. I am particularly delighted and privileged to extend a warm welcome to our chief guest, Honorable Dr. Justice B.R. Sarangi, Judge, Orissa High Court, whose presence dignifies this occasion and reflects the importance of our conference. Your insights and guidance will undoubtedly enrich our discussions and inspire us towards constructive outcome. Your esteemed presence and a judicial perspective to our discussions, enriching the depth and breadth of our understanding of taxation law and regulations. We are grateful to His Lordship for his kind participation. Further, we are honored to welcome our guest of honor,
Sri Sarosh Kumar Mahapatra, IRS, Principal Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar, for accepting our request in the last moment and joined with us as guest of honor. Sir, your expertise in the matter of direct taxes is widely recognized, and your presence here underscores the importance of collaboration between the legal and financial sectors. We are grateful for your presence and eagerly anticipate the knowledge you will share with us. We are very much pleased to welcome our National President, All India Federation of Tax Practitioners, Shri Narayan Prasad Jain, Advocate, Calcutta, as the guest of honor of today's conference. Furthermore, we are pleased to welcome guest of honor, our elder brother and mentor, Senior Advocate and former Chairman OSCBC, Odisha State Bar Council, Sri Manas Ranjan Bhatta. For his inspiration and guidance, we have shaped the today's conference. Besides his busy schedule, he accepted our request and joined with us in the conference as the guest of honor. We are also very much pleased to welcome amongst us Sri Vivekananda Mohanty, Senior Advocate and Chairman of AITP Eastern Zone. His presence and inspiration has motivated us to organize such event in large scale. We have among us Sri Rajesh Kumar Patnaik, National Joint Secretary, AITP and Conference Secretary. I also welcome him for his involvement and cooperation to make the conference remarkable. We have high eminent speakers from across the country for our one-day tax conference. Generally, we see 4 to 5 speakers in 2-day national tax conference, but we have the opportunity to have such eminent speakers from different parts of the country for one-day tax conference. So we are mobilized there. CA Dr. Girish Ahuja from Delhi, Sri Prakash Rijwani, CMA Mumbai, Sri Taruna Gupta, CA Kolkata, Sri Rohit Kapoor, CA from Amritsar, Sri Anil Kumar Srivastav, CA from New Delhi. We are very much pleased to welcome them. Today's significant gathering shows how delegates are interested to hear from the eminent speakers. Furthermore, we recognize, regard and welcome to each one and all the participants and their associations across the country. Without them, success of the conference would not have been possible. Our senior members are also very important to us. Therefore, conference committee has decided to honor some of them as a token of regards in the Felicitation program of this inaugural ceremony. We have also decided to felicitate some bar associations from where at least 10 members and above delegates are present here and registered for the conference. I also welcome to all the print and electronic media for their participation in the conference. Once again, I welcome you all to this tax conference organized by Bhubaneswar Tax Bar Association and All India Tax Bar Association, All India Federation of Tax Practitioners, Eastern Zone. And I, on behalf of the conference organizing committee and on behalf of Bhubaneswar Tax Bar Association, wish everyone fruitful deliberation and a memorable experience. Thank you. Namaskar. Thank you, sir. Now I request Shri Vivekananda Mohanty, Senior Advocate and Chairman, AIFTP Eastern Zone, to deliver his address.
morning. Jai Sri Jagannath. सर टिक्के साइड जांदू His Lordship, Honorable Dr. Justice B.R. Solanki, Judge of the High Court of Odisha, Sri Saroj Kumar Mahapatra, Principal Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar, my National President, Sri Narayan Prasad Jain, my elder brother in the profession, Sri Manas Ranjan Mahapatra, Senior Advocate and former Chairman of the Odisha State Bar Council, Sri Ramesh Dhar, President of Bhubaneswar Tax Bar Association and the Conference Chairman, Sri Prados Patnaik, Conference Secretary, the former Zonal Chairman of AITP, Eastern Zone, Sri Vasudev Chatterjee, NEC members of All India Federation of Tax Practitioners, Sri Padmanath Dave, Sri Arun Kumar Das, and Sri Anand Kumar Pasari, Zonal Secretary of Eastern Zone, Sri Prasant Kumar Mishra, Sri Jitendra Kumar, Vice Chairperson for Jharkhand of the AITP Eastern Zone, members of the Zonal Committee of AITP Eastern Zone, Secretary General of the All Odisha Tax Advocates Association, our esteemed speakers, Chartered Accountant Dr. Girish Ahuja, Sri Jagabandhu Sahu Senior Advocate, CMA Sri Prakash Rijwani, Chartered Accountant Sri Tarun Gupta, Chartered Accountant Sri Rohit Kapoor, and Chartered Accountant Sri Anil Kumar Srivastav. A special mention of the new team which has come in large numbers to their first conference, Team Bhadrak Tax Bar Association, President and Office Bearers and members of other tax bar associations in the state of Odisha, members of the Bhubaneswar Tax Bar Association, members of All India Federation of Tax Practitioners and All Odisha Tax Advocates Association, members of the media, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure to welcome you all to the land of Lord Jagannath, the temple city of Bhubaneswar, and to my culture-bound state of Odisha, India's best-kept secret, and to the present edition of Gyan. The first edition of Gyan Karam, happened last month in Balasore, and this edition, Gyan Vikas, happens in Bhubaneswar today. We have selected certain topics in this conference. We are now in the threshold of GST litigation in the country as well as in our state. In Balasore, we decided on and spent time here. This edition, we are going into scrutiny and audit, and then appeals and revisions. Most probably the next edition will go into adjudication of disputes. We have got eminent speakers for this edition of the conference. And this edition will also have under the income tax, capital gains, critical issues, where we have Senior Advocate Sri Vasudev Panda and Sri Chartered Accountant Dr. Girish Ahuja speaking on the topics. I hope all of us will gain on the same. As you all know, tax laws, litigations, and rules are complicated as well as prone to multiple interpretations. The basics of a good tax practitioner is to help people and businesses understand how to comply with the tax laws the right way. I am sure the interactive sessions of this conference will bring out clear ways and possibilities in solving litigations and finally helping the taxpayer in a proper tax administration. In AITP, we started off with a conference in Balasore. This is a conference in Bhubaneswar today. We have a half-day seminar coming up on 17th of March at Jajpur. And on 28th of April, a one-day tax conference at Dhenkanal. In our future programs, East Zone will be holding its first international summit at Bhutan from the 14th of August till the 19th of August. Details have been
forwarded. Many people have registered. All are requested to kindly register for that conference. Auto Tax Bar Association is also interested to host a 2-day national tax conference at Kotak. That will most probably happen in first week of June. Details will be provided within the next few days. And all are requested to kindly join in our conferences and seminars. Thank you again. Thank you, sir. Now I request our guest of honor, National President AIFGP, Shri Narayan Prasad Jain, to present his address. Honorable Chief Guest and other guests on the dais, I'm glad to be with you in this one-day tax conference organized by AIFTP Zone and Bhubaneswar Tax Bar Association. We are grateful to Honorable Mr. Justice B.R. Sarangi, Acting Chief Justice of Odisha High Court, for gracing our tax conference as our Honorable Chief Guest. Our Honorable Chief Guest is known for outstanding performance and high standard of professional ethics as a lawyer, and also while serving in various positions. He had joined the bar in December 1985, having a regular practice in the High Court of Odisha and the Supreme Court of India. The chief guest was elevated to the bench and sworn as a permanent judge of Odisha High Court on 20th June 2013. We are also glad to have with us our guests of honor, Sri Saroj Kumar Mahapatra, Principal Chief Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar, and Sri Manas Ranjan Mahapatra, Senior Advocate and former Chairman of Odisha State Bar Council. The organizers have planned discussion on useful and relevant topics of income tax as well as GST, as our Joint Chairman told us, like appeals and revision under GST law, scrutiny and audit under GST law, capital gains, critical issues in income tax, income escaping assessment, and analysis of provisions of section 43B within bracket H, that is the payment to MSMEs. We will have the benefit of useful deliberations by C.A. Girish Ahuja and other renowned speakers on the topic. I understand that our Honorable Speaker Girish Ahuja had to go for consultancy by helicopter to some place. He returned back in the night. Instead of yesterday evening flight, he has flown to Bhubaneswar this morning by 5 o'clock flight. So he has already reached here. He will also be joining us. Hence, AIFTP is the National Organization of Advocates, Chartered Accountants and Tax Practitioners, having its more than 11,000 members practicing in different streams of profession. Our magazine AIFTP Journal and Indirect Tax Journal, as well as other publications, are well appreciated by all. Many of you are already members of AIFTP, and I take this opportunity to invite other professional friends to join AIFTP family by becoming its life member by paying a concessional subscription of ₹4 to ₹4.8. I wish the Bhubaneswar Tax Conference a grand success. My congratulations to all the dignitaries and learned speakers. Our gratitude to Senior Advocate Devatan Mahanti, Chairman is Advocate Ramesh Dhal, President Bhubaneswar Tax Bar Association. I also thank and compliment Sri Pradosh Patnaik, National Joint Secretary, in charge of each zone, Advocate Niladri K. Sri Sahu, Tushar Kanti Sahu, Advocate Gopal Singh Raut, Manoj Kumar Panda, and the entire team of each zone.
as well as Bhubaneswar Tax Bar Association, all delegates. Friends, I feel it my duty to mention my senior brothers, Sri Vasudev Panda, Sri B.N. Mahapatra, all NEC members, my friend Sri Anand Pasari from Ranchi. He has come with a big delegation. And we have, I can see Prakash Ji Rijwani coming from Nasik. And my friend Tarun Gupta Ji is here. Friends, I wish you a very enjoyable and very useful conference today. My best wishes are with you, and I am happy that I am coming to Odisha this year for the second time. Last month, I happened to go to Balasur. That was the first tax conference of this year, 2024. And with this, my humble regards to all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Now I request our guest of honor, Shri Manas Ranjan Mahapatra, Senior Advocate, Orissa High Court, and former Chairman of Orissa State Bar Council, to present his address. Good morning to everybody. My Lord Justice B.R. Sadangi, the Judge Odisha High Court and designated Judge of Chief Justice of Jharkhand High Court, a brilliant person, all through as a lawyer and judge also. He's loved and liked by every professionals of this High Court. And my dear friend Mr. N.P. Jain, I'm meeting him after 12 years. 2012 we had a very nice conference, 2 days workshop in Bhubaneswar, which was very successful with all the central minister and the chairman of the GST committee, Mr. Modi, and all the stalwarts practitioners of different parts of the country participating. That was a very enjoyable and very worthy conference that we held in 2012. And thereafter, after 12 years, I'm meeting Mr. Jain as president. Then he was secretary. So he's been promoted, the tax law is been promoted also. Then my brother, Vivek Mahanti, the chairman, is Joan. The Honorable Principal Chief Commissioner, Mr. Saroj Mahapatra. Very energetic person, as I discussed for a moment also. Mr. Patnaik, and the President of Bhubaneswar Tax Bar Association, Rameshwar Sandhara. My respected senior Vasudev Panda, Vimal Mahapatra, and all the delegates, those have come from different parts of the country, as well my dear friends with whom I was there for last 47 years. Starting my career as a tax practitioner and switching to the other side, almost after 15-20 years back. So the issue that we are deliberating, as Mr. Jain said, the GST focus, I don't know what they understand by the audit and inspection. I find the audit is only to harass, and inspection is only to go for prosecution. The only thing now I hear, the GST prosecution is more in discussion, rather than GST forum being created to ventilate any of the grievances through the council. And the council's role has been minimized. Almost we are working like a munsi rather than a lawyer to say that this law is wrong or this law is right. We lost that scope. In my career, I almost passed 3 phases of the tax evolution. When I started my practice in 77, 78, it was general sales tax. Then came in 95, 94, 95, value added tax. Then I think that value addition made me out of the profession. I said it is all added, so there is no need of mine at least to put my brain to any problem that comes to the taxpayer or the traders. Then came your latest is GST. So I don't know how far that GST war would come, because I don't have any forum called Revision of Appellate Authority as and today. The information I got. The law they made about 7-8 years back, the forum they don't create to ventilate.
I am not saying I raise the litigation, but where to ventilate? I don't have ventilation forum. I don't have a litigation forum. I heard that some power of the GST Commissioner is of review. So that review is again, I am reviewing a demand. You have to go for a pre-deposit. We understand there can be a provision for pre-deposit so far appeal is concerned. But a review is normally made on a situation where the demand itself palpable wrong, not based on correct facts. Because the authority who passes the order, he feels according to his own wish, passes an order. I need to go to the higher authority to review that this very thinking or very appreciation of this particular fact is wrong. So what is the question of pre-deposit? Pre-deposit cannot be on a review, but the law is made. So we have to think that why shall that be a slogan from all the fraternity of these tax practitioners, that why we are not creating the body, where do I go for ventilation? And I don't know what would happen to on the moment the artificial intelligence will come into focus. It is almost process. I think if people will be totally hand tied. No, artificial intelligence has said so. You have no say. What is that artificial intelligence? We don't know. How far it would be helpful to the traders or the taxpayers? That also we don't know. But I was just calculating a normal calculation. Supposing a person is spending a lakh of rupees per month for all his household work and everything. Annually I am spending, let us say, 12 lakhs. Minimum. I was calculating the normal course. The spending of 12 lakhs includes 3 to 3.5 lakhs as tax component. You calculate in any part. Spending on oil, spending on this, spending on consumer goods, spending on everything. But your apparels, whatever. You spend 12 lakhs, you pay 3.5 lakhs as a tax component to the authority. This is the country we are living in. There must be very nice deliberation. I am, as Mr. Jain said, that we opened this session in Orissa, that is at Baleswar. Now the second workshop is being taken at Bhubaneswar with Energetics President Mr. Dhal and all his companions. I am hopeful that we will be deliberating whether we will be called Munsi or whether it will be called tax consultant. This should be the thought of the day. Thank you very much. And all success to all of you to have a nice deliberation on the 4 aspects they are now saying that revision, appeal, I don't know why the subject, search and seize are not added to. Nowadays, any notice goes to a party, again, ये व्यवस्था कौन आगे 438 तो कोर्ट आगे बंद कर दी जिसों पर टैक्स इज कंसर्न 438 पूरा कोर्ट बंद टैक्स मैटर है हमें 438 कंसीडर करिए with all excuse to my not first discerning. So the only option, you are arrested, taken inside, deposit some amount, then we go for and 439. So this is the situation. We traders, taxpayers are in panic. So that panic has to be taken out. A taxpayer must be in a situation to pay happily. That I am discharging my duty as a taxpayer or a trader, whatever. And I don't know what will happen to the net trading. I don't know. Net trading, they are really catching the culprits or not. Net trading is a big scam. So I don't know, deliberation should be on that also. Thank you all. Thank you, sir. Now I would hand over to Sri Devasis Mishra for the felicitations of those who are united for the Gyanvika's success and those senior members and other bars to be felicitated. Thank you, Mitali. It is not Devasis Mishra. It has been taken over by Advocate Padmanath Dal. At the outset, let me कुछ चेहरे के जिसके मासूम
स्मियत पर हसीन मुस्कान होनी चाहिए और वो मुस्कान बरकरार रहने के लिए आपके बीच उन रोशनियों को चुनौती देते हुए थोड़ी मुस्कान से अपने दोनों हाथ उठाओ, ऊंचा उठाइए और बोलिए जय जगन्नाथ। वाह वाह वाह, क्या बात है। आपकी मुस्कान और जय जगन्नाथ के बोल से ये वातावरण पवित्र हुआ। और जैसे कि आप सब यहाँ उपस्थित हैं, पहले तो आप सबका धन्यवाद कि आप इस रोशनी को चकाचौंध कर रहे हैं। आज की इस विकास ज्ञान यानी कि ज्ञान विकास पे सभी को पता होता है कि हमें देने के लिए ज्ञान और धन होता है। ज्ञान देने में भी कंजूसाई होती है और धन देने में भी कठिनाइयां होती है। तो आप अगर दिल खोल के ज्ञान देना चाहते हैं या धन देना चाहिए तो ऐसे अनमोल अवसर नहीं मिलेगा फिर कहीं। और जिन विभूतियों को आज हम यहाँ सम्मान करने जाते हैं, उन्होंने आज तक अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने राष्ट्र में जो ज्ञान का विकास दिया है और हम सबको अभिभूत किया है, उन सभी विभूतियों को मैं एक एक करके बुलाना चाहूंगा। और ये AIFTP के जो है एथिक्स, एजुकेशन और एक्सलेंस, इनकी वो विभूतियां हैं। इन्होंने एथिक्स, एजुकेशन, एक्सलेंस में अपनी पारदर्शिता बरकरार रखते हुए इन्होंने समाज में सेवा। मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय और अतिथि महोदय को निवेदन करूंगा कि वो उन्हें सम्मान दें। एक साइड यार, एक जोरदार ताली से वाह, धन्यवाद, थैंक यू सर। के साइड हुई थी। It's so kind of you that Advocate Sri Suresh Chandra Nanda, advocate from Truli, has brought this special blessing from Sri Jagannath Dham. We are grateful, sir. Thank you very much. The next such personality is Sri Natwar Mahanti, Advocate, Bhubaneswar Tax Bar Association. I'll request on his behalf Natwar Pandaji. Thank you. Next, our own senior most member, Sri Biblanand Mahapatra sir, Advocate, Bhubaneswar Tax Bar Association.
He is the senior most AFTP member we have at present in Odisha and most probably in all India level also. Okay, तालियां कुछ कम पड़ रही है, कंजूसाई मत करिए। धन्यवाद। Thank you, sir. The next such personality is Sri Ramesh Chandra Das, Advocate, Bhubaneswar Tax Bar Association. Ramesh Chandra Das, Advocate, Bhubaneswar Tax Bar Association. Anyway, the next is also Sri Ramesh Chandra Samantray, Advocate, Bhubaneswar Tax Bar Association. Thank you, sir. Thank you, sir, for your kind presence and acceptance. Now the next is the stalwart Dilip Kumar Mahanti, Advocate, Bhubaneswar Tax Bar Association. Dilip bhai. I take the privilege to call upon Sri Santosh Kumar Mahapatra, Advocate, President, Bhadrak Tax Bar Association. Thank you, sir, coming all the way from Bhadrak and accepting our we are honored with all your presence. So I once again request all the delegates present here to clap for all the senior advocates who have blessed us and to the society and to the state and the nation in the national building. Now the turn is, कोई भी महफिल अधूरी होती है बिना संघ के। अपना ओडिशा राज्य में ऐसे ऐसे संघ है जो बहुत जोरदार है। थोड़ी एक आवाज दो और पूरा कारवां उठ के आ जाता है। ऐसे हमारे दिग्गज एसोसिएशन के बीच I'll be requesting the members of Bhadrak Tax Bar Association to be here all and take your mementos from our guest of honor and chief guest. I'll be requesting with the president and all to be here. This is the Bhubaneswar Tax Bar Association felicitating the Bhadrak Tax Bar Association. प्रेम रखिए। I'll request first take the memento and then photograph. आपण आसी जाओ तो दीजिए ऊपर। सर ऊपर आ जाओ। Bhadrak Tax Bar Association. AITB East Zone and Bhubaneswar Tax Bar Association thanks you each for your kind presence and honoring this
conference with your presence. Thank you. Keep participating in a large amount. Wherever they are in Odisha, whoever is connecting. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you each one. Now the next, my own bar. As I belong to Berhampur, I request all the President Secretary from the Berhampur Bar Association to please present here. President Ranjit Padi, Secretary Tirupati Patra, and all the members who are present, please. It is honor from Bhubaneswar Tax Bar Association and AFT Jones. Purna Hota, Brahma Babu, the senior most young member, Swarajya Sahu, Sanjay, Ajit, Uttam, Sasank, please. So, Jivan Das, the green hero. Please come, be another. This is the President Ranjit Padi, Tirupati Patra. I think it needs a good clapping. And Berhampur Tax Bar Association, for your kind information, is making his presence in all India level with 40 to 50 participants every time in the National Convention and National Tax Conferences. Keep it up, Berhampur. I am really proud of you. Thank you. AFTP is proud of you. Now the next, very near, the vibrant Cuttack Tax Bar Association. I request the members from the Cuttack Bar Association, please. Your presence in every conference is delighted and is marked with your dynamic presence, led by Arun Kumar Das, the President, Prasad Mishra, the Secretary. Keep joining, keep participating, and make more members in the FTP, because Cuttack has more than 5,000 members, I think so. And keep rocking. And our AFTP East Zone chairman will be very proud to honor them also. Yes, Balu Babu. It needs a clapping, my dear friends. Oh, the great Jagabandhu Babu and Vasu, the most youngest and senior most member. Vasu Babu actually, tango maje pake photo. Not to and Mitali also can join. Thank you, Cuttack Tax Bar Association. Keep joining, keep participating, and keep increasing your membership. You are leading. The next is very near, Khurda Tax Bar Association, led by Kailash Sharma, Dharmendra Joshi, Subhas. Very small and sweet. आइए आइए, दो तीन और को ले आइए. आसन दो सुभाष बाबू, please, hurry up. Thank you, Khurda Tax Bar Association. Now, from the Odisha Raurkela Tax Bar Association, members present here, please come out.
I saw R.K. Mishra, sir. Others members, I think they are taking breakfast. Thank you. एक अकेला काफी है इस भीड़ में. Thank you, sir. And they have made a very fabulous national tax. I think इसमें टाइगर है, वो आज कहीं दूसरी जगह पे है. टाइगर तो जिंदा है लेकिन अभी कहीं है. आएंगे, टेक्निकल सेशन में आएंगे. चलो, टाइगर अभी जिंदा है. Thank you, Jamshedpur, for coming all the way to Bhubaneswar and gracing this occasion with your kind presence. The next, Jharkhand Commercial Tax Bar Association, led by our Anand. आनंद ही आनंद है, जहाँ जाते हैं आनंद ही फैलाते हैं. पूरी टीम जामशेदपुर रांची से इन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन करके ही आए हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी उपस्थिति के लिए. फोटोग्राफ I request our guys to please take their seat. Thank you, sir, for giving. Now the main felicitation is any conference needs dedicated volunteers, their time, their sacrifice. I'll be announcing certain volunteers who have given their all the time for this conference. The first, let me start from Tushar Khan, Sahu, convener, conference committee. All the postings, all the registration, payment, and all rounder in this conference is Tushar Khan, Sahu. इनके लिए ताली तो बनती है मेरे भाई. जोश भर दे, क्योंकि इनको 5 बजे तक खड़े पैरों में रहना है आपकी सेवा के लिए. नेक्स्ट, गोपाल चंद्र राउत, चेयरमैन कोऑर्डिनेशन कमेटी. Tall and sober man with a smile, works with, gives you all the comfort. Next, Tirop के सभापति, वाइस चेयरमैन रजिस्ट्रेशन कमेटी. Still busy with registration. Yeah, no, he has already come, I think. Is that? Yeah. So he had a very hectic in the morning session. Next, सरोज कुमार साहू, वाइस चेयरमैन फाइनेंस कमेटी. अगर धन नहीं तो मन नहीं, मन नहीं तो फिर ज्ञान कहाँ गया. तो आइए, धन के कुबेर खजांची सरोज कुमार साहू. The next is Manoj Kumar Panda, Chairman Accommodation and Transport Committee. Manoj Kumar Panda.
The next is a member who is dedicated on behalf of the Bhubaneswar Tax Bar is Narendra Kumar Das, the member. Oh, one more. I think Sri Sushil Kumar Samantrai, Chairman, Registration Committee. Sushil Kumar Samantrai. Yeah, right from the registration count, I hope so. And next is the chairman of the finance committee, Niradri Kesari Sahu, the main Kuber. Niradri Kesari Sahu. Yes, he required a big finance. Big clap. And the last member of the BTPA, please. Okay. Thank you very much, sir. Thank you very much. Please have your seats. With this, we are concluding the felicitation of the all esteemed association, senior members, and all the conference committee members. Thank you very much for giving. Thank you. I hand over to Vidavina. Thank you, Dalit. I request Sri Inaugural to kindly introduce us to our guest of honor, Sri Saroj Kumar Mahapatra, IRS, Principal Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar. Thank you very much. Sri Saroj Kumar Mahapatra belongs to 1994 batch Indian Revenue Service. He has to his credit a brilliant academic career. After completing his BTech mechanical from Pisut, Burla, he joined ISRO as a scientist and worked there before joining the coveted Indian Revenue Service. He worked at Delhi and Mumbai between 1994 to 2015 in various capacities. On being transferred from Mumbai in 2016, he was posted as Commissioner of Income Tax Administration, Odisha. Presently, he is working as a Principal Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar. During his tenure at Bhubaneswar, he completed from Utkal University and is pursuing PhD degree in urban management from Javier University, Bhubaneswar. Cycling is one of the main hobbies of Sri Mahapatra. He has taken part in a number of cyclothons in Odisha and Pan India. Trekking and meditation are his other hobbies. With these few words, I introduce Sri Saroj Kumar Mahapatra, Principal Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar, to the August gathering. Thank you. I request Sri Saroj Kumar Mahapatra, IRS Principal Commissioner of Income Tax, Bhubaneswar, to present his address. Honorable Justice Dr. Sarangi, other dignitaries on the dais and off the dais. At the outset, let me wish a very good warm morning to all of you. I am really privileged and blessed to be in this August gathering in this beautiful morning. And I think I am the sole representative from Income Tax Department. So I'll be briefly touching few issues confronting the department, but which is having repercussion on taxpayers and as a corollary to the Tax Bar Association. As you all know, two certainties in life. One is death and other is tax. Nobody likes this, but sooner or later we have to embrace the hold of these two.
And now, as part of income tax department, which garners almost 50% of the revenue of Government of India, so it is our bounden duty to see that we are getting due tax. I am emphasizing due tax from the public. For this, we need the cooperation from everybody: chartered accountants, tax practitioners, association, all in one go. I am really happy that on such type of gathering, you are inviting us to be part of this. In our role as tax administrators, definitely tax bar association plays a major role. Without the cooperation of these associations, practitioners, chartered accountants, we cannot discharge our duty flawlessly. Of late, you know, Income Tax Department has now transformed into a service-oriented department. Maybe 1 decade back, it was totally enforcement-oriented. Grievances of the public was not having any forum to be redressed. Now, because of this sea change in our mind, that it is a service-oriented department. When it is a service-oriented department, I mean taxpayers' grievance should be the prime focus of the department, because our whole sustenance is based on taxpayer. Unless taxpayer is there, no department, no tax department, including income tax department, can have its presence. As service-oriented department, when there is a grievance, naturally I expect any association will bring these grievances to our notice at the earliest. As you know, of late we are having two major portals for grievances, that is Inaugural and another is CP Gram grievance. As part of tax bar association, everybody will be knowing. Still, I will just harping on these two issues shortly. Inaugural portal, you can lodge your grievances, and within a reasonable period of time, it is expected that it will be sorted out. If it is not, more important, I am emphasizing more important is that it's CP Gram grievance. There everybody is aware, it is coming under Prime Minister's direct focus, that is PG portal. In that, the day you are lodging your complaint, that day it goes to PMO straight, and this meter starts from that day. So even if it takes few days to come to CBDT, if it is pertaining to Income Tax Department, and it comes to me late, but timing starts from day 1. The moment it reaches me, even if 25 days, 30 days, 40 days have passed, but counting will be from the day 1. So it is expected that within 30 days I am emphasizing from the day of lodging of the complaint, it is expected that it should be resolved. If not, maximum within 60 days, unless it is resolved within 60 days, mind it, CBDT chairman is personally accountable for this grievance, and any time he can be hauled up by Prime Minister's office. So why I am telling this? Because the service-oriented department, now this focus, the taxpayers' grievance focus, now it is the hallmark of Income Tax Department. Other two aspects are definitely dealing. Everybody will be knowing CPC Bangalore, that is Central Processing Control Bangalore. Because of fields advent, now almost 90% of the income tax returns are processed very swiftly. And maybe even there are instances within 1 week also, people are getting their refunds. Mind it is no human intervention is there, only machine does that. Pre-programmed, of course, AI has not come into till now, but it is pre-programmed, so 90% of the cases, it is resolved, it is processed. But 10% cases where machine cannot take a decision, it is expected that human intervention will be there. So in that time, whatever feedback comes from CPC, immediately feedback has to be given to CPC. Now, please do in this fashion. If human intervention is a must, computer cannot process, then please make a request. Now please push it to my assessing officer. Because of this knowledge gap, because we are going on telling that you do, machine cannot do. Some of the things machine cannot do. Unless it is programmed, machine cannot do. So in that time, if we are giving rectification 150 one time, it is not happening. That means kindly understand, machine cannot do.
Now your request will be, please push it to your assessing officer. Once it is assessing officer, now it comes to my jurisdiction. After that, if it is not resolved within short time, maybe 1 week or 2, then please let us know. We are here to resolve that. Unless it is pushed to me, irrespective of the year, we cannot do anything. So this knowledge gap, I want that this should be plugged. Please circulate this knowledge that whenever it is not possible by basin intervention, so please push it to human intervention to the concerned you. Last 2-3 years we know this faceless. I am not going to the merits or demerits of the faceless, but I will definitely urge my association friends that before faceless, when we are discussing across the table, that time convincing of your stand to the officer is easy. That time that emphasis on written representation is not so much, because you can convince, you are sitting across. Now because of this faceless, unless your written representation is to the point, naturally no other person, you will see it properly. So my request is, don't give voluminous documents when you are giving this faceless. You just make it to the point. When crux should be there in few pages, don't give 100, 200, 300 pages. As a result, officers are losing interest. Because I don't know the new generation, all the old generation fellows, including me, we cannot read 100 pages online. We expect if it is 100 pages, at least some hard copy should come to me. But my faceless system wants me to see that 100 pages, 200 pages, 500 pages online. So people become, the faceless system has made people very, very irritating. So they don't see the merits of the case if it is very, very voluminous. So I want to urge everybody, in faceless system, please give very to the point representation. If it is not possible, now this video conference has started. So please make a request for video conference, so at least job will be easier, so officer can understand. As I have told you, without your cooperation, income tax department cannot sustain. So every time in each fora, I have been requesting for your cooperation throughout. One latest trend I will be taking, I will be now giving that example. Last 3 years we have seen, because of scrapping of scrutiny for salary cases, some unscrupulous taxpayers with the connivance of some chartered accountants or tax practitioners, they have lost fraudulent claims. As a result, during last 3 years, this refund, because of salary, because salary refund normally does not happen much. Refund of salary which was to the tune of 400 crore, during last 3 years it has become 1200 crore. It is mind-boggling. There has not been substantial rise in salary taxpayers. There has not been substantial change in Income Tax Act, but this 400 crores to 1200 crore refund, now it has come to the radar of the department. We have taken it as a special drive. It's a mission mode that we are urging all the DDOs, all the HODs of the departments, because Odisha is a state where salary holders are mostly government or public sectors. Private sectors are less compared to other metros. So we have sensitized all the HODs, all the DDOs to just spread the awareness of this, that some false claims, fraudulent claims have been lost. So let us revise it. So I am trying to sensitize all of you here. So let us revise or update our return, give our due tax and interest, whatever it comes. For this, without your cooperation, we will not be able to achieve this. So this forum, I am utilizing this platform to sensitize everybody, to help us to garner more revenue, to make this country as a more robust, having more robust economy and a developed country. I wish a thumping success for this program and wish all the best for all the members present here. Jai Hind, Jai Jagannath. I'll take 1 minute before our honorable chief guest address our gathering. We have Dilip Kumar Mahanti, the senior advocate from Bhubaneswar. Yes, sir. Your presence is required, and I request.
Thank you, sir. Thank you, sir. Now I request Srinatapur Panda to kindly introduce us to our chief guest. Thank you, Mitali ma'am. It is a Herculean task to introduce Dr. Justice B.R. Sarangi to the August audience. However, for the formality's sake, Honorable Dr. Justice B.R. Sarangi was born on 20th July 1962 in the village Pantikari Sasan, Bodoga, in the district of Nayagarh, in the respectable Sarangi family. As the youngest son of late Panchani Sarangi, who was the former financial advisor belonging to senior class on Odisha Finance Service, and late Soyaba Sarangi, mother. Married to Mrs. Nirupa Sarangi, an out-and-out housewife, turned as an advocate of the Odisha High Court, whose ungrudging moral and mental and physical support allowed him to have a smooth sailing in the professional life. He has been blessed with two brilliant daughters, Dr. Devarchita and Devasmita. Dr. Sarangi passed HS examination and studied commerce with honors from BJP College, Bhubaneswar, acquired LLB and LLM from MS Law College, Cuttack, under Utkal University, Bangalore, awarded PhD in law from Sambalpur University, and has acquired many prizes and awards in his academic achievement. He joined the bar in December 1985, having regular practice in the High Court of Odisha, Supreme Court of India. He is the live member of Odisha High Court Bar Association, Civil Court Bar Association, Criminal Court Bar Association, and a Central Administrative Criminal Association. Most significant career move as a lawyer began his systematic and meticulous training in almost all the branches of law in the Chamber of Esteem, led Gangadhar Ratha, former senior advocate, and the then Advocate General of Odisha. A jurist, a scholar of high repute, and was a great constitutional lawyer. He acquired all steadiness, accuracy, and clarity of thinking from his senior. He conducted cases in civil, criminal, constitutional, revenue, tax, labor, service, mining, education, electricity, insurance, banking, telephone, etc. in his life as an advocate. He appeared for the private parties and many corporations, and he was arbitrator, advocate commission, and amicus curiae to assist the court in many important matters. For outstanding performances and high standard of professional ethics as a lawyer, he was conferred Haricharan Mukherjee Memorial Award with the gold medal for the year 2002 from the then Honorable Justice P.K. Balasubramanian, Chief Justice of Odisha High Court. He completed a long 27-year practice before he was elevated to the bar. He was elevated to the bench, He was elevated to the bench and shown as a permanent judge of Odisha High Court in June 20th June 2013. He was the acting Chief Justice of Honorable Odisha High Court for some months, and his name has been recommended by Collegium of Supreme Court as the Chief Justice of Jharkhand High Court. With these few words, I introduce Honorable Dr. Justice B.R. Sarangi to the August audience. Thank you. Now I request our chief guest, Honorable Dr. Justice B.R. Sarangi, Judge, Odisha High Court, to present his address. Jai Jagannath. Very good afternoon to all. Respected Sri S. Mahapatra, the Chief Commissioner of Income Tax,
one specified goal, sir. The today's guest of honor, my esteemed elder brother, Mr. Manaschandra Mahapatra, senior advocate, my esteemed friend, Mr. Vivekanand Mohanty, senior advocate, the Mr. Jain, the president of the federation, Mr. Dhal, the president of the Bhubaneswar Bar Association, the chairman of the Bar Association, Tax Bar Association Bhubaneswar, Mr. Prabodh Patnaik, the secretary of the conference. Nonetheless, all these members, those are representing from this zone, present here, I welcome you all to this temple city of Bhubaneswar for this auspicious occasion, and I must feel at home because today I am a adorned chair of Judge of High Court of Odisha, but I never forget my past, and I have enjoyed like you for last 27 years as a member of this bar association, and I belong to the bar, and my mother is my bar, and tomorrow if I quit the office, I will also go to the bar and sit along you to have self-motivation. Really, it's a great privilege for me that I am with you in this auspicious occasion, because we are moving a very transition period of tax culture in this country. I can understand when initially a tax practitioner was doing his practice, he was supported by a team of people. Maybe he may have some accountant, he may have some clerks with him, he may have some person who will assist in the accounting itself, and the persons those are seeker of the tax remedies, they have to come, they have to show their books of accounts. The same is taken note of by your munsi, then the same when notice will given to you, then you produce those books of accounts before this assessing officer. The assessing officer will go through all the records physically. Thereafter, then assessment is made, then assessment is subject to appeal, then second appeal, then review, then reference. These are the forums which are available when you are doing tax practice manually. But with change of situation, now with the transformation has come, and we are now adapting a technology to the tax adjudication system itself. Therefore, today's theme is digital transformation taxation. Is a very, very important vital issue which requires a thorough deliberation and which requires. I understand that erudite persons have been selected to adjudicate, to have this deliberation, namely Dr. Girish Kumar Ahuja, Sri Prakash Rajwani, Sri Tarun Gupta, Sri Rohit Kapoor, Sri Anil Kumar Srivastava. They are all master of their own subjects. Therefore, I need not give any comment on them. Rather, I encourage them to share their views to all the august audience who are present here to have their sharing of knowledge, so that at least with their knowledge, each of the members of the tax bar association will be enrich themselves in the process of adjudication of the tax practice. Now, I can say that whatever experience I have got as a judge sitting in tax bench, I understand that the process which are now adopting in the process of tax administration, everything is fixed time. Suppose last date is fixed, for some reason or other, a assessee or the dealer could not able to appear before this assessing officer and fix a time. In that case, it is bluntly refused. Suppose some assessee is admitted to hospital, not able to come to the court, not able to come to the assessing authority. But in that case, straight rejection was there, no consideration, no appeal thereafter. Then he lost and say that your case is bar by limitation, therefore not consider your application. So these are the maladies a assessee or a dealer faces when at the threshold is not given the opportunity of hearing. Thereby, in broader sense, I can say, if you not give the opportunity, then it violates principle of natural justice. Then it's his right that we are not taking care of. I may humbly request
this authority, those are looking up to the issue, they may also say that, sir, we are also bound by law. We can't go beyond the law because the law has fixed a time limit for disposal of the matters. Even that is there also. There must be some proviso clauses. There must be some relaxation. There must be some power given to the authority to have the condone the delay. But condonation delay power is also not there. That is malady of the provision of law itself. Therefore, the assessee and the dealer, they face a lot of difficulties for that purpose. I am taking strong exception to the statement that with the connivance of the chartered accountant or the officers, something wrong has been done. Our answer is absolutely wrong. There is no question of any connivance. It is the question of the fact that you have to take care of the law within the framework of the provisions of the statute. If you go beyond that, then naturally one has to say that this is not proper law to be considered, and that is to be taken care of in appeal. Unfortunately, what has happened, we have entertained some applications. Even if the first appellate court rejects the application on the ground of limitation, the second appellate forum is available for them under the statute, but same has not yet been constituted. I don't know why. Region is very, very allowed. Because it gives a burden on the High Court to entertain such applications because we don't see that any of the persons would go remedialess. Therefore, we are entertaining the application, permitting them to deposit certain amounts so that at least the state exchequer will be secured that they have been protected by passing on some entry order of paying 10%, 20% amount, and matter is awaited till the second appeal is adjudicated by a competent tribunal duly constituted by the competent authority. But unfortunately, we have passed through last 8 years and 7 years. Till date, it has not been constituted, and in the process we are saying we are adjudicating the law. How you adjudicate the law? The big question has come to our mind that this question of adjudication of law can only be done when the matter is being heard properly. The hearing of the party must be very, very strong in the sense that you must hear the petitioner, you must see the other side, and thereafter you must apply your mind and pass the order. Now, because of the faceless adjudication, there is no question of hearing, only throw some papers. The paper will look into the authority, how he is applied mind, in what way he is doing, that nobody knows, and ultimately the order is coming, that this order is passed. And I also take exception to the fact that if the voluminous documents are relied upon by a party, that cannot be thrown out on this plea that your application must be precise one. This should not be contention of any of the adjudicating authority, whosoever he may be, in whosoever position is standing. Fact remains, suppose certain documents have not been considered by the assessing authority at the time of assessment. Those documents are placed before the assessing authority. Then in appeal, the assessee is bound to place those documents for adjudication. Say, look here, I produced these documents have not been taken care of, and that too, these documents left out. Had this document been taken into consideration, naturally the decision has not come out in this way. Therefore, in that case, the appellate authority is bound to apply its mind and look into the document which is produced by the assessing authority and pass an order. But if it's asked for filing only one sheet of paper indicating what is your case, just tell me one sentence, two sentences, three sentences, and leaving aside these documents, then in that case, the wrong is committed by this appellate authority, and you are to take serious steps for that purpose, and you are being a tax petitioner, you should not leave those officers to do in that way where they are excluding these documents to take into consideration. Because these documents are very, very important for the purpose of just adjudication of the case. I understand that everybody is bound by their own jurisdiction, but that jurisdiction cannot be transferred the limitation which is provided under the statute itself. I understand that yes, if the first appellate also committed some mistake, then in that case, when the second appellate lies, then in second applications also, the things have to be done in a proper manner, and that to know where law precludes to file documents which he relies upon for the purpose of adjudication of the case itself. Therefore, I, in my humble view, request each of the tax petitioner, don't precise your grievances, rather you must elaborately explain the position. You may not know, this point, one point may not strike your mind,
second point may you succeed. Therefore, trial and error method has to be taken into consideration while preparing appeal and second appeal when it's required. Why I am saying so with my own experience. When my senior was the advocate of the state and I was assisting in one case, I was arguing a second appeal matter before very erudite judge of civil law. I said, sir, I argue the matter. These are the points you have taken in the second appeal. And I argued in all these points. Go to second one. If that point fails, you go to third one. Because you don't know the mind of the court, where he can struck off and where he can deliver the goods to you. So these are the methodology which you adapt at the time of arguing a case, and you are the tax practitioner. You have to have given an opportunity to argue a matter, to place matter before the adjudicating authority, to say that these are my points, and these points, if I not succeed, and I don't succeed. So these points have to be placed before the adjudicating authority for adjudication. Maybe in faceless one, if it is faceless one also, you take all these points which are required for the adjudication. Let the adjudicating authority apply his mind. Without application of mind, nothing can be done. Then you have to place people when it comes to scrutiny before this High Court. You say that I have taken this point, but the adjudicating authority has not taken this into consideration. Then you can have something to say. If you precise your points and you precise your grievances, then nothing will remain for you for adjudication before the High Court. So these are the forums you have to be very careful. We are prepared to assist the development nation by paying the tax. None of the assessee, none of the dealer is wishing not to pay the amount which is due to him. He is willing to pay the due amount which is liable to pay under law. If his due amount is determined properly, then in that case he may not have any grievance saying that no opportunity given to me, nothing has been done, therefore I will not pay. Tax evasion and tax it is absolutely a punishment on the part of a assessee. One cannot evade the tax assessing authority, but the assessment has to be done in conformity with provisions of law, not beyond that. In that position, since now we are entering into the arena of this technology system, I can point out one thing. In our High Court, we have transferred everything like so far the degeneration papers are concerned, filing of cases are concerned, and the record keeping also done by degeneration method. But to certain extent, these are admissible. But so far the adjudication part is concerned, it requires full adjudication, full application of mind by the payer officer. If you say the High Court just should sit and AI should be implemented and AI should decide the question, then we are nowhere near finished. And there is no need of appointment justice. There is no need of an application of mind. There is no need of any application to be filed before the High Court or before the Supreme Court. Now the question is that assistance has to be taken of the technology to the extent of filing. I am just giving one example. So far the bail applications are concerned, we are doing one thing, that you file on email basis, then it will be stamp reported. Whatever defect is there, then stamp reporter will give message to the concerned lawyer saying that your application defective 1 to the section 1, 2, 3, 4, 5. Kindly remove these defects within 7 days. Then the lawyer immediately rush to remove the defect. After removal of defect, it will automatically move to the listing section for getting listed. Once, and it will go to appropriate place for listing so that matter can be taken up by the concerned court. So this is the technology helps to this extent to minimize our time, to minimize our speed, to minimize our other way of approach the things, because to get a matter listed before the court, it is very difficult and you have to research many methods which I will not say in the publicly, and that method has to be eradicated, and that methodology which has been eradicated now we have taken the steps that it should be done automatically so that the lawyers should be happy. And it has in fact we have become successful by this way, because nobody is running up and file to get the matter listed. It is automatically listed before the court when it is become defect free. If it is not defect free, it will not be listed. Therefore the lawyer knows I have to file a flawless application before the court for taking off as quickly as possible. If it is defect free, there is no need of running up and file, there is no need of pursuing this set, it will automatically listed next day before the assigned bench. So the technology has got its own importance in certain spheres. So for education part is concerned, I may say that
this may not be a proper assistance to the adjudicating authority. Maybe he may take resort of the fact that he may get on email the application, he may get the documents from the email, but that is still not suffice because there is no application of mind. When you file an appeal, you must indicate that the assessing officer has not applied his mind, therefore the order should set aside. This is one of the grounds. If there is non-application of mind, certainly you have to see in what respect the assessing authority has not applied his mind. Then you have to verify, yes, this point has been taken, these have not been considered by the assessing authority, therefore the order has to go and that is remitted back to the assessment reconsideration. In such position, if the assessing authority or any appellate authority or the second appellate authority or the reviewing authority, whosoever may be, will not apply his mind, then in that case, you cannot say that the proper adjudication of the case itself and that itself is a great failure of justice on the part of the adjudication system. Thereby, the theme is the digital transformation in taxation that has to be taken care of these aspects, and more so to certain guidelines which may not, and maybe it's called statutory one, but still that has to be in consonance with the provisions contained in the Act and rules itself. And that too, the civility guidelines, if it is in consonance with the provisions contained in the Act and rules itself, then in that case, the guideline cannot supersede the provisions of law, rather it should be in conformity with the provisions of law so that everyone will abide by that. In that matter, I request that these questions are to be deliberated and considered by the eminent speakers, those who have been come from all the way from different places of the country, and this adjudication process can take care of the issue while considering making a deliberation. I hope and trust you will all be educated by the deliberation. I wish that the conference, the seminar, to come out successful. Thank you all for giving the opportunity today. Thank you, my lord. As a mark of respect, we would present mementos and victorias to the dignitaries on the dais. I request Sri Ramesh Kumar, our President, Bhubaneswar Tax Bar Association and the Conference Chairman, to present a memento to our Chief Guest, Honorable Dr. Justice B.R. Sarathy, Judge, High Court of Orissa. Senior Advocate Shri B.M. Mahapatra, Founder Member, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a memento and victoria to Shri Saroj Kumar Mahapatra, IRS, Principal Commissioner of Income Tax Bar, Bhubaneswar. Assistant Secretary, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a memento and victoria to our National President, Shri Narayan Prasad Jain. Now I request Shri Diptiman Mohanty, Member, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a memento and a victoria to Shri Vivekananda Mohanty, Senior Advocate and Chairman, AIFTP Eastern Zone.
Now I request Vice President, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a memento and Uttarvyo to Sri Anasranjan Mahapatra, Senior Advocate, Orissa High Court, and former Chairman, Orissa State Bar Council. Now I request Shri Devasish Mishra, Joint Secretary, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a memento and Uttarvyo to Shri Ramesh Kumar Thar, President, Bhubaneswar Tax Bar Association, and our conference chairman. Now I request Shri Niladri Kesari Sahu, Executive Committee Member, Bhubaneswar Tax Bar Association, to present a memento and Uttarvyo to the Conference Secretary, Shri Pradosh Patnaik, National Joint Secretary, AIFTP. Now I request Shri Pradosh Patnaik, National Joint Secretary, AIFTP, to present a memento and a Uttarvyo to Shri Jatumani Sahu, Advocate and Vice Chairman, AIFTP, Eastern Zone, Odisha. Shri Jatumani Sahu. Come to the end of the inaugural session of Gyanvikas, and I request Shri Pradosh Patnaik, National Joint Secretary, AIFTP, and Conference Secretary, to deliver his vote of thanks. Jai Jagannath. Good morning all. It gives me an immense pleasure to express my gratitude to all the present in this gathering. Honorable Justice Dr. Vineet Charani, Judge of High Court, the Chief Guest, His Conference Secretary, all India Federation of Tax Practitioners, Eastern Zone, in association with Bhubaneswar Tax Bar Association. The theme is digital confirmation and taxation. I, on behalf of the conference committee and on my behalf, express a deep sense of gratitude to your lordship for sparing a valuable time on this Sunday morning, inaugurating the conference as a chief guest, and encouraging us with your words of wisdom. We are really thankful and grateful to you, Lord sir. Sri Sarosh Kumar Mahapatra, IRS Principal Commissioner of Income Tax, Ward Bhubaneswar, the guest of honor of this conference, is here to this occasion. We are really thankful for his valuable time and words of wisdom. Sri Anasranjan Mahapatra, Senior Advocate and former Chairman, Orissa State Bar Council, the guest of honor of this conference, is announced this. We have always received encouragement and all sorts of help for us in this conference. We express our deep gratitude to him. My President, Sri Narayan Prashant Jain, Advocate, FPP, is the team leader of AFPP for the year 2024.
He's a renowned writer and published many books in income tax, especially known book How to Handle Income Tax Problems is one of his finest publications. We are really thankful for you, sir, for being inspiring us to speech of inauguration. We express deep gratitude of your kind presence. Sir Vivekanand, Senior Advocate and Chairman, All India Federation, Eastern Zone, 2024. He has been elected as the Zonal Chairman from Odisha. He has shouldered the responsibility to organize this conference during his tenure as the President of the Odisha Tax Bar Association. He was the past Vice Chairman of All India Federation Eastern Zone in Odisha and so in NEC member of FTP. The conference committee is thankful to him for sparing his valuable time to organize this conference in a success. Delegates, invited guests, senior members of the bar, past presidents of BTPA, past presidents, vice presidents, FTP of Christian Zone, senior advocate Simulan sir, Vasudev Panda sir, past vice president Anand Pasai, and his team from Ranchi. My friends from Jalpaiguri, past chairman Christian Zone Committee BTPA, all of his peers, the top, all of the members of Christian Zone 24-25 from Odisha and other states, NEC members present here, life members of FTP, presidents, secretaries, and members of all different tax laws across the state, FTP members coming to attend this across the country. I, on behalf of the conference committee, BTPA and FTP, myself express my gratitude to all for your kind presence in this tax conference. This conference would not have been successful without your presence. Last and not the least, if I fail in my duties to express my gratitude to the MOC, Vikali Jesse Advocate, and once again I thank you all. Thank you. Thank you, sir. By this, we end our inaugural session. I would request the dignitaries on Last I will also Justice Dr. B.R. to felicitate our Madam Mitali. Next, master of ceremony, Mr. Padamnath Dave. Please. Talia.
of the dais are kindly requested to stand up for the recital of the national anthem. भाई आनंद तुम्हारा फोटो ले लेगा सुपर फोटो आया Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. ସେଇଟା ମେନ୍ 4 ମିନିଟ୍ और जीवन भाई सब कुशल मंगल ଭାଇ ତମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଜଗିଥାଅ
ସବୁ କନଫରେନ୍ସ ଏମିତି କୁହେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇପାରେ These two are having. अरे कुआर तुम गल କଭରେଜ
All the members are requested to attend, please. Now the first technical session is going to start. Now the first technical session is going to start. Appeal in the division under the GST law. The dignitaries on and off the dais, as well as those outside the auditorium, are requested to kindly join in for the first technical session. The dignitaries also are requested to kindly put their mobiles on silent mode. Kindly please join in. The keynote to be addressed in the first technical session is Appeal Division under GST law. And the chairman for the session is Shri Jagabandhu Sahu, Senior Advocate, Orissa High Court. And the speaker is Shri Prakash Rijwani, CMA, Editor, Click on GST World Mumbai. And the vote of thanks will be given by Shri Prasant Kumar Satpathy, member Bhubaneswar Tax Bar Association, who shall also join in. The organizing committee members are requested to kindly present bouquets to the dignitaries on the dais. Can you please settle down? Now I hand over the session to our chairman, Shri Jagabandhu Sahu.
ଭିଡ଼ିଓଟା ଧରିତେ ଫଟୋ ମାରିବ ଦେଇଦେଲା ପରେ ଫଟୋ ମାରିବ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ ମୋଡ଼ କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିବି କ୍ୟାପଚର କରି ଫଟୋ ଉଠଉଛି ସେଟା My dear friends, good afternoon to all of you. This is the first technical session of this deliberate of appeals and this Good afternoon, friends. This is the first technical session in today's national seminar to deliberate on the topic appeals and revision under GST law. It's a marathon opening today with deliberation from guests. Justice Sarangi we have heard at length. The topic chosen is a general topic. I have to have only some keynotes for my friends, and this will be addressed in detail by our speaker, my friend Mr. Prakash Rijwani. Primarily, every one of us, we are professionals, be a chartered accountant, be a advocate, be a tax practitioner. Right from the very beginning, whether income tax or sales tax or excise or service tax or customs, we have been filing appeal. But one thing let me share with all my friends, what appeal is, what a kind of right is. Appeal is not a fundamental right. It's a statutory right. A right given in a statute. And the contours of the right, parameters of right, those are only codified rights which we cannot traverse. Honorable Supreme Court, way back in 74, has held that appeal is a statutory right in Gangabai versus Vijay Kumar's case, and it is followed in many others. So without going much deeper into that, while coming back to GST, the appeal starts from section 107(1). It speaks from person aggrieved, any person who is aggrieved by an order of adjudication, he can approach the appellate authority, and it must be by a decision or order. The peculiarity of the words used in under section 107 is a decision or order. I was also examining right from when the statute was in operation in 2017. Now, what is decision and what is order under GST law? These are not defined connotations. Order is defined under Civil Procedure Code, under section 214 of the Civil Procedure Code, order. It's a declaration, expression of decision by the court, that is order, section 214. But decision, it doesn't bear in definition. And the peculiar feature, if you reconcile section 107 with that of the words of section 112, appeal before the tribunal and appeal before the appellate authority, you will find there is a marked difference. Appeal filed before the appellate authority emanates from an order, not from decision, which you find under section 107. And you can also, analytically, if you analyze the connotation decision order, vis-a-vis taking into account the provision section 121, that says which are the decisions and orders which cannot be appealed against. Section 121 of GST Act. And if you find section 121, that will take you to a very mysterious situation that says that order of the commissioner transferring the case from one officer to the other, order pertaining to seizure, search, or order sanctioning prosecution, and lastly, any order passed under section 80. 80 means that is payment of tax, order for payment of tax in installments.
So these are orders. No decision is there. So therefore, if we reconcile the expression of orders and decision, it rests on a very thread line, very narrow thread line. Even the definition of order under CP says the expression of decision. That means order is nothing but a communication of decision. But the difference between that is a marked difference. What is that? An interim order can be an interlocutory order, interim order. It can be a final order. Or in the interregnum, there can be several orders at different stages of a proceeding. Those are orders. But decisions, that comes only once, when the proceeding culminates. But in any case, these are all, I can say that intervening things which may not produce much, be it decision or appeal, these are all appealable. Now, it must be passed by an adjudicating authority. No appeal can be filed under 107 unless the order or decision is passed by an adjudicating authority. Adjudicating authority itself gives a definition under section 2(4) of the GST Act. All of us you know. Then it must be to the appellate authority, order of appeal must be filed, and period is 3 months. Then 30 days, more time is granted to the appellate authority in appropriate cases where sufficient reasons are there. And next is the mode of filing, 108, Rule 108. There is still a controversy we are trying to resolve in the High Court, but it could not be resolved because of strong opposition or the evasive way. So Commissioner till today has not notified the mode of filing appeal. Allahabad High Court and various other High Courts have come up with judgment saying that in absence of any notification by the Commissioner, either of the mode is permissible. But unfortunately in our state, you are only allowed to file appeals by electronic mode, not by manual mode, even if there is no notification by the Commissioner. Unfortunately. Then comes Civil Administration Department. Unfortunately, there is a discrimination between the time period granted to the taxpayers and government. Despite the fact government is endowed with so much of people, so much machinery, they are given 6 months time and we are given 3 months time. In any case, now coming back to the question of pre-deposit. Pre-deposit, as you know, we have to pay 10%. First of all, we have to pay all administrative tax, penalty, interest, everything. And 10% of the tax to maintain an appeal. Otherwise, you can't knock the door of the appellate authority. Now, the hazard which flows from the provision is the judgment of Supreme Court. Everybody is a sufferer. I can say all friends present here must have suffered from the judgment of Singh Enterprises, which says, if the legislature to its wisdom thought it fit to grant 30 days more time, no High Court, nobody else on earth can extend for 1 more day, even if heaven falls. Be it medical ground, be it any force majeure, whatever may be the ground. Of course, force majeure situations have only been taken care of by Honorable Supreme Court by a so-called writ petition to come across the delay arising from out of the pandemic 2020. And from 2020 to 2022, for a period of about 2 years, Supreme Court has condoned delay. Even if wherever statute provides, in any statute, there is any limitation provided, automatically 2 years time, that 2020 starts excluded. And the 90 days will be reckoned from the end of that period. So that is a solace to us, but that cannot be a solace for all situations. Situation may so arise, a taxpayer maybe during the period for which required to file appeal may have some medical issues, may himself suffer from any problem. So therefore, any situation may arise which might have deterred him not to file appeal in time can never be prevented by operation of the provisions of the 107 of the GST Act. And no High Court, no Supreme, nobody can help you because that is a declaration of law under Article 151. Now, let me switch over to revision then. What is the distinction between revision and appeal? Unlike revision under central excise law or prior to GST VAT law,
revision was available to be filed under income tax law also, 264. Assessee was required to file revision. It's a person who misses the train also can catch later under income tax law. If you have not filed appeal period expired and the time limit has expired, then also you can catch the train by receiving revisional remedy. But here, if you lose appellate remedy, then the revisional remedy is only available to the commissioner under section 108 of the GST Act. What the commissioner will do? Commissioner will, under section 108, call for and record examiners. Second, there is one line mentioned in 108. All the friends we are present here, we have to take a chance because I find nobody has yet ventured. I don't know repercussion that will fall upon if we invoke that. There is a wording expression mentioned, any information received by him. There is no qualifying thing whether information received by all officers, subordinate officers, or any source, or any agencies of the department. Information received by him. Okay. So that suppose if we invoke that provision and give information with seeking some relief, probably you may invoke 108 and that will help us in resolving various issues. But it's a chance we can take. I don't know the legal fate that will ultimately tested. This provision is tested ultimately. So I have been given a warning because as a keynote speaker I cannot speak much in detail. Obviously I have to only give the keynote things and many things I have to say because so far as second appeal is concerned, same thing. Dr. Sonagi was also confronted Delhi in the High Court. Number of cases piling up because of non-constitutional tribunal. Now via media steps is being taken up in court allowing you pay 20% of the remaining amount. Then we will see after constitution of tribunal. Recent decision they have given. You are getting 9 days, 180 days from 90 days from after the president assumes office. So therefore it's a temporary respite for all of us to have the benefit. So anyway, many things are there. And appellate remedy doesn't stop with 107 or 112. It also has further remedy by way of appeal to High Court. But appeal to High Court is not a matter of course because you have to confine your appeal only on the issue involving substantial question of law. Then further appeal also right to Supreme Court. So all these things are there. We can have a right one after the other, but all the same we know the apathetic condition of the taxpayers, how they have the power, capacity to invoke the appellate remedy one after the other with their constraints. So these are all the matters to be thrashed out. Thank you very much. I am limiting myself to this. And now Mr. Rizwani will address you on detail. Thank you very much. दे दीजिएगा चालीस हो गया
Meanwhile, the things are settled. Let me first of all thank All India Federation of Tax Practitioners, Eastern Zone, their dignitaries, Bhubaneswar Tax Bar Association, especially to Mr. Ramesh. We have been in touch for the last couple of days on how to go for this seminar, to go for 5 subjects in a day. Gyan Vikas. I would congratulate first on this aspect that we have chosen the subject Gyan Vikas. Means we are not looking or we are not here to learn. We are here for the enhancement of our knowledge. So by this saying, I was discussing with Ramesh ji that I presume that whatever or whosoever the participant is there today is already at par. We are not munshis, we are already consultants. We are tax consultants, we are experienced. And यहाँ आकर के मुझे आपने मुसीबत में डाल दिया। सर रमेश चंद जैना जी जैसे व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। There are other dignitaries, learned people, learned professionals, and I accept humbly the responsibility to ignite the subject and to take this subject to some aspects which may be new for Odisha people, because I am dealing with pan-India problems. We are giving the resolution to pan-India aspects. Not talk much about that aspect. Sir, 6.5-year baby, good and simple tax, which is also known as GST, goods and service tax. It was assured to us that we are going to have the good and simple tax. I am a kachori wala or a small vendor. All of a sudden one department person comes and say, give me a kachori. So he sits there for 10 minutes, sometimes 1 hour. Next day he comes for 15 minutes. Another day he comes for 20 minutes. And all of a sudden there is a notice comes that Mr. Rizwani, you are taxable. Please do come to my office, submit all these documents and get registration. Irony. Now, if I am a taxable person and I am of the opinion that I have to get registration, I go myself to the office. Sir, I need registration, I apply, and my application is not considered for a week or so. I visit to the office, they say you are not eligible for the registration. There are the cases we have seen that I got the registration, then all of a sudden one notice comes to my portal which I don't know how to handle. My registration is cancelled without any good reason. My registration is cancelled. I'm there at their doorstep. I say, sir, please revoke my cancellation of registration. Helpless. Any good ground, your revocation is not possible. I'm a taxable person, I'm a registered person. Maybe I'm looking for some composition scheme. I'm looking for coming out of the composition scheme. I'm not supported. Many places, many people, they are supported. There are other cases of wrong classification of goods and services. There are the cases when you talk about time of supply, place of supply. There are the cases or decisions or orders where we talk about, say, provisional assessment.
We talk about assessment of non-filers of return. We talk about assessment of unregistered persons. We talk about summary assessments. But we talk about section 73, 74, non-payment of tax, short payment of tax, erroneous refunds. If we talk about wrongly availed ITC. Another example is of section 83. Anybody can briefly touch upon section 83. See, let us make it interactive, because I am going to take it in a very participative way. I wish. Anybody of us has got any order or decision under Rule 86A, where the officer says that your ITC, you are suppose having the ITC of 1 lakh rupees in your credit ledger, and your ITC has been blocked to the extent of 80,000 rupees on account of the fact that we feel, or we have the ground, or we are of the opinion that you have availed this ITC on account of any fake invoices or on account of any such supply who has used his ineligible or ineligible ITC for supply of your goods. So section 83 is talking about provisional attachment of your bank account and all. If the commissioner is of the opinion that for the sake of revenue safety, I have to block your bank account. He will seize your bank account, you will not be able to withdraw any amount from your bank account. Likewise, anti-profiting orders are there. Likewise, the orders are there from appellate authority of, I am not talking about advanced ruling authority, I am talking about appellate authority of advanced ruling. There may be some error on the face of the record or order. I'm just waiting for them to give me some. I'm just continuing. So all these are the practical situations we have seen. Now many of us are well aware, but some of us would like to know what is the remedy available with us. If we receive such decisions or orders, or if my client is receiving such decisions and orders, what is the remedy available with us? So the remedy available with us is, my graph would have shown you. Thank you very much. We have the remedy of appeal. Now the appeal under GST can be done for appellate authority, then appellate tribunal, then High Court and Supreme Court under different sections. So I was talking about the revisional authority, and there is another opportunity to go for the rectification of error under section 161. One aspect is that we will discuss as a food of thought later on, because still the GST is missing the concept of settlement commission. Most of us are advocates. I was doing one session at some other place. Most of you are habitual of writ petitions. Most of our clients come these days, sir, I'm in a problem, and go for the writ petition. Sir, these are the two different aspects. They have to be different for the appeal under GST. There are the different provisions. Here I am going to speak about that you are having, or you are limited in such aspects as far as the appeal under GST is concerned. But you can go for the writs. There are various situations where in GST we cannot file appeal. We have only an only solution that we go for the writ petitions. But here my focus will be only to discuss the remedy available under GST as far as the appeal or revision is concerned. Now the situation comes, why should I or why should not I opt for the writ petition if I have
the efficacious remedy or alternative remedy of appeals under GST. So what happens, we are going to discuss that as far as the pre-deposit is concerned and you are talking about. There may be the situations when there are some orders in relation to pre-deposit and I'm in a problem. GST appeal provisions, what remedy is there with us, we will discuss. But if there is no remedy, in that case, I'll suggest that go for the writ petition first. But writ petition only to the extent that, sir, I need a solution only for my pre-deposit aspect. I'm not here to request, as far as the writ petition is concerned, any grounds of merit of my case. I need only a solution, whatever the relief, we will discuss. Whatever the relief we want just for the sake of pre-deposit. Similarly, if the situation comes that whatever the provisions of the GST Act is concerned, they have the limitation that how many days of continuation delay is available with us. We'll discuss. But if you are beyond the provisions of this continuation of delay, in that case, go to the writ petition, go for the writ petition, but only for the sake of writ petition for continuation of delay. Let us not request to the High Court, sir, I need your attention for merit of the case also. Why so? If we are going for the writ petition on the grounds of pre-deposit or continuation of delay, as well as the merits of your case, sir, we are going to lose our efficacious and alternate remedy which is available as far as our appellate authority is concerned and in the time to come. So here, I advise everybody that writ petition is a good solution for us, but whenever it is required, you just go for the specific points only, not for the merit of the case. Sir was talking about whether appeal is our statutory right. The GST Act says that if any person agreed with the decision or order shall appeal, means the Act has given you a specific right to appeal. If it is given in the Act that the appeal can be made, this is our vested right. Once given in the Act, no one can snatch it, but as far as other aspect is concerned, that specifically the statute is not talking about it or restricting, in that case it cannot be implemented. Now let us take the example of as far as GST Act is concerned. There is a situation where in GST Act it says that if there is any limitation decided, that say up to 50,000 or up to 1 lakh, not yet notified, but this is the case when there will be a situation when board decides that this limit, we are not going to file the appeal. We will have to be bind with it, and as far as section 121 is concerned, sir, as you ease out my aspect, he has discussed all aspects, all 4 aspects where we cannot go for the appeal. Why I am skipping some aspects? Because I am already 40 minutes late. So I will be talking about that. Is it section 120 only and 121 which restricts us that we cannot go for the appeal under GST? I just gave you the example of decision or order of appellate authority of advanced ruling. Sir, have you seen any provision or any section talking about that if you fail or if you are agreed with the decision of the appellate authority of advanced ruling, where to go? Law is silent. You will have to go to the High Court only. You will have to go for the writ petition only. But here the beauty of the law is, the High Court says in one case that if you are coming down with your grievances as far as your appellate authority of advanced ruling order is concerned, I will just go for the judicial review of the case only. Whether the order has been passed judicially, following the proper procedure. They are not going into your merits of the case, they are not going into the facts of the case. So,
Apart from that, I gave you one example of appellate advanced ruling authority. Now, why I was talking about any order under Rule 86A that the proper officer restricts you or blocks your electronic credit ledger that you cannot use. Have you heard about that? Any of you have got the notice? Not. But it is there, pan India, many you got. Good. So what was the next step by you? No. Did you go for the appeal? So he has hauled the history now. He has hauled the ITC history right now. Yes, all. What is the remedy available with you? No, he not reply. I'm doing. Okay. Now let me tell you, sir, if you are agreed with the order or decision, you have no platform as far as the GST Act is concerned. No any order has been passed. Only blocks ITC has been there. Directly Yes, blocked. but if you wish, that if you are agreed with the decision, and if you wish to go for the appeal or the remedy, I can't in that go. case, I can't go appeal because there no is any no order order in passed. Only block. will come. और ये आप सो रहे हैं सर, मैं होता, मैं सामने जाकर के बैठता, उनसे कहता, सर आप ब्लॉक नहीं कर सकते, मुझे रिटर्न ऑर्डर चाहिए. ऐसे कैसे? And once I am agreed, sir, in such cases, there is no provision under GST Act that we can go for the appeal. We will have to go for the High Court writ petition on. Why so? We will discuss. There is one decision or order under section 86, sorry, 83, provisional attachment by the commissioner. Commissioner is of the opinion that Mr. Ilwani, you are so and so, I'm afraid that my revenue will be lost. I'm blocking, I'm provisionally attaching your bank account. You must have received some notice, or someone else has received such notices. Are we entitled to go for the appeal under GST? No. Anyone to question why Mr. Ilwani so? When we are talking about that any order or decision of the GST Act under 107(1) is appealable. We'll discuss with the case law. If the Supreme Court decision is there, that will not be able to. We receive notices, we receive summons, we receive audit memos, audit report, efficiency memo for RFD 03. Are we in a position to go for appeal against them? No, these are not appealable aspects. So I am leaving this topic here and here only with the aspect that we will discuss 2 or 3 important aspects of non-appealable things. Briefly, as far as appellate authority is concerned, if the order is passed by additional commissioner or joint commissioner, commissioner appeal is there, or if it is passed by, say, assistant commissioner, superintendent, or so, any officer not below the rank of joint commissioner will be the appellate authority. Sir, we are discussing under the 107(1). We can file the appeal and the appellant. Similarly, we will briefly discuss that it's not like that any taxable person or any person is aggrieved. Sir, department is also aggrieved. Commissioner may be of the opinion he has the responsibility to check the legality and the propriety of any case, whether the case has been taken up properly or not. He is having the power to authorize any person on his behalf to go for the review appeal. And the third aspect, we are discussing the revisional authority. Now suppose, if you are agreed with the decisions, you are the appellant, then you will go for the appellate authority. We discuss either the commissioner appeal or you go for the commissioner, say joint commissioner, as may be the case. Now suppose you are agreed with the decision of this appellate authority also. Now before that, let me briefly discuss one aspect. Sir, when we apply our appeal in APL 01, we will talk about some form and rules are there. APL 01 we have to submit. Now after few days, say few days means 3 days, my client comes to me, Mr. Ilwani, we don't want any appeal under this case. Please withdraw. We can withdraw the appeal. Now after 3 days he comes, Mr. Ilwani,
no, my boss says, no, go for the appeal, we will see later on. Sir, once the appeal is withdrawn, we can refile the appeal, but taking care of the limits given under section 107. Now another beauty here is that now suppose I have applied in APL 01, I have received the provisional acknowledgement, I have received the APL 02 also. What will happen? If the person is willing to withdraw the appeal after getting APL 02, the appellate authority will have to give the approval, and then only you will be able to withdraw the appeal. Now what happens that we have filed APL 01, 2 months have gone, APL 02 is there also with us. The situation may come that 107 subsection 11, the appellate authority is of the opinion that there is one aspect which is left upon, and I need to issue a show cause notice to Mr. Prakash Vidwani. What will happen? You cannot withdraw the appeal. So once the show cause notice under 107 subsection 11 is issued, or we will discuss that appellate authority will pass the order under 107 subsection 11. Sir, if the order is also passed, you are not in a position to withdraw your appeal. So withdrawal of the appeal is there, but exceeded dilemma. Now once you have gone to the appellate tribunal, which is not in existence as on date, I am assuring you that as far as the rules for appellate authority is concerned, appellate tribunal is concerned, they are going to change. Because there are many rules which are yet the same what were proposed at the inception of the act, but it will change. Because the rules for this appellate authority have been changed accordingly, they are also going to be changed. But there will be the situation that if my matter or the issue consists of the matter related to the place of supply, what will happen? There is a structure that there will be a principal bench which is going to be at Delhi. All matters where there is a matter related to place of supply, you have to go to the principal bench of the appellate tribunal. But sir, all other cases will be taken up by your state bench. Time is there, July somewhere we expect that tribunal will come. But now suppose I am agreed after say whenever the case comes in front of tribunal, let me discuss briefly that if I am agreed with the decision or order of appellate tribunal, in that case what I have the option, if my matter is related to place of supply, in that case whatever the orders will be there, they will be taken sir directly to Supreme Court. Appeal will be taken to Supreme Court. I am not talking about any writ petition. I am just talking about the appeal under GST. If your matter consists of place of supply related aspect, in that case whatever the grievances are there, they'll just go directly to the Supreme Court. And any other matter, you will have to go to the High Court, and then again if you are agreed with the decision of the High Court, and High Court gives you the certificate of fitness. देखिए ये वाहन चला रहे हैं हम आपका, मेरी हुनर से नहीं चल रही है, after 15 years fitness certificate is there, then only I can run the show. Similarly, if the High Court gives you the fitness certificate, then only with the substantial question of law, there is an aspect we will discuss, you will have to go to the Supreme Court, otherwise no. So whenever we go to the High Court, we have to have good question with us. Then only High Court will accept our application. Meanwhile, we were discussing about these aspects. Sir, appellate authority is going to be fact-finding authority. Tribunal is going to be the last fact-finding authority. After that, only the substantial question of law will be decided by High Court and Supreme Court. In between, whenever we are talking about the appellate authority, anybody to tell me whether the appellate authority can demand back the matter to adjudicating authority? Anybody? Sir, there are many cases where we have seen that appellate authority is remanding back the cases to adjudicating authority, taking the shelter of
section 75(3). Now how come this section 75(3) comes in the picture? Section 75(3) says adjudicating authority, whenever there is a direction of appellate authority, whenever there is a direction of appellate tribunal, or whenever there is a direction of the High Court or Supreme Court, will decide the matter within 2 years. Now one section is restricting you that you cannot remand back the matter to adjudicating authority, but the other section gives something under section 75(3) that any direction of the appellate authority, tribunal. So tribunal, High Court, Supreme Court, we understand that they can remand back. But the question is, here they are taking the chance. I'm experiencing the same situation in Maharashtra. I'm not aware about Odisha, but Maharashtra they are taking shelter of this aspect and they are sending adjudicating authority back. Now importantly, unofficially, what they are doing? My commissioner appeal says, Prakashji, this was the 6 or 7 days back. My commissioner appeal in Nasik, he told me, Mr. Ridwani, we don't have this much manpower infrastructure to evaluate all the facts and figures of the case. So what I do, I ask the gentle person who has passed the order, I'm requesting him only, if Mr. Ridwani says that he has not considered my submissions. So you do one thing, have a look at it once again and give me your report. And then the commissioner is taking into consideration that report unofficially, not on records. And then he is passing the order that Mr. Ridwani, this is the situation. So we have to keep in mind that as far as remand back is concerned, unofficial remand back is there. Now briefly touching upon, we are talking about the first appellate authority under section 107. We'll be reading with rule 108, 109 and 112. Forms we will be filing APL 01 if taxable person is there or any person is there. APL 03 if the commissioner asks someone else to file the review appeal. And how much time is given? 3 months for us, 6 months for the department, as sir was rightly discussing that they have been given the liberty, and after that period, if 3 months or 6 months is over, then 1 month is also there that can be given a sufficient cause that I am not able to file it within 3 months, then 1 more month. Then we go to the appeal to tribunal. We will have to refer the section 112 of the CGST Act. We will read 110, 111 and 112 rules. We will be filing appeal APL 05, or the government, say commissioner department will be filing APL 07, and the period given to both of them is given, say here 3 months first and then 3 months continuation. But as far as the department is concerned, he has been given 6 months from the date of order. We have to be very careful. There is no question here. There is a question that 3 months from the date of communication of the order to Prakash Ridwani. But there is a case 3 months from or 6 months from the date of order. So there is no situation of receiving the or say communication. Then High Court section 117 with rule 114 APL 08, and within 180 days it is understood, but after that it is High Court. They can allow you to file the appeal as per their direction, and similarly Supreme Court. So whenever usually I go for any section like this, my agenda remains that first we discuss the law and provision, then we discuss the critical aspects and jurisprudence, and then I give some food for thought, and after we will have the good lunch and a small lunch. Reason being, कुछ ऐसा होगा हमारे पास जो निश्चित रूप से हमें कम खाने पे मजबूर करेगा. So when we are talking about the provisions, 107 talks about any person. Sir, he is not talking about taxable person, he is not talking about the registered person, he is not talking about anything. Any person means any person. एक कचौड़ी वाला भी आप उसमें शामिल कर सकते हैं, you must be agreed. एक व्यक्ति, एक प्रोफेशनल जो जीएसटी प्रैक्टिशनर बनना चाहता है, उसे उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है. I am not a registered person, I am not a taxable person, still I am entitled to go for the appeal. So any person, we discuss the examples. So my examples covered not only the unregistered person, registered person, taxable person, and
other person. So any person aggrieved. Aggrieved means आपके डिसीजन से या आपके ऑर्डर से मुझे कोई ना कोई तकलीफ होनी चाहिए. वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, मेरा बिजनेस बंद भी हो सकता है, मुझे और भी तकलीफ हो सकती है. I should be agreed with your decision and order. Sir, I was talking about your decision or order. Sir, mostly I have given the examples of whatever the decisions and the orders are being considered for appeal. Sir, mostly as far as the orders are concerned, they are fastening the revenue by the department. To control your revenue aspects, as far as decisions are concerned, they consist of your administrative decisions also. They may be related to your registration, they may be related to any other aspect. But mostly, the decisions and orders, whatever way, have been taken by the adjudicating authority, that will be covered. Except few, which we are going to discuss more. Adjudicating authority, that is simply defined, appointed, authorized to pass any order, but excluding a small list. Here, I will not discuss this list because this is more or less similar. I am taking the example of Odisha State GST Act. Most of the people say that CGST Act and the State GST Act are very material. This is the definition. Here we have a big difference and having a lot of impact as far as the appeal procedure is concerned. Here, section 2(4) of the Odisha SGST Act says, adjudicating authority, first line is same, does not include commissioner. What way this aspect is affecting us? There are the notifications or the orders of Odisha Commissioner that Mr. X, Y and Z. X, Y, Z means Superintendent, Assistant Commissioner and Joint Commissioner is delegated my powers to act under section 83 of SGST Act. Now one company or one person gets the notification or say order under section 86. The commissioner is of the opinion that your bank account is provisionally attached. Sir, are you going to file the appeal? No provision for the appeal under GST Act, SGST Act. See, I'm not talking about now CGST Act. I'm talking about if in Odisha, because Odisha Commissioner has notified this, I'm going to show here that my powers under section 83 are delegated to Mr. Ramesh Jana, my Joint Commissioner. Now Mr. Ramesh Jana goes to any taxable person or registered person that I am of the opinion, using the powers of Commissioner, that your bank account is provisionally attached. What remedy I have? Sir, briefly I tell you that wherever the Commissioner has delegated his powers categorically to any of the junior officer, whether it's a Joint Commissioner, Assistant Commissioner or the Superintendent, mind it that there is no provision under GST Act, SGST Act, that you go for the appeal under GST to your appellate authority or tribunal. You will have to go for writ to High Court only. And I will refer one case of relocation industry by Supreme Court. Now the relocation industry case says categorically where the Assistant Commissioner had been empowered or had been delegated to attach the bank accounts of so and so under section 83, and the High Court said, sir, you have efficacious and alternative remedy under GST Act, so this rate is not maintainable. This was the High Court version. Now once the High Court said that Mr. Advani, your rate is not maintainable at this platform because you have the alternative or efficacious remedy under section 107, you can go to appellate authority, and if the time comes, appellate tribunal. Prakash Advani goes to Supreme Court, sir, please look into it. Supreme Court held that if this is the case of any state GST Act,
where the commissioner is empowered that he has to give his opinion that I am of the opinion that Mr. So and so person, you are so and so liable, and your bank account or your property needs to be seized, or whatever way the action has to be taken. And if he delegates this power to his junior, the junior may be joint commissioner, junior may be assistant commissioner, doesn't matter. In such matters, Supreme Court says that अभी कितना टाइम सर विद ड्यू रिगार्ड्स 10 minutes रमेश जी आप समझते हैं इस सब्जेक्ट को डीपली अगर डिस्कस करना है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट because whenever I go for my agenda I take at least 3 hours. I decided that I have to cut it down for at least 1.5 hours so that important aspects are discussed. Still I will try best. Now similarly the Odisha High Court, Odisha Commissioner has given the powers or has delegated the powers under section 84 and 151 also to his subordinates. So take care that whenever there is any such order or decision under such, I'm not talking about now 83 or 84 or 151. In future also, the commissioner can delegate his power to act upon on any officer. So take care. In such cases, you have only one remedy with you: writ petition. Law is silent. But this is the case. This is the situation. Now, similarly, in the state, if the commissioner says that I'm delegating the power to go for the registration or related matters to any assistant commissioner, and the assistant commissioner passes any decision or order, sir, you don't have any remedy with CGST or SGST Act at Odisha. You will have to go for direct petition only. अभी तक किसी ने इस बात को गौर से सुना था कि कहीं से था कि हम इस तरह की सिचुएशंस में जहां कमिश्नर ने और जरा आपकी बात नहीं करो बट भेड़ चाल में सब चल रहा है उत्तराखंड हाई कोर्ट विनोद कुमार they have given the decision that yes go for the writ petition. Himachal Pradesh Supreme Court in Radhakrishnan industry they have delivered the decision. Now I don't have any option than to discuss one aspect which is important he raised, pre-deposit. नाम से ही डर लगता है. There are the decision in the beginning that pre-deposit, without pre-deposit, your appeal cannot be filed. That's a fact. One thing. But now what next? कहाँ से जमा करवाएं? Important aspect is that pre-deposit. There are many cases in the beginning. Prakash Ijwani went to the High Court. Sir, please, 10% is too much. And if I lose, then 20% is too much. I'll not be able to afford. High Court said, oh, Mr. Ilwani, there is no option. The law is categorically saying that no appeal will be filed. So if you are looking for any mercy from any High Court even, sir, can we have the waiver of deposit, pre-deposit? No, don't think of it. Now second question comes, the situation came when the pre-deposit was deposited out of cash laser. No worries. कैश में आप मुझे भी पैसा देंगे तो नो वरीज, किसी को परेशानी नहीं है. But few people deposited 10% equal of disputed tax through trade laser. There were few high courts. Initially they said, okay, you can deposit through trade laser. But now recently the situations come, or there are the cases where now the high courts are saying, no, Mr. Ilwani, as far as the pre-deposit is concerned, you will have to have deposit through electronic cash laser only. The matter has gone to the Supreme Court also, but they have stayed the operation of this order. That's a different thing. But why it is so that there is a dispute as far as the pre-deposit through cash laser or electronic trade laser is concerned? We have to understand this. I'm a person who never goes for the high court decisions. Maybe the different situation, different aspects in one court, and the different situation in the different aspects in the different court. What I say is, you go for the section 41(2). Let us go for the section 49(3) and 4 also. Now section 49(3) says
that whatever the cash ledger is there with you, that can be used for the payment of tax, so and so for interest, fees, and any other amount which is liable to be paid under any proceedings as far as the GST Act is concerned. Now, if you go to section 49(4), sir, this restricts you, as far as my opinion is concerned, just to utilize your balance of the credit ledger only the payment of the output tax. Now let us evaluate this aspect, pre-deposit. Pre-deposit is not our output tax. We have the cash ledger. In my opinion, maybe you may differ from my opinion, but whenever the situation is that ultimately the situation will come, considering section 49(3), that cash ledger can be used for any payment. So if you pay out of that, no question. The question arises only when, by having the opinion that 49(4) is allowing me to use anything for output tax, and whatever I am paying, this is output tax. Summing up, what should we do? So if you read the case laws which are kept in my presentation, if you see that as far as the case is concerned, if it relates to output tax, I am suggesting all my tax professionals to opt for electronic credit ledger. If you are paying pre-deposit for any matter which is related to output tax. But sir, if your matter relates in relation to wrongful utilization of ITC and all, sir, don't use the ITC where you have been alleged that whatever the ITC or whatever the quantum of ITC is there, that is alleged that is wrongful of it. There may be the situation next comes when you will lose or you will be a sufferer. So what I suggest is, as on date, instead of going for, otherwise my thumb opinion is that, sir, please, as far as the pre-deposit is concerned, they should use only electronic cash ledger, because 49(4) clearly says. But second opinion, say second option, if I don't have that much cash, in that case, if you see the case laws, they are consistently showing that matter relates to output tax. You are allowed to go for the electronic credit ledger. So in case of output tax matters, electronic credit ledger, and in case of other matters, you use electronic cash ledger only. But if you have the cash available. Now one more aspect here I would like to discuss, continuation of delay. So this is the headache of the industry. Now continuation of delay means I am asked to deposit or file my appeal within 3 months, having an additional month of 1 month for sufficient cost and to go for the filing of appeal. Now 5 months have gone. I have only one option. I go to the High Court and request, sir, this is the genuine reason that 5 months have gone, I could not file the appeal. Sir, I need some more time. High Court have the jurisdiction whenever the matter of continuation of delay comes, sir, quasi-judicial authorities, they are working within their limitation of the statute. Now the statute provides them 3 plus 1 month or 3 plus 3 months. What they can do, they will pass the order only that your appeal is time barred, we cannot entertain. But here one question comes. Now few case laws have come where the opinion has come that let us analyze Limitation Act 1963 and the GST law. The GST law says 3 months and then 1 month. Does it categorically say, notwithstanding anything contained in Section 5 of the Limitation Act 1963, is there any express exclusion of the provisions of the Limitation Act? No. Then why am I saying that there is an implied exclusion? That because they are saying that only 3 months plus 1 month. So I imply that this appellate authority doesn't have the power to give me the continuation of delay beyond this 1 month. Now this theory has come in the picture. Case laws also have been there. There is a situation when the courts are saying that there is no express exclusion of Limitation Act 1963 as far as Section 107 is concerned.
So the authorities are empowered to use any period to condone. Question is unsettled yet. So I'll not comment upon, but if the situation is like this, you can opt for the writ petition. We are talking about the continuation of delay. And in relation to that, we said that we have 3 months plus 1 month, we have 3 months plus 3 months, or whatever the time we discuss. So what is this 3 months? This is also a question. One place it is 3 months and 6 months for him, and then additional 1 month. So whenever we receive the order, suppose I have received the order today. Today is 25th February. So whenever we'll go for the 3 months, I'll go for 26th February to March, April, and May. 3 months. Now there is an option that if the department files any review appeal, then we have to file the cross examination. But that is 45 days. So as far as 45 days are concerned, if it is 25th February, then I'll count the days. I'll not go like this, सीधा jump करते हो. Because February may be of 28 days, February may be of 29 days, exactly 45 days, 45 days. Now, हम लोग काफी समय से काम कर रहे हैं. There was a provision in the erstwhile regime, whether excise or whatever way, कि sir, अगर 3 महीने जब दिन खत्म होते हैं, उस दिन अगर सैटरडे और संडे है और गवर्नमेंट ऑफिस आपका बंद है, क्या करेंगे? Law of limitation will apply. The next day will law of limitation. There is some. I think Jana Sahab will not agree with me. The reason being, sir, whatever the returns or whatever the appeal we are filing online. Where is Saturday? Where is Sunday? Sir, 3 भी आप भरते हैं, Saturday होता है. But server is not working then. The server does not work. Now we are going beyond the provisions. अगर सर्वर बंद होता है, काम नहीं करता है, तो then सर आप अपना टिकट रेस करिए, आप अपनी ढोल बजाइए, दिन में 3 बार GSTN पोर्टल के पास कि सर आई एम विलिंग टू डू दिस. वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी अपील लेकर के मैनुअली अपने डिपार्टमेंट के पास जा सकते हैं कि सर देखिए 3 बार मैंने प्रयास किया, कल मैं इसको फाइल नहीं कर. वो एक अलग एस्पेक्ट. But when we talk about, recently there was a case when the same argument, the person came to the High Court, said, sir, yesterday was Sunday and the last day of the 3 months. I filed on Monday. No solution. It is. But the one point is for submission it is online. I agree with you. But for payment of tax, everything cannot be online. No, tax has to be paid through bank. Tax has to be paid? 10% tax has to be paid through bank only to cash ledger. Sir, I think, is there any restriction today that if on Sunday I am willing to go for the tax payment? Sir? I don't have, I should have an online bank account, no? Otherwise banks are holidays. See, then we are extending the subject which is maybe related to you, not all. But as far as 45 days is concerned, yes. Sir was talking about one submission of the appeal electronically or manually. I think let us touch upon that also, important. Sir, there is a change now that as far as the appeal is concerned, you will have to submit electronically. And you will submit manually if some notification is there or things are there. Sir, let me tell you, when we file the appeal, what we do, APS 01, first of all he asked me whether matter relates to multiple years or the 1 year. I select 1 year, 17, 18. Then he asked me demand ID. So unless the demand ID is there, I am not able to file my appeal. I will not be able to go ahead. So if there is departmental issue, recently had happened at Nasik itself that 28th September the department gave me, passed the order which was received by me on 16th November and demand ID was updated on 28th December. This is on record. As far as 28th December is concerned, my appeal period was. But just because I was aware, and I will request you all to be aware that whenever such situation is concerned that you have the notice of order, सर सबसे पहले एजुकेशन अथॉरिटी का चेक करिए कि उन्होंने आपके प्लेटफॉर्म पे डिमांड DRC 07 अपलोड कर दिया है या नहीं किया है. पीछे पड़िए उनके. डोंट थिंक ऑफ दिस कि सर लास्ट डे तक हम वेट करेंगे, नहीं करेंगे तो हमारा मजा है. नो, आई विल नॉट सजेस्ट दिस. आई विल नॉट, डोंट
adopt this course of action. Request them, yes sir, please upload, because I have to file my APL 01. 129 cases. Maybe the order is passed manually, not uploaded. 30 days time is about to say, 3 months time is about to go, plus 1 month is about to go. What you will do? We will suggest you only to go for the manual filing of the appeal APL 01. Go to the department, submit them and tell them, sir, this is the issue. We have been requesting you not uploading the demand ID. We are not able to upload APL 01. So please accept it. Now this is the situation. And we are talking about the time of 3 months and 1 month or 45 days or 45 days. Now if Saturday, Sunday comes and you have to submit manually, then I am with you. It's a very next working day. There's a time when we can file appeal. Sorry, sir. A lot of things were there to be discussed. Sir, my other colleague is also waiting here, and I think I should not encroach this time, because whatever the time is there with me, I tried my best to discuss with you. Now lastly, I'll take only 2 minutes, not more than 2 minutes. Sir, my presentation I'll be sharing with the organizers. All case laws are there, all different situations are there. Have a look at it. Sir, I'm the editor of Click on GST World. This is the mobile app and the website which covers all about GST. There is a column, post your query. First of all, you download my mobile app. I'm not going to charge anything to the participants of this hall as far as the usage of this mobile app is concerned. One thing. Number 2, if you have any query in relation to today's session, sir, please raise a query. I take the guarantee that I'll reply you, I'll give you proper response for your queries. Number 3, let us not be limited to your query related to this aspect or this session. Sir, I welcome every Odisha tax professional, whether it's a participant of this session or not. Just raise your queries to this platform. I assure you that within 2 to 3 days, we will give you the proper litigation support and advisory support for your tax related questions. And this is my word, mark my word, that for Odisha professionals, I'll be always available. And it's not like, let me open the Pandora also, it's not like, I'm not saying specifically that only Odisha professionals. Sir, wherever I go, I'm having a mission that no tax professional should be unanswered. Any topic related to any subject, do come on my platform, post your queries, give me your content, don't generalize your subject, please. Because I have experienced personally that one person says that this is the case, but I have solved the case in another way. Because the content of the case decides whether it will be taken care of as a non-speaking order or it will be that you have not considered my submission and all, whatever the issue will be there. So, thanks Odisha professionals. It was totally my pleasure. I could not complete. My apologies. We are delayed to the session. Thank you very much. Now I request Shri Prashant Kumar Sampati to deliver the vote of thanks. One more thing, I can request the organizers to have any web session also. Whenever you are comfortable, we will discuss at length. I assure you that we will give you the solutions or the platform or food for thought, which will definitely enlighten you in a different way as far as appeals and revision is concerned. Thank you.
Thank you, sir. Thank you for your stunning and power-packed PPT presentation and critical analysis of appeal and revisional provisions of GST law. First of all, I would like to thank on behalf of AIFTP Eastern Zone our esteemed Senior Advocate of Odisha High Court, Sri Jagabant Sahu, who was concerned and graciously present here. I thank you, sir. Without your presence, this technical session would not be come to a perfect condition. And रिजवानी जी, आपने अपील और रिवीजन के बारे में जिस तरह से हमको समझाया, I think all our esteemed delegates would have enjoyed it. Rightly you have said that we are here for Gyan Vikas, we are here to enhance our knowledge. And I feel that we have enhanced our knowledge. You have said a lot to us. And thank you all the delegates who are patiently heard this and present this to this technical session. Thank you all. Like this, we come to the end of the first technical session. We shall start with the second technical session, and the keynote to be addressed in the second technical session is scrutiny and audit in GST. The chairman of this session is Sri Ramesh Chandra Jaina, Advocate, Odisha High Court, and the chief speaker this session is Sri Tarun Kumar Gupta, Chartered Accountant from Calcutta. Request Sri Gopal Chandra Raut, Vice President, Bhubaneswar Tax Bar Association, to kindly come up onto the dais. Jai Jagannath. On behalf of the Bhubaneswar Tax Bar Association and AIFTP, I would like to welcome you all to the second technical session on scrutiny and audit under GST law. We have the chairman of the session with us, Sri Ramesh Chandra Jaina, Advocate, and welcome Sri Ramesh Chandra Jaina, Advocate, to the dais. And we have a renowned speaker, Sri Tarun Gupta, Chartered Accountant, Kolkata, and he has taken all pain to reach us. I request Sri Tarun Gupta to the dais and request all the esteemed members to enjoy the session and request the chairman to continue the session. Thank you. Thank you all. I request the members of the organizing committee to kindly present bouquets to the dignitaries on the dais. This is a mark of our love and affection. Now I request the chairman to kindly continue with the session. Good afternoon. We are short of time. I will give you only 10 minutes to give keynotes, and after that go for lunch. And this one-day tax conference, the Jnana Vikas, organized by All India Federation of Tax Practitioners in association with Bhubaneswar Tax Bar Association. And the name Jnana Vikas has been suggested by me and semi accepted. And this second technical session topic is scrutiny and audits. Scrutiny means what? Scrutiny of returns, audit of records. And section 61 stand for scrutiny of return, deal with rules 99 of the CGST rules.
and audit will come afterwards. A scrutiny of petition, there are 3 subsection, 1, 2, 3, and rules also 3 subsection. And the first subsection of section 61 prescribe the proper officer have to verify the correctness of the returns filed under various sections, section 37, 39 and 44, that is hardware supply return GST 1, and section 39 is the GST 3B, and section 44 is the annual returns. And this section specifically provides provision for the proper officer to verify the correctness of return. And who is the proper officer? The CBIC has issued and circular 3/2017 dated 5/7/2017. Who is the proper officer? Likewise, earlier they told the commissioner is not the executing authority. For executing authority, the CBIC also issued and circular in 2018 that with monetary limit, particular officer is the executing authority for a particular case. And same circular has been challenged before Bombay High Court in the case of Fomento Resort and Hotels Limited, Private Limited versus Inaugural India. In Bombay High Court, in recently 13 February 2024, had declared that the circulars are in order, there is no virus on the circular. Accordingly, as per the monetary limit, the executing authority has executed the cases, and as per the circular 3/3/2017, the proper officer is the central tax officer, and these provisions are meant for only for the department. I want to brief about what is the role of taxpayer and consultant in this regard. And for the year 17-18, 18-19, one instruction issued by the board on, that is March 2022, the circular instruction number 2/2022 with regard to how to scrutinize the documents. And afterward, for financial year 1920, another instruction there 3/2023 in March 2023 with regard to the scrutiny of return for the financial year 19 and 20. And here I want to specify that what are the role of the taxpayer or a tax consultant advocate to advise the registered person, the taxpayer, to keep his record, keep his return in that, so that there is no mistake or any lacunas with the return, so that the proper officer will point out for further proceedings. Here, the first you have to see whether the ITC is taken under section 64 in time or not, whether it's coming under section 75, that is the block credit, whether the terms are filed in time and tax are paid in time, whether interest is paid in time for the delay payment of tax. Further, whether GST 2B is correctly reflected the ITC amount, and whether the GST 3B collect the IGST components, that is import, and whether it is reverse charge are correctly recorded in your records. All these records have to keep well in scrutiny before, after submitting the annual return, because annual return is the last day 30th November. You have to take all ITC without fail, otherwise will come under section 64. Then you have to also scrutiny your records, whether you paid as per section 16(2), that is paid to supplier in 180 days. And like that, you have to also ensure the GST 1 filed by supplier in time and the reflected in your GST 2B. All these are points you have to take account. Further, your e-invoice, e-OI bill, and all these have to verify whether there is mismatch between GST
1 and GSTR 2B or GSTR 3B, whether your annual return reconcile is correctly matching with your summary of GSTR 3B, otherwise there is a worry point. And the section 61 saying the proper officer will verify the correctness of the statement or returns, and if any discrepancy will communicate to the taxpayer by intimation by notice in form SMT 10. Within 30 days, the registered person have to reply to the said SMT 10 whether discrepancy noticed by the proper officer is correct or any. You have to rectify the SMT 10 whether it is wrong or not, whether you have to accept the mistake or you have to depend for the proper officer findings. Within 30 days you have to reply, and the officer will reply to your note by issuing SMT 12. If the SMT 11 is not satisfactory, he will issue SMT 12 or further initiate proceeding under section 66 and 65. 65 the audit or 66 is the special audit. Thereby, if he is unable to determine the tax amount, he may refer to the audit or special audit. Or if the audit is failed, the audit person may refer to the matter, that is for short and severe inspection, that is section 67. That the senior advocate Manas Mambakra told, why not taken the subjects for severe and inspection? And this is the, after scrutiny of return audit, the sections are coming because in the primary section we have to understand what to do with return filings, what to do with tax payment, so that the proper officer may not be able to find out our mistakes. Any mistake, any mistake, the officer will issue SMT 10 and we have to reply SMT 11. That we come to audit also. The audit, in audit, they have to audit our records, financial records. We are giving only 10 minutes, I will finish with 10 minutes. 5 minutes. Sorry, the audit is the last query, and my predecessor told that we cannot go directly to High Court. I can tell general provisions of section 75 saying on section 75(4), if there is violation of natural justice, can go to the High Court. Similarly, if there is short seizure subject of classification, there is appellate authority nothing to do, we have to go to the Supreme Court directly in case of classification issue. I have got this type of cases with short seizure, and I want to inform the taxpayer advocate that during short seizure, the authority has no power to collect any tax by forcibly. Then you can write to the higher authority to take action against them. There is no provision to short seizure, that is collect the tax amount from the taxpayer. And I have indication in 5 minutes. I can hand over my colleagues with Tarun Kumar Gupta to deliver all the details on scrutiny and return. Thank you all. Hello. Am I audible? Yeah. Am I audible? First of all, Jai Jagannath. Jai Jagannath. We all are after Jagannath. So we have to first give our obedience to Jai Jagannath. I am really thankful to AIFTP, Inaugural Tax Bar Association, for inviting me. अभी एक बहुत फेमस हो रखा है प्रोग्राम टीवी पे, शार्क टैंक। आप लोगों ने देखा होगा शार्क टैंक। शार्क टैंक में one of the most important question that the sharks ask the person who is coming is आपका repeat value कितना है, repeat order। जिसने माल खरीदा आपसे, उसने फिर से कितना बार और माल खरीदा। तो
मेरे को लगता है कि मेरा रिपीट वैल्यू भी अच्छा है, क्योंकि अभी मैंने लास्ट बालासर में प्रेजेंटेशन दिया था तो मेरे को रिपीट ऑर्डर मिला. So I am thankful to all of you for giving me another opportunity to present my thoughts on this different subject but related to GST, scrutiny, audit, assessment and all. So before I get into the details of my presentation, I want to say that I want all of you to be attentive, because I have written a book on assessment and audit, and I have got 3 copies which I want to distribute. So I will ask 3 questions at the end of the session, and whoever answers first and the correct answer, obviously, I will present this book. Okay? Others will have to buy. So I am also thankful to Mr. Narayan Jain, the president of AIF, and from Calcutta, who is a very senior professional, and since he is my father's very good friend also, so since we have been getting into the profession, we have seen him as a stalwart figure. So thank you so much. Now, without wasting too much of time on coming to the topic, we are already into the subject of GST. So let me quickly start. Achha, do you want that I should share this presentation in the group? Because if you can't see, you can follow on the mobile. Yes, sir. I'll do that. That is better. I am a part of the group. So I forwarded. You can follow the presentation on your mobile also. It is in a PDF version. Okay. So let us start with this figure. Now, this is a very important figure which I generally start with. What is the genesis of this scrutiny that is happening, and including audit that is happening under GST? The most fundamental point that we all have to understand is that the department is coming back to us with all the data that we are feeding into the system. That is what is happening now. In the morning session, the dignitaries were speaking about application of mind. What we are seeing now is that the mind of the computer is getting applied. The person sitting behind, he is just sort of doing a post office job. Because the entire analysis of the data that we are feeding into the system is getting compiled in a software which the government and the department they have done, wherein they compare the data with each other, and it is thrown back to us for us to again explain to them that why is there a difference. That is the scrutiny module the department has developed. It has its disadvantages and lacunas which is known to the department, but we have to live with it. So let us understand that this is slide number 6. That we have got lots of data. The most important data that we feed into the system on a one-to-one basis is 3B and GSTR1, which has the outward and inward details. Then for every good sold, and if e-waybill is applicable, we have the e-waybill data, we have the e-invoice data. Then at the end of the year, we have the 9, GSTR 9C. Then the supplier is uploading data in 2A, 2B. Then the system itself has data, which is the tax comparison tables and the auto-populated data. So there is
lots of data available in the system. Then apart from the GST data, we also have the 26As, which is the income tax data. We have third party data from other departments and other government portals and all. The department is also going to our suppliers and customers, so they are getting data from there also. So what is happening is that, and we as businessmen or we as tax professionals, we understand that all the data is not matching with each other, not because we want to take advantage of any system, but because at that point of time, that was the data that was available with me. So for example, if I have uploaded an invoice on 31st of the end of the month, and the data is generated that time, which I say amend the invoice in the next month, but in that month there will be data mismatch, which again I have to explain. Now, I as the tax professional or I as the businessman, I am explaining the reconciliation or the discrepancy that I have in the data to the officer, but it is up to the officer now to accept it or not. That is the problem that we are facing now, because for 2017, 18, 19, 19, 20, we have the notices in hand, we have some orders in hand, we have been through one round of the first appellate also. But the relief that one is saying application of mind, यहाँ पे application of mind इस वाले subject में हो ही नहीं रहा है. यहाँ पे आपको खाली डॉक्यूमेंट देना है और रिकंसाइल करना है. तो शुरू में जो एक साहब ने बोला था कि हम लोग मुनीम बन गए हैं, हम लोग एडवोकेट नहीं रहे, हम लोग कंसल्टेंट अब नहीं रहे, अब हम लोग को वो इनवॉइस लेवल पे जाना पड़ रहा है, क्योंकि क्लाइंट आफ्टर सम टाइम वो हाथ खड़ा कर देता है कि सर आप बातचीत और हम नहीं कर सकेंगे रिकंसिलिएशन, अब आप हमको हेल्प करिए. तो अब आपको क्या है कि वो कोर्ट खोल के गाय मोड़ के अब आपको करना पड़ेगा. 17 का टाइम खत्म हो गया था, वो अपील में जाएगा बेटर, लेकिन 74 में नहीं आएगा सर. अभी तो 73 टाइम खत्म हुआ है, 74 में आएगा, बिकॉज डिपार्टमेंट तो कुछ छोड़ेगा नहीं. वो तो 73 में अगर नहीं किया आपका कोई, वो 74 में करेगा. अब आप उसको लड़िए कि ये 73 में जाना चाहिए था, वो तो 74 करके अपनी नौकरी बचा लेगा ना. वो बोलेगा हमको कोई मतलब नहीं, टैक्स दीजिए चाहे मत दीजिए, हमको नोटिस इशू करने दीजिए, आप हमको अपना नौकरी बचाना है, हमको मेरे एशिया में कुछ नहीं आना चाहिए, ये छूट गया था तो हम ही इशू कर दीजिए, हम इसको इशू कर दे रहे. आप लड़िए ना. से गुप्ता जी का वेरी गुड पॉइंट, ये 73 में आने ही नहीं चाहिए था, 74 में आने ही नहीं चाहिए था, ये तो 73 का पॉइंट था. लेकिन देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, हमको इशू करके दीजिए नोटिस, आप लड़ लीजिएगा इसको. 73 में अगर मिल जाए आपको टैक्स ही नहीं देना. So ये जो पॉइंट है ना, नंबर 4 पॉइंट इज बिकमिंग अ वेरी बिग डिफिकल्ट पॉइंट. इसके बाद लंच ही है. अच्छा सब्जेक्ट अच्छा है. Then fifth point is TDS and TCS credit. Now we know that if we are supplying anything to the government, they will deduct 2% TDS, and if we are operating in e-commerce, they will deduct 1% TCS. So the scrutiny module is also capturing this data from the TDS and TCS and what you have filed. Because in case of one client, what happened, I'll tell you. मेरा एक PSU client है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का client है. Now you know that government system में क्या होता है कि information ठीक system से आना चाहिए, that is the system, लेकिन आता नहीं है. तो जो टेबल से GST रिटर्न फाइल हो रहा था, उस टेबल तक सारा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा था, वो कहीं ना कहीं रह जा रहा था. एनीवेज तो जो फाइल करता था वो तो जितनी इन्फॉर्मेशन है उसने फाइल कर दिया. They were also supplying to the government. जो गवर्नमेंट फिर जब पैसा देता था इनको, स्टेट गवर्नमेंट, तो 2% TDS काटता था. तो स्क्रूटनी मॉड्यूल ने वो पकड़ लिया कि आपने GST 1 में तो भैया 100 रुपया टैक्स दिया, और आपका सप्लाई जब हुआ और जो पेमेंट आपके पास आया डिपार्टमेंट से, तो उसके हिसाब से आपका 400 होना चाहिए. तो आपने 300 रुपया कहा, आपने तो दिया नहीं टैक्स. So then the matter came to me
Then I said what they are saying is correct. And then we did the forensic and then we understood that this information was actually not flowing to the right table. Because it was a state PSU, so the implication was also huge, but it could be managed. Government to government में कोई malafide intention नहीं था. But had it been a private sector, then तो immediately I am sure that the MD would have got arrested because the implication was much higher than the threshold limit for arrest. So that was the reason. So this is an example I am saying which came out of the scrutiny module only for TBS and TCS. 6 number is e-way bill. I have already said that the e-way bill data is getting captured in the system. And now the difficulty what we feel is आपने कोई invoice बनाया, उसका e-invoice बना दिया, ठीक है? आपने e-way bill भी बना दिया. अब पता चला गाड़ी तो अवेलेबल ही नहीं है, ट्रांसपोर्टर ने गाड़ी नहीं लगाया, ठीक है? 24 आवर्स निकल गए, कैंसिल नहीं कर सके आप. अब आप क्या करेंगे? नाउ दो इशू हो गया यहाँ पे. एक हो गया ई इनवॉइस का और दूसरा हो गया ई वे बिल का. आपने दोनों जनरेट कर दिया लेकिन माल नहीं निकल सक रहा उससे, तो अब आपको दोनों को कैंसिल करना पड़ेगा और नया फ्रेश जनरेट करना पड़ेगा. लेकिन क्या हो रहा है? What is happening is that many a times assessee is taken very lightly. क्या अरे हमने तो माल भेजा ही नहीं, तो क्या हो गया? तो नया भेज देते, ईमेल नया बना देते. But now they are seeing the implication because technically then what is happening is that if you don't cancel the old e-invoice or the e-way bill, the system has those records and these questions will be asked to you after 5 years or 3 years. That this invoice, जो आपके invoice है 50, e-way bill है 55. तो अब आप reconcile करिए, अब आप explain करिए कि 5 तो मैंने वो गाड़ी लगी नहीं थी, इससे मैंने तो इशू नहीं किया, तो बोले कैंसिल आपने नहीं किया, बोले कैंसिल नहीं किया, तो बोले आपने फिर एक इनवॉइस में 2 गाड़ी निकाल दी. समझ रहे? So there is no application of mind by the officer. वो तो खाली डेटा देके पकड़ रहा है. So that is very important कि ये सब चीजों को बहुत ध्यान रखना है. Now people are understanding. People are understanding this all now because such notices are coming. But when this is happened, the implication was not known. तो इसमें क्या होगा? ये जो 5 इनवॉइस हम लोग भेजे नहीं, इसमें क्या होगा? नहीं तो अगर आपने इनवॉइस बना दिया, 24 आवर्स निकल गया, कैंसिल करने का टाइम निकल गया, उसको फिर आपको क्रेडिट नोट करना पड़ेगा. वो तो करना पड़ेगा. हाँ, फिर नया इनवॉइस बनाइए. वो भी नहीं किए, वो कुछ नहीं किए, अब हमको 5 साल के बाद फिर नहीं तो अब आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा. क्रेडिट आ गया 28 तारीख को किया, मुझे मालूम पड़ा 3 तारीख, तो 28 तारीख को महीना खत्म हो गया ना, तो एक करोड़ मान लीजिए टैक्स आ गया, उसको थोड़ी देगा. हाँ नहीं देगा. वही तो होगा. तो व्हाट क्रेडिट नोट तो बाद में करेंगे. क्रेडिट नोट तो अगला महीना होगा ना. हाँ तो अपनी क्रेडिट नोट आप 28 को ही करना पड़ेगा आपको, नहीं तो आपका टैक्स पेमेंट आ जाएगा. मालूम पड़ा तो 3 तारीख को. नहीं तो देखिए आपको इसलिए द सिस्टम शुड बी कि जब गाड़ी लग जाए तब आप इनवॉइस जनरेट करिए, तब आप ईमेल बनाइए. बिकॉज यू हैव टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स ना. जब आपका ऐसा हो जाएगा कि 28 को आपने ई-इनवॉइस बना दिया और आपको 3 तारीख को पता चला और आपको समहाउ देना पड़ गया टैक्स और बाद में क्रेडिट लेना पड़ गया, तो आपने सीखा ना उससे. यू हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, सो यू शुड हैव अ प्रोसीजर इन अ मैनर दैट व्हेन एवरीथिंग इज सेट देन ओनली यू इशू द इनवॉइस एंड यू इशू द ई-वे बिल. अदरवाइज यू गेट इनटू द कॉम्प्लिकेशन. क्रेडिट नोट का वेस्ट होगी, ई-वे बिल बनाना होगा. नहीं वो फिर आपको एक्सपायर हो जाएगा ई-वे बिल. लेकिन आप क्रेडिट नोट बनाएंगे, उसका ई-वे बिल तो बनाना नहीं, उसका क्रेडिट नोट का नहीं बनाना पड़ेगा. तो बैलेंसिंग नहीं होगा. नहीं वो तो फिर कैंसिल हो गया ना आपका. ई-वे बिल जब नंबर पे जो गया आप दिखेगा और फिर आप तो दिखा सकेंगे ना कि मेरा इस इनवॉइस के केस में ये क्रेडिट नोट मैंने किया था. Then next is registrations have been cancelled. Now this is also a big issue.
आपने किसी से माल खरीदा, उसने कंप्लायंस नहीं किया, उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, मेनी अ टाइम सुओ मोटो कैंसिलेशन फ्रॉम 1 जुलाई 2017। उसने जितनों को आईटीसी पास ऑन किया सबके पास चिट्ठी आ गई, आईटीसी रिवर्स करिए। और स्क्रूटिनी मॉड्यूल ऐसा बनाया हुआ है कि जहां पे whenever they see that the dealer's registration has got cancelled, your ITC has to be reversed. Now you have to explain. So there are now many case laws also which are in the favor of the assessee. Suncraft का केस है कलकत्ता हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक गया था वो। तो वहाँ पे क्या बोला गया है कि the department can come to the assessee only in the last resort. You have to first catch the defaulting supplier. So you have to differentiate between a defaulting supplier and a honest purchaser. But department doesn't look into all these things ना। वो तो क्या बोलते हैं कि जब कैंसिल अगर हो गया तो हमारा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है जो कि हमको बताता है कि डीलर कभी एग्जिस्टेंस में था ही नहीं। तो आप बोलेंगे कि हमको दिखाइए इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, क्योंकि हमने तो माल खरीदा उससे और हमने पेमेंट भी किया, ये हमारा लेजर है, ये बैंक स्टेटमेंट है, ये इनवॉइस है, सब कुछ है। तो बोलेंगे जब एग्जिस्टेंस में नहीं था, आपने माल खरीदा ही नहीं, मतलब आपने गलत खरीदा फिर, तो हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम दिखाइए, हम क्रॉस एग्जामिन करेंगे। सो वो सब चीज आपको नहीं मिलती है। ऑल दिस रिलीफ maybe we can get when we go to tribunal next level पे, या अगर कोर्सिव एक्शन हो रहा है तो अगर आप हाई कोर्ट जाते हैं तो क्या पता वहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो there are some case laws which will help you, but generally डिपार्टमेंट लेवल पे इसका हेल्प नहीं मिल रहा है। So they will tell you to do the reversal, और या फिर वो आईटीसी ब्लॉक कर देंगे। सर ने बोला आईटीसी ब्लॉक का केस होता है सर, बहुत सारा ऐसा कैंसिल सप्लायर जो है या कैंसिल रजिस्ट्रेशन है, फेक इनवॉइसेस में दे ब्लॉक दी आईटीसी। फिर आप लड़ते रहिए साल भर, तो वो एक साल तो आपका अनब्लॉक होगा नहीं, वो 1 ईयर तो आपका अनब्लॉक होगा नहीं। 1 ईयर के बाद अनब्लॉक हो भी जाएगा तो there are all the chances that again it will get blocked. So that is the issue that we are facing. Then point number 8, ये 17, 18, 18, 19 में बहुत सारा ऐसा हुआ केस कि हमने पेमेंट कर दिया सप्लायर को, सप्लायर ने 3B फाइल नहीं किया, टैक्स पेमेंट नहीं किया, सप्लायर ने जीएसटी 1 फाइल किया लेकिन उसने B2C कर दिया, तो मेरे 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है। So in such cases there are 2 circulars that have come, circular 183 and 193, in which if you get a certificate from the supplier you can get the benefit, but if he has not paid or not filed 3B, so then there is a problem. But you know उस टाइम पे लोग क्या करते थे, I tell you, उस टाइम पे वो 0 करके 3B फाइल कर देते थे। मतलब मैंने 100 रुपए का सप्लाई किया जीएसटी 1 में और अगले ने आईटीसी ले लिया और मैंने 0 अमाउंट करके 3B फाइल कर दिया, तो आपको अगर एज अ टैक्स प्रैक्टिशनर या क्लाइंट आप जाएंगे जोर से एसएससी को ऑफिसर को बोलेंगे कि देखिए इसने फाइल किया 3B, जब उसने 3B फाइल किया मतलब उसने टैक्स पेमेंट किया, तो आप उनको क्यों नहीं बेनिफिट दे रहे? तो बोलेगा देखिए उसने 0 करके फाइल, जो कि आपको नहीं पता, क्योंकि उसने क्या फिगर डाला आपको नहीं पता, ऑफिसर को पता है, he has access to that system ना। तो बोलेगा कि हाँ उसने फाइल किया 3B, आप ही बोल रहे, लेकिन उसने 0 करके फाइल किया, तो टैक्स तो दिया ही नहीं गवर्नमेंट को। तो ये सब स्क्रूटनी मॉड्यूल पकड़ रहा है। Now we are helpless in such situations because technically if you see what is happening is that in erstwhile law also service tax, VAT, excise में ऐसा था जजमेंट्स कि अगर आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया तो आपको आईटीसी मिलेगा, इट बिकम्स अ वेस्टेड राइट। एस्कॉर्ट्स इंडिया के केस में इट हैज बिकम अ वेस्टेड राइट, तो आपको मिलेगा। बट जीएसटी में थोड़ा सा डिपार्टमेंट का व्यू चेंज हो रहा है, कोर्ट्स का व्यू भी चेंज हो रहा है, इन विच अगर 3B में पेमेंट नहीं किया गया है तो आपको डिफिकल्टी हो रही है, आईटीसी मिलने में डिफिकल्टी हो रही है और हर बात के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा है। और अगर आप कोर्ट के केसेस अपने स्क्रूटनी के केस में आप कोर्ट अगर करते हैं डिपार्टमेंट को, तो वो डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो बोलते हैं कि नहीं आपका केस अलग है, उनका केस अलग है, तो somehow the relief is not coming at the department level. Okay, 10 minutes.
Point number 9. Now this matter is gone to the Supreme Court. Honorable Supreme Court में this is section 16 subsection 4 का case है, where you have to avail ITC within September और extended अब November हो गया, November तक आपको लेना था, but people have filed a 3B return or the suppliers have filed the GST 1 late and your ITC has not been allowed, and now the matter is before the Honorable Supreme Court. Four high courts have given adverse order. Andhra Pradesh High Court, Chhattisgarh, Calcutta, Patna. And now the matter, 2 matters have gone to the Honorable Supreme Court. Now the matter will be decided over there. Maybe we don't know what will be the decision, but if we see the trend of the erstwhile cases, so erstwhile case में क्या होता था कि अगर आपने ITC लेट फाइल करके लिया रिटर्न में तो आपको अलाउ होता था, बिकॉज जीएसटी में भी क्या हो रहा है कि आपने लेट फीस देके रिटर्न को फाइल कर दिया और डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया उसको. इट इज जस्ट दैट यू हैव फाइल्ड इट लेट. नाउ इफ वन सीज द ओरिजिनल स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी, इट वाज जीएसटी 1, 2 and 3. सो द पेमेंट एंड द अवेलमेंट ऑफ आईटीसी वाज डिफरेंट. जीएसटी 2 में आप आईटीसी लेते हैं और 3 में पेमेंट करते हैं, लेकिन 3 भी आने के कारण क्या हुआ कि दोनों जुड़ गया. तो जनरली सम टैक्स पेयर्स हु हैड जेन्युइन प्रॉब्लम of finance could not file their returns in time, and so ITC also got delayed. Availment of ITC also got delayed. So that was the issue. Now एक मद्रास हाई कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट आया कि ये जो नोटिफिकेशन आया था कि 3B will now be the return and not 1, 2 and 3, that had come sometime in 2019 but with a retrospective effect. So वहाँ पे असेसी ने प्ली लिया कि मेरा मैटर 17, 18, 18, 19 का है, और जब हम फाइल कर रहे थे 3B, हमको नहीं पता था कि 3B will become the return. अगर हमको उस टाइम पे पता चल जाता कि 3B is going to become the return, I would have filed it within time. तो वहाँ पे एसएससी को रिलीफ मिल गया. So that is 116(4) का केस which has where the assessee has got a relief. But now 16(4) का constitutional virus has been challenged and Supreme Court is seized of the matter. So we will see the decision maybe. Supply अब इसमें भी अगर टाइम से ले लेता है इसको रिवर्स तो मिलना चाहिए. अब सर ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया. इसमें क्या हो रहा है कि सप्लायर ने लेट फाइल किया, हमने तो 3B में टाइमली ले लिया, हमने 3B में सितंबर में टाइमली ले लिया, सप्लायर ने लेट से फाइल किया. So in that case the 16(4) should not be applicable, because 16(4) should be applicable only in case when I have delayed in availment of the ITC, not my supplier. So we have taken that plea in some cases in the department कि अगर supplier नहीं भी फाइल करता, GST 1 B2C में कर देता, फिर भी तो आप उनको सर्कुलर 183 और 183 में बेनिफिट दे रहे हैं. तो यहाँ पे तो सप्लायर ने अपलोड कर ही दिया, तो जब उसने कर दिया तो आपको तो पता चली गया कि उसने सप्लाई किया, 3B में भी उसने पेमेंट किया ही है, तो ये बेनिफिट हमको मिलना चाहिए. 16(4) should not be applicable in such a case, but the scrutiny module is taking that as a 16(4) case. तो हाँ नहीं आता एकदम. तो अभी डिफिकल्टी क्या हो रहा है, एंड ऑल्सो डिस्कस वन मोर डिफिकल्टी ऑफ मतलब व्हाई वी आर फेसिंग सच डिफिकल्टीज इन स्क्रूटिनी कि this is being picked up as a 16(4) case by the module. Now the officers are saying कि अब हम इसमें कुछ नहीं आपको हेल्प कर सकते हैं. ये जब तक कोर्ट से डिसीजन नहीं आएगा कि इसमें एप्लीकेबल नहीं है तो हम आपको बेनिफिट नहीं दे सकते. सॉफ्टवेयर ही सर इन्होंने ऐसा बना दिया कि वो पकड़ लेता है. एक और डिफिकल्टी जो है सॉफ्टवेयर का बताते हैं, दैट इज रिवर्सल ऑफ कॉमन आईटीसी. रिवर्सल ऑफ कॉमन आईटीसी में क्या बोलते हैं कि आपका अगर टैक्सेबल सप्लाई है मान लीजिए 90 रुपया और एग्जेम्प्ट सप्लाई है मान लीजिए 10 रुपया, तो 10% आपको कॉमन आईटीसी को रिवर्स करना है. मतलब कि क्या होगा कि जो टैक्सेबल सप्लाई का आईटीसी आपको पूरा मिलेगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई का आईटीसी नहीं मिलेगा, लेकिन जो कॉमन आईटीसी है उसमें आप 10% रिवर्स करिए. ठीक है. नाउ द स्क्रूटिनी मॉड्यूल इज prepared in such a manner that it assumes the entire ITC as common ITC. तो क्या बोलता है
कि आपने अगर 100 रुपया ITC लिया तो 10% आपका एग्जाम सप्लाई है, 10 रुपया रिवर्स करिए। तो यू टेल द डिपार्टमेंट होल्ड ऑन, वेट, ऐसे रिवर्सल नहीं होता है। रिवर्सल होगा रूल 42-43 के हिसाब से, वेयर आई हैव टू रिवर्स ओनली कॉमन ITC। तो डिपार्टमेंट विल से कि वी डोंट नो द कॉमन ITC। आपने 3B में सिंगल लाइन में भरा है, 4 या 5 में, ऑल अदर ITC में ITC। हमने उसको पूरा अज्यूम कर लिया कॉमन ITC है और कैलकुलेशन करके बोल दिया अब आप प्रूव करिए कि कॉमन ITC आपका कितना है। तो अगर आपका सिर्फ 10%, अगर आप ट्रेडर है मान लीजिए, तो ट्रेडर में तो मैक्सिमम टैक्सेबल माल खरीद रहे, माल बेच रहे, कॉमन ITC बहुत कम होगा। ऑडिट फीस, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस जरा सा ही होता है खाली। लेकिन उसको प्रूव करने के लिए आपको पूरा ITC लेजर देना पड़ेगा और रिकंसाइल करना पड़ेगा और वहां से फिर सिलेक्ट करके निकालना पड़ेगा कि ये मेरा कॉमन ITC है और इस पे मेरा रिवर्सल लगना चाहिए। उसके बाद भी कुछ केस में क्या हुआ है कि ऑफिसर्स हैव सेड, बोले कि ये तो बहुत कम लग रहा है, इतना तो कम होना नहीं चाहिए। मतलब कम का क्या डेफिनेशन है? GST law doesn't say anything about what is the percentage of the common ITC। तो नहीं, तो बहुत कम है। तो कितना होना चाहिए? तो इन वन ऑर्डर वी हैव गॉट कि 5% तो होना ही चाहिए। तो 5% में कैलकुलेट करके रिवर्सल का फिगर आ गया, विच इज मच हायर देन व्हाट इज द एक्चुअल रिवर्सल। अब उसको अपील में जाइए, प्री डिपॉजिट दीजिए, अपील में जाइए, अपील में माने नहीं माने फिर वेट करिए ट्राइब्यूनल का। तो वो कॉम्प्लिकेशन, मतलब तो दिस इज ऑल हम लोग भुगत रहे हैं बिकॉज सॉफ्टवेयर ऐसा बना हुआ। मेरा प्रेजेंटेशन आप लोग के पास है, कुछ अगर डिस्कस करना होगा डिस्कस कर लेंगे, बट वी हैव टू फिनिश आल्सो। नाउ आई एम जस्ट कमिंग टू ऑडिट। तो ऑडिट में क्या हो रहा है? ऑडिट एज वी अंडरस्टैंड शुड हैव बीन ए लिटिल डिटेल्ड वर्जन ऑफ द स्क्रूटिनी, कि उसमें आप 10 चीजें और देखिए। लेकिन हो क्या रहा है कि उनके पास वो स्क्रूटिनी का पूरा डेटा है विच दे यूज फॉर ऑडिट, और उसके ऊपर हो सकता है कुछ लिमिटेड चीज हो। गिरीश आहूजा सर, सर नमस्ते सर, सर नमस्ते, आइए सर। नमस्ते सर, इंतजार हो रहा सर। अभी से कलकत्ता में मिले थे आपसे। सुनने के लिए अरे सर मैं भी सुन रहा हूँ। नहीं सर, सर आप आपके सामने बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ी सर, ये सबसे बड़ा है सर हम लोग का प्राइस है सर। मैं पीछे हूँ सर, GST में समझ में कम है। दरअसल बढ़िया हुए ये हम लोग को गिरीश आहूजा सर के सेशन में बोलने का चांस मिला, इससे बड़ा चीज और क्या हो सकता है? बोलिए, अथॉरिटी है सर एकदम हर चीज का। सर के मुख्य वाणी से एक एक वर्ड जो निकलता है ना, वो लोहे की लकीर है, उसका आंख नीच क्या फॉलो कर सकता है? इसलिए वो सेशन आफ्टर लंच आफ्टर लंच इसलिए नहीं देंगे एकदम। और सर की एनर्जी इतनी हाई है, मतलब अभी हम लोगों ने कलकत्ता में कला मंदिर में प्रोग्राम किया था, पूरा कला मंदिर फुल, और इतनी एनर्जी कि सर बिना माइक के बोल सकते हैं, मतलब, और लास्ट रोड तक सुनाई देगा एकदम एकदम। तो आई एम जस्ट जंपिंग टू डिपार्टमेंटल ऑडिट। सो ऑडिट में सबसे इम्पोर्टेंट अभी क्या हो रखा है? द सिलेक्शन ऑफ द टैक्स पेयर, कि सिलेक्ट वाला कैसे कर रहे हैं। ये अभी जनरली लोगों को पता नहीं है, क्योंकि किसी साल ऑडिट आ रहा है, किसी साल ऑडिट नहीं आ रहा है। सो देयर आर सम क्राइटेरिया बेसिकली। तो पहला है कि अगर टैक्स पेयर ऑडिटेड आज तक नहीं हुआ है 17, 18, 19, तो चांसेस है हाई कि आपको ऑडिट हो सकता है। उसके बाद द साइज ऑफ द टर्नओवर, नेट प्रॉफिट, द इनकम। देयर आर सम हाई रिस्क सेक्टर्स आल्सो, जैसे रियल एस्टेट में हाई रिस्क होता है, वहाँ पे जनरली इवेजन का चांस ज्यादा होता है, तो वो सब कंपनीज के ऊपर ऑडिट आने का चांस हाई है। उसके बाद ये हाँ जो ऑटोमेटेड जो लोकल बॉडी करता है, नहीं वो लोग भी करते हैं। सो इट इज सो भी क्या हो रहा है कि नहीं, हाँ मतलब एक तो क्या है कि बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न्स सिस्टम पकड़ रहा है कि इसको ऑडिट करो आप, एंड देन लोकल कंडीशंस को भी वो लोग लेके फिर वो लोग ऐड कर देते हैं।
जैसे मान लीजिए रेंज में 50 फाइल, उसको पता है कि ये 4 आदमी जो है ये बदमाश है, ये लोग हमेशा उल्टा पुल्टा ज्यादा करता है, लेकिन ये लोग ऐसा मैनेज करता है कि सिस्टम नहीं पकड़ सक रहा है ये लोग को, इनको तो पकड़ो चारों को, तो वो लोग दे विल एक्ट, वो कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग क्या बोलते हैं क्लाइंट्स लोग को जनरली कि आपका बीपी और शुगर अगर ठीक है ना तो मोटा मोटी ठीक है, मतलब चलेगा, दवाई खाते रहिए। तो वैसे ही टैक्स में क्या है, आपका रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेमेंट, अगर ये दो चीज टाइमली कर रहे हैं ना तो बहुत सारे पैरामीटर से आप बच जा रहे हैं, वो रेडार के नीचे नीचे रह रहे हैं। क्योंकि देखिए एक है द टैक्स पेयर फाइल्स इनकंसिस्टेंटली, मतलब फाइलिंग में गड़बड़ा रहे हैं अगर आप, तो चांसेस बहुत है स्क्रूटनी में पकड़े जाने का या ऑडिट पकड़ने का। तो एक चीज हमेशा क्लाइंट्स लोग को बोलिए कि टाइमलाइंस फॉलो होना चाहिए। हाँ, रिटर्न आप टाइमली दीजिए और टाइमली पेमेंट करिए। जहाँ पे इंटरेस्ट का कंपोनेंट ज्यादा होता है, लेट फीस कंपोनेंट ज्यादा होता है, वहाँ पे सिस्टम पकड़ लेता है कि ये जरूर कुछ ना कुछ इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, बाकी सब टाइमली करें, ये करें टाइमली करें, इसको पकड़ो, इसको तो पहले देख लो एक बार। सो अगर आपका टाइमली रिटर्न और टैक्स पेमेंट अगर टाइमली है ना तो यू आर सेव्ड फ्रॉम मेनी ऑफ द पैरामीटर्स, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पिछला कोई टैक्स इवेजन हुआ है, कोई सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कुछ है तो जीएसटी का भी 100% चांस है आने का। और फर्दर और भी एक है कि अगर आपका एंटी इवेजन आ गया, डीजीजीआई आ सकता है, ऑडिट आ सकता है, स्क्रूटनी आ सकता है। बिकॉज नाउडेज यू सी व्हाट इज हैपनिंग, आई टेल यू वन लाइव एग्जांपल। एक आप गलती करेंगे, 4 जगह से चिट्ठी आएगा, आपका रेंज भी भेजेगा, एंटी इवेजन भी भेजेगा, ऑडिट भी भेजेगा, डीजीजीआई भी भेजेगा। क्यों? क्योंकि वो सेम डेटा सब देख रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, सर्विस टैक्स एक्साइज में आपके रेंज के पास खाली डेटा था, वो लोग अगर लेते थे तब उनके पास जाता था। अब ये डेटा सबके पास है, सबको एकदम देख रहे हैं एक स्क्रीन में, तो और सबको ही वो क्रेडिट चाहिए कि मैंने पकड़ा और मैंने टैक्स जमा करवाया। तो सब कोई चाहता है कि हम चिट्ठी इशू करें। अब पहला चिट्ठी के बाद दूसरा चिट्ठी में आप अगर बोलेंगे कि सर वो पहले चिट्ठी आ चुका है, हम लोग इसको देख रहे हैं, नहीं, वो तो ठीक है, हमको भी, हम आपके रेंज वाले हैं, हमको पहले जवाब दीजिए। वो बोलेगा कि स्टेट, अच्छा ये तो सेंटर हो गया, स्टेट भी है, स्टेट वाले डीलर बेकन्स लाइक ए द्रौपदी क्लोज करते हैं, ठीक है। So what I will just quickly do is you have the copy of the presentation, we can discuss over. But do we have a right to know on what basis, what parameters the case has been selected for audit? Not right तो नहीं आपका, जब ऑडिट अगर आ गया तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। इनफॉर्मली आप पूछ जरूर सकते हैं। आफ्टर द ऑडिट स्टार्ट एंड यू हैव सम रेपो विद द डिपार्टमेंटल पर्सन, यू कैन आस्क हिम कि सर मेरा ऑडिट क्यों कर रहे हैं, हम तो 4 साल से बचे हुए थे, अब आप क्यों ऑडिट करने आ गए, तो क्या पता वो बता दे आपको। उससे क्या हुआ, केस का फोकस समझ में आया। हाँ, वो दैट यू विल रेपो बनाने के बाद आप पूछ सकते हैं, तो वो क्या पता बोल दे कि नहीं देखिए आपका 4 हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन था, हाँ इसीलिए हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन आया तो हम लोग को कर लिया। By this we come to the end of the technical session. So I just want to give these 3 books. So I have got 3 questions, quick questions. Which is the form we need to consider for availing ITC? महीना का महीना हमको ITC देते हैं, उसके लिए कौन सा फॉर्म हमको देखना पड़ता है? 2B सर। सबने आंसर दिया सर ने, लेकिन आंसर पहले दिया। सर आइए फटाफट आइए। Special prize goes to Mr. राजेश अग्रवाल जी को from जमशेदपुर। चलिए सेकंड है, व्हाट इज द लिमिट फॉर इशूइंग ई इनवॉइस? सर आइए। वेरी गुड। And which years have become time barred for the issue of notice? 17, 18. 18, 19.
18-19 भी हो गया टाइम बाद 17-18 दोनों हो गया चलिए ओके थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर दी थैंक यू सो मच By this, we come to the end of the second technical session. I would request the organizing committee members to present mementos to the dignitaries on the dais. सर टिकट साइड जाएंगे I request Sri Gopal Chandra Rao, Vice President Bhubaneswar Tax Bar Association, to deliver his vote of thanks. It is high time. So now I'm going to end the session. On behalf of the BTP and AFTP, I extend my heartfelt gratitude to each and everyone to participate in the session. I would like to express my sincere appreciation to the chairman of the session for his deep thought and feeling. Furthermore, I would like to express my sincere gratitude to the speaker session of this, for the sharing his experience and expertise in enlightening us with his elaborate presentation. Sir, your insight have been truly enlightening us and inspiring. Thank you all. Market value of the share on the date of conversion. ठीक है और फिर कैपिटल गेन निकालेंगे फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ अब 2000 के निकाले 5 के नहीं निकाले निकाल लिया कैपिटल गेन भी दे दिया बिजनेस इनकम अगले साल फिर 1000 और बेचा इंडेक्सेशन वही होगा पुराना 1 साल का ही लेकिन कैपिटल गेन नेक्स्ट ईयर अगले साल उस वक्त भी बिजनेस इनकम हो कंसीडरेशन प्राइस माइनस मार्केट वैल्यू 1 साल पहले तो ये कैपिटल गेन का रूल है समझ में आ गया 45(2) से एक 45 माने मैंने नहीं किया डैमेज और डिस्ट्रक्शन बाय फायर कैलामिटीज और नेचुरल कैलामिटीज वगैरह वो डैमेज डिस्ट्रक्शन इंश्योरेंस करा रखा क्या इंश्योरेंस उसी साल मिल जाता है नॉर्मली नहीं तो आपका कन्वर्ट जब भी डैमेज और डिस्ट्रक्शन होगा उसे ट्रांसफर कह देंगे लेकिन कैपिटल गेन नहीं लगेगा कब लगेगा इन द प्रीवियस ईयर when the amount is received from insurance company or amount plus asset अगर कोई asset भी दी from the insurance तो ये भी उस साल नहीं लगा जैसा डैमेज डिस्ट्रक्शन कब लगा जब अमाउंट मिला शेयर में भी यही करा जब कन्वर्ट किया तब कोई कैपिटल गेन नहीं पोस्टपोन हुआ डेपोट 45(5) कंपल्सरी एक्विजिशन बनेगा जब कंपल्सरी एक्विजिशन होता है उस दिन ट्रांसफर माना जाता है लेकिन पैसे कहाँ आए The capital gain will arise in the previous year in which the part or full compensation is received. 2 साल लग सकते हैं 4 साल लग सकते हैं कैपिटल गेन तब होगा जब होगा लेकिन इंडेक्सेशन कब तक का करेंगे जब ट्रांसफर कन्वर्जन होगा वहां तक का इंडेक्स लेकिन बाद में टैक्स लगाएंगे जब मुझे पैसा मिलेगा एनहांस कंपनसेशन भी तो मिल सकता है आप कोर्ट में चलेंगे कि कम मुझे कंपनसेशन मिला एनहांस कंपनसेशन that enhanced compensation will be taxable in the previous year in which that amount is received. अब ये enhanced compensation short term होगा कि long term होगा ये यहाँ से नहीं पता लगेगा ओरिजिनल कैपिटल गेन कौन सा शॉर्ट और लॉन्ग कहाँ से देखा लैंड जब ली और लैंड जब कंपल्सरी एक्वायर हुई वो जो पीरियड है शॉर्ट के लॉन्ग और मुझे कंपनसेशन 4 साल बाद मिले 5 साल बाद मिले एक्स्ट्रा दैट इज नॉट द ट्रू एनीथिंग वो तो कैपिटल गेन ओरिजिनल ट्रांसफर के ऊपर माना जाएगा लेकिन कब टैक्स लगेगा जब मुझे एनहांस कंपनसेशन इज रिसीव अगर 4 इंस्टॉलमेंट मिली तो 4 सालों में लगेगी मेरी बात को समझ द लॉ
डिफर कर रहा है लाइबिलिटी टू पे टैक्स, बट कन्वर्जन तो हो गया या ये एक्वायर हो गया इन द ईयर ऑफ, फिर नया चीज आई 45.5 में। क्या आया 45.5? आप इंडिविजुअल अरेंजमेंट में आप एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट कर देते हैं बिल्डर्स कि देखिए ये मेरा 1000 गज का प्लॉट है या मेरा एकड़ का प्लॉट है, तुम इस पे कंस्ट्रक्शन करो, 5 फ्लैट तेरे या 20 फ्लैट मेरे या 1 फ्लैट तेरा 3 फ्लैट मेरे, यही करते हैं। ये एग्रीमेंट टू सेल अगर रजिस्टर्ड है तो लॉ कहता है जिस दिन भी आप रजिस्टर्ड कर उसको बिल्डर को दोगे या डेवलपर को दोगे वो ट्रांसफर माना जाएगा, लेकिन कैपिटल गेन नहीं लगेगा। कब लगेगा? जिस दिन कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा अथॉरिटी से उस साल कैपिटल गेन लगेगा। तो पोस्टपोन हो गया। The capital gain is postponed at a later date, but it arises in the previous year in which the transfer has taken place. Clear है सर? ये 45 था और ये मैंने अभी बताया कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। क्या चीज होती है कन्वर्जन ऑफ ट्रेड? व्हाट इज कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक? ये क्या है? सुनिए, मैं पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, मेरे पास लैंड पड़ी लेकिन इन्वेस्टमेंट हम इसको स्टॉक इन ट्रेड करना चाहते, क्या एंट्री पास करेंगे? क्या एंट्री पास करेंगे? कैपिटल ऊपर पड़ी है इन्वेस्टमेंट में और मैं उसको स्टॉक इन ट्रेड करना चाहता, क्या एंट्री पास हो? कैसे हो? कन्वर्ट नहीं किया, ट्रीट किया। पहले हम उसको कैपिटल एसेट मान रहे थे और उस उठाकर नीचे करके इन्वेंट्री में कर रहे थे। कुछ नहीं, कोई एंट्री करिए। अभी एंट्री की बात बताऊंगा। वैसे पहले कोई एंट्री नहीं होती, पहले हम उसको दिखा रहे थे इन्वेस्टमेंट में, अब कहाँ दिखा रहे हैं? इन्वेंट्री में। कन्वर्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। कन्वर्जन होता है जब बाहर से नया हूँ, मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं अपनी एक बिजनेस शुरू करता हूँ और कैपिटल एसेट को यहाँ ले आता हूँ अपनी बिजनेस में, उससे कन्वर्जन कहते हैं। लॉ यूज करता है कन्वर्जन और ट्रीटमेंट, लेकिन आज का टैली सिस्टम है, बगैर एंट्री के तो ऊपर नीचे लाएगा नहीं। राइट और रॉन्ग? पहले तो वो होती थी एंट्री पड़ी है लैंड, कहाँ दिखाना है? ऊपर दिखाना है तो ऊपर दिखा दो, नीचे दिखाना है तो इन्वेंट्री हो गई। पहले ये दिखाई वही खाता तो यही था ना। आजकल तो टैली सिस्टम है, आजकल तो अकाउंटिंग से तो वो एंट्री मांगता है और वो यही मांगता है इन्वेंट्री डीआर या स्टॉक इन ट्रेड डीआर टू कैपिटल वो लैंड। तो ये चीजें अब कन्वर्जन है, पहले इसको ट्रीटमेंट कर देते हैं ऊपर से उठाकर नीचे। ये क्या है? ट्रांसफर। ये कब बिकेगा? जब बिकेगा तब कैपिटल गेन भी लगेगा और बिजनेस इनकम भी लगेगी। क्लियर है सर? कोई सवाल है तो साथ साथ पूछते हैं, जो सवाल है साथ साथ पूछते हैं। अब बड़ा खतरनाक बता रहा हूं मैं, खतरनाक क्या चीज हुई है। आप एक बिल्डर है, आप एक कमर्शियल बिल्डिंग बना 20 वाला, बाद में सोचा यार ये 20 वाला की बनाई 18 भेज देते, 2 का मैं अपना ऑफिस बना, तो क्या है? कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री इनटू कैपिटल। Am I right? This is a conversion of inventory. आपकी इन्वेंट्री है, आपने उसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर लिया। जिस दिन कन्वर्ट करोगे उसी दिन बिजनेस इनकम लगेगा। एक नया लॉ आया है, प्लीज सेक्शन 28(6)A क्या कह रहा है? आपने सोचा ही अरे मेरा तो माल है, हम उसको बेचते नहीं है, उसको ऑफिस बना देते। ऑफिस बनाएंगे तो उसे कैपिटल एसेट लगेगा, उस पर डेप्रिसिएशन मिलेगी, लेकिन उससे पहले स्टैंड ड्यूटी वैल्यू माइनस कॉस्ट के ऊपर बिजनेस इनकम को टैक्स देना पड़ेगा। खाया पिया कुछ नहीं, सिर्फ नीचे से ऊपर किया और टैक्स दिया। नजर आ रहा है? ये नया लॉ आया है, ये ध्यान रखना। शेयर से भी ऐसे होता है, शेयर में भी ऐसे है। लोगों ने क्या किया? लोग क्या करते हैं शेयर में? इन्वेंट्री है, ट्रेडर है और कहता है इसको कैपिटल एसेट बना देता हूं। क्यों बना रहा है? इन्वेंट्री में जो टैक्स लगेगा 30% लगेगा और कैपिटल गेन में हो सकता है 15% लगे कि 20% लगे कि 10% लगे, डिपेंडिंग अपॉन लिस्टेड शेयर है कि अनलिस्टेड शेयर है। वो कहता है इसको उठाकर मैं क्या बना लेता हूँ? कैपिटल एसेट बना। उसी दिन
मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर माइनस कॉस्ट के ऊपर बिजनेस इनकम का टैक्स देना पड़ेगा। ये बिल्कुल अलग है, जो उल्टा था। कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में किया, बाद में टैक्स देना है, लेकिन इन्वेंट्री को अगर कैपिटल एसेट बताया उसी दिन टैक्स देना। ये समझ में आया? ये लोग करते थे, आया तो शेयर्स के लिए था, लेकिन सारे फंस गए, सारे के सारे फंस गए। बिल्डर सब फंस गए। वो अपनी बिल्डिंग में अपना अगर बनाएंगे, उसको ट्रीट करेंगे क्या, कैपिटल एसेट, अपना ऑफिस बनाएंगे, उसी दिन मार्केट वैल्यू भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कॉस्ट के ऊपर उनको टैक्स देना पड़ेगा अंडर द प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये 90% लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि ये कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं है, ये सेक्शन 28(6)(a) में। क्लियर है? क्लियर है सर? एनी डाउट? नहीं, पहले था ही नहीं, पहले ये लॉ ही नहीं था कि इन्वेंट्री को कह कुछ नहीं करते थे, आप उसके ऊपर टैक्स देंगे, पहले लॉ नहीं था। Individual builder converts that, not a proprietor, or sole proprietor converts the stock. Same thing. But nobody can make profit for himself. Mutuality. Are you not getting a profit yourself? Deemed है, उन्हें इनकम मान लिया। अरे यार, अगर nobody can take profit for himself, पहले इन्वेंट्री था, आप उसको कैपिटल एसेट बना रहे हैं और अपने ऑफिस में यूज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे नहीं करेंगे? उसको मान लिया उसने, क्या उन्होंने मान लिया सर इसको। Nobody can make profit for himself. Company can make a profit for himself. कंपनी भी ये कर सकती है। वो छोड़ दो पुरानी चीजें। सर अब पॉइंट क्या है, पुराने लोगों को पुरानी चीजें याद रहती, पढ़ता तो है नहीं, और पढ़े तो समझ में आता नहीं है। छोड़ सर, वास्तविक वक्त बदल गया है, अब बहुत कुछ बदल गया है। अभी कुछ बातें हम आपसे भी करेंगे, लेकिन डर रुक जाइए। मैं ये बात कर, अब सुनिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, और ये इनका भी सामने पूछ रहा हूँ। हमारे एक सेक्शन 45(3) है सर, क्या कहता है? इंट्रोडक्शन ऑफ एनी कैपिटल एसेट इनटू द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर एक पार्टनर अपनी कैपिटल एसेट को पार्टनरशिप फर्म में ले आया तो ये ट्रांसफर मानी जाती है सर। 45(3) में मानी जाती है। तो कैपिटल गेन किसको लगता है? पार्टनर। एओपी नहीं ले रहा, एओपी में भी यही है। मेरी एक लैंड थी, मैं अपने पार्टनरशिप फर्म में उस लैंड को कंट्रीब्यूट करके ले आया, तो क्या ये ट्रांसफर है? इनकम टैक्स कहता है पार्टनरशिप अलग है, पार्टनर अलग, ये ट्रांसफर माना जाए। इसमें कैपिटल गेन टैक्स लगेगा किसको? पार्टनर को लाया। लेकिन वहां एक बड़ा एडवांटेज दे दिया, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन द कंसिडरेशन प्राइस शैल बी द वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या लिखा है? वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने एक लैंड 2 करोड़ की ली, आज मार्केट वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 5 करोड़ की, मैं उसको 2 करोड़ पे ही ले आता हूँ, तो कौन सा कैपिटल गेन? कहां से कैपिटल गेन हुआ? ज्यादा लॉस भी हो सकता है अगर इंडेक्स करे तो। इंडेक्स करे तो लॉस भी हो सकता है भाई, क्योंकि 2 साल के बाद इंडेक्स हो तो लॉस भी हो सकता है। लेकिन मैं 2 करोड़ की 3 करोड़ की ले आऊंगा तो ठीक है, कंसीडरेशन प्राइस 3 करोड़ माइनस इंडेक्स कॉस्ट, ले लो। 4 करोड़ की ले आया, ले लो, लेकिन करना मत। ये लोग यही कर रहे हैं, ये बुक वैल्यू पे ले आते हैं, अब नहीं करना। अब एक सेक्शन आ गया है 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 10, जो कोई देखता नहीं, उस पे लिखा है वेयर एनी पर्सन रिसीव्स फ्रॉम एनी अदर पर्सन और पर्सन ए सम एक्सीडिंग 50,000, छोड़ दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन or for inadequate consideration. What is an inadequate consideration? Stamp duty value minus the price which is paid. Am I right? Yes. Inadequate क्या होगा? Stamp duty value minus the price which is paid. वो कहेगा पर्सन कौन है? पहले पर्सन 56(2)(7) में होता था इंडिविजुअल HUL, अब लिखा एनी पर्सन। पर्सन कैन बी इंडिविजुअल, HUL, firm, company, AOP, BOI, anybody receives from whom? Any other person or person. Immovable property. फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। 5 करोड़ की कीमत है तो 2 करोड़ करोगे, 3 करोड़ करोगे, पार्टनर को 3 करोड़ के हिसाब से टैक्स लगेगा।
लेकिन 5 करोड़ माइनस 3 करोड़ पर हमको 2 करोड़ के ऊपर टैक्स देगा अंडर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10। समझ में आ रहा है सर? ये समझ में आ रहा है? ये कोई देखता ही नहीं। ये लॉ में लिखा है सर 45(3) में वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए हमने तो कर दिया। लेकिन भाई साहब वो 1/4/2017 से पहले की बात है और वो लॉ पुराना है। 1/4/2017 में लॉ बदल गया है, वो कोई देखता ही नहीं। सर वो कोई नहीं देखता है। ये कहानी सुनाता हूँ सर, 2 मिनट कहानी सुनने के तरीके होते हैं। सुनते ये क्यों आया है 52(10) और 52(7)? ये थोड़ी सी कहानी सुनिए। एक 11098 तो गिफ्ट टैक्स इस कंट्री से हट गया। एवरीबॉडी नोस गिफ्ट टैक्स हट गया। क्या कह के हटा था कि यू हैव पेड टैक्स ऑन योर टैक्सेबल इनकम, आफ्टर पेइंग द टैक्स यू कैन मेक ए गिफ्ट टू एनीबॉडी। हमें किस बात का डर है? ये तो किसी को भी, क्योंकि टैक्स तो दिया हुआ है आपने, तो क्यों टैक्स लगे? लेकिन हमारे तो बड़े महान लोग हैं। रामलाल सुलेमान को गिफ्ट दे रहा है, कितना नेशनल इंटीग्रेशन है हिंदू मुस्लिम भाई बहन। सलमा भी कृष्ण कुमार को गिफ्ट दे रही। हमारी कंट्री में गिफ्ट दी थोड़ी जाती है, ली जाती है। गिफ्ट देता कौन है? को देता है गिफ्ट सर? भाई भाई को गिफ्ट नहीं देता, अरे बहन को गिफ्ट नहीं देते। एक अनफॉर्चुनेटली प्राणी है फादर बेटी का बाप जिसको गिफ्ट देनी पड़ती। अरे कौन किसको गिफ्ट देता है? कोई नहीं देता है, लेकिन रामलाल सुलेमान को दे रहा है। अब इसका फायदा उठाया। हमारे फायदा उठाने वाले नेता तो बहुत है। एक नेता थे, उसका बर्थडे था, सीए के पास गया और आरटीसी एडवोकेट के पास गया, जिसका भी गया मैं नहीं जानता। उसने कहा कि आपका बर्थडे है, गिफ्ट ले लो। 4 करोड़ की गिफ्ट। सर्वे हो गया, पूछा गया ये पैसे आपको 4 बर्थडे पे किसने दिए? ये तो मुझे पता लगा कि गिफ्ट टैक्स नहीं लगता है। मेरे को 4 करोड़ दिए, मेरे फ्रेंड्स रिलेटिव मेरे बहन हैं, इतने लोग दिए हैं, तो क्या करूं? इसकी लिस्ट बताओ। सोच तो बताना पड़ेगा। तो सीए उसका सीए का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ठीक है। उसको बुलाया, उसने कहा जी 15 दिन के बाद आओ। सीए ने एक लिस्ट बनाई, सभी को फोन कर दिया कि तुम्हारे पास आएंगे, लिस्ट में ये नाम है, तुम कहना इतना गिफ्ट कहां से आया वो भी बता, इतना गिफ्ट दिया, इतना दिया। गए 100 आदमियों के पास गए, अलग अलग के पास, तुमने गिफ्ट दिया है? हाँ दिया। कितना दिया है? उसको क्या बता जी, उसने बताया था 50,000 रुपये। 50,000 गिफ्ट दिए, एक रकम लाख दिया। इसका सोर्स बताओ। कहता क्यों दिया? सर हमारे फैन है, हमारे नेता। इसका सोर्स बताओ। कहता एग्रीकल्चर इनकम। सोर्स क्या बताया? एग्रीकल्चर इनकम से दिया। चुप हो गए। 100 आदमी निकल गए। फिर क्या एक गरीब के पास गए, आपने गिफ्ट दिया? हाँ दिया। कितना? इतना दिया। सोर्स बताओ। कहते एग्रीकल्चर इनकम। कहते क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास लैंड ही नहीं है। कहता किसने कहा? ये देखो पट्टे पे ले रखी है, 20 पे लैंड ले लिए। फिर एक ग्रुप के पास गए, आपने ले लिया है? हाँ लिया। कहां से दिया है? कहता लोन लेके गिफ्ट दिया। और ये पास हो गया, सुप्रीम कोर्ट से क्लियर हो गया, लोन लेके गिफ्ट दिया। अगले साल फिर बढ़ गया। और लॉ तो नेता तो बदल नहीं सकते थे, लॉ बदला गया। लॉ में लिखा किसी भी एक आदमी से 25,000 से ऊपर गिफ्ट नहीं ले सकते। आया था लॉ, आया था सर 56 25 से ज्यादा नहीं ले सकते। उसे पूछा मेरा बर्थडे है, कहते बोल तो टीवी पे कल मेरा बर्थडे है, कोई भी मुझे 25,000 से ऊपर की गिफ्ट मैं लूंगी नहीं। अब गा की मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं नहीं लेना ही नहीं है। मैंने 25 से ऊपर 3 करोड़ की कर लो जो करना। अब लॉ फिर बदला कि यार ये क्या हो गया कि अब तो 25 हो गया। फिर आया लॉ कि इन एग्रीगेट यू कैन नॉट टेक ए गिफ्ट मोर देन 50,000 वेदर फॉर 1 पर्सन और मोर देन 1 पर्सन। आ गया था भाई, एक आदमी या एक से ज्यादा टोटल मिलाकर 50,000 से ऊपर गिफ्ट नहीं ले सकते एक साथ। ये आया लॉ। तो आप क्या करो? क्या करो? कह दो उनको कैश में गिफ्ट ले दो, कैश में चेक ना, आप और जो मर्जी दे दो, अपने शेयर दे दो, अपने लैंड दे दो, अपने ज्वेलरी दे दो, जो मर्जी दे दो, कैश नहीं दे। तो एक मुकट पढ़ा दिया गया 4 करोड़ रुपए का।
बर्थडे वाले दिन स्टडीड विद डायमंड, रूबीज, पर्ल, सफायर्स, वो 4 करोड़ का निकल गया। फिर नेता वो का बर्थडे आना है, लॉ में फिर भी से वो लॉ बना दिया। You cannot take a gift of more than 50,000 in money or in immovable property or a movable property. 50,000 से सीधे तो पूछा क्या हो गया? ये तो सर इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा था, जब पढ़ते थे आजकल अब दिल ही नहीं करता पढ़ने का, पढ़ के देखता हूँ क्या उसमें आइटम लिखी थी मूवेबल प्रॉपर्टी में शेयर्स, सिक्योरिटीज का गिफ्ट नहीं ले सकते, ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, स्कल्पचर, वर्क ऑफ आर्ट, इतना ज्वेलरी लिखा है। ख्याल आया एक ज्वेलरी की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2(14). वो डेफिनेशन पढ़ता क्या लिखता है उसमें, ज्वेलरी इंक्लूड्स ऑर्नामेंट्स, कंसिडर करना, ornament made of gold, silver, platinum or any other alloy consisting of one or more than these metals, whether or not containing precious or semi-precious stone. Number 2, it includes precious or semi-precious stone, whether set in or not in a furniture utensil. But कहता सर ज्वेलरी लिखा है और ज्वेलरी में ऑर्नामेंट्स आते हैं, बुलियन नहीं आता है। सोने के सिक्के ले लो, चांदी के सिक्के ले लो, वो तो ऑर्नामेंट नहीं है। चांदी का सिक्का, सोने का सिक्का ऑर्नामेंट नहीं है, वो ले लो। वो भी ले लिया गया, अगली बार बुलियन भी डाल दिया गया। फिर नहीं नेता बदला, क्या करे, सारे केजरीवाल हैं, मैं क्या कर सकता, बदल गई। आगे चलते फिर क्या लॉ बदलते, लॉ बदल दिया। अब क्या करें, तो जेल भी गई चली गई। तो उन्हें कहा जी अब क्या करो, अब आप एक ट्रस्ट बना लो, प्राइवेट ट्रस्ट बना लो, अपने नाम ले लो। अपने नाम लोगे तो पकड़े जाओगे, इंडिविजुअल एक्चुअल ट्रस्ट कवर ही नहीं है, तो ट्रस्ट में जो मर्जी ले लो और बेनिफिशियरी आप बन जाओ। बेनिफिशियरी कौन बनेगा, वही नेता, और जितनी मर्जी गिफ्ट ले लो। ये शुरू हुआ, अब लाकर 56 to 17 इसीलिए आया, वेदर रिसीव बाय ए पर्सन। अब पर्सन इंडिविजुअल नहीं है, एचयूएफ नहीं है, सब कवर है, फर्म, कंपनी, एओपी, पीओ। अब ट्रस्ट में नहीं ले सकता, सिर्फ एक ट्रस्ट गिफ्ट ले सकता है, या तो चैरिटेबल हो रजिस्टर्ड, या प्राइवेट ट्रस्ट में ले सकता है, प्रोवाइडेड ही हैज क्रिएटेड ए ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज रिलेटिव ओनली। और किसी के बारे में ट्रस्ट खत्म हो गया, प्राइवेट ट्रस्ट। किसी जमाने प्राइवेट ट्रस्ट को जो मर्जी गिफ्ट दो, माफ थी, अब नहीं है। 1/4/2017 में क्या ट्रस्ट बनाइए सिर्फ अपने रिलेटिव के बेनिफिट के, वो इंडिविजुअल उसको गिफ्ट दे तो टैक्स नहीं लगेगा, और कोई और बेनिफिशियरी होगा तो पूरा का पूरा पैसा जो ट्रस्ट को दिया गया टैक्स लगेगा। ये इस कारण अब नेता के पास अब क्या स्कोप है, एक है स्कोप, अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिजेस अभी भी माफ है। और शादी कराए तब ना सर, कभी आप ना छोड़कर एक और करा देना कि गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज। गिफ्ट ऑन ओकेजन ऑफ मैरिज अभी भी माफ है नहीं है। सो पॉइंट ये है, लॉ कैसे बनता है, कहाँ डिफिकल्टीज आती है, ये मैं आपको बता रहा था। तो पॉइंट अब कहाँ से कहाँ पहुंच गए कि ये अब 45(3) और 56(2) लगेगा। आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू पर, इन पार्टनर को देनी पड़ेगी, नहीं तो पार्टनर को तो 20% टैक्स लगना है इंडेक्स के बाद, लेकिन फर्म को तो अदर सोर्सेज में पूरा टैक्स लग जाएगा 30% प्लस। कभी भी आप फर्म से कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो स्टैम्प पार्टनर ला रहे हैं, शेयर ले रहे हैं तो 50 CA लग गया है, उसको भी फेयर मार्केट वैल्यू से। सो प्लीज बी केयरफुल। अब लॉ बदलता जा रहा है, वो लॉ नहीं रहा कि 45(3) में वैल्यू रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वो अभी भी है, लेकिन 50(2) का ध्यान रखकर आपको वो टैक्स देना पड़ेगा। क्लियर है सर, ये क्लियर हुआ। एक और बेड़ा गर्क किया है, और वो बेड़ा गर्क किया पार्टनरशिप का। अगर उसका डिसोल्यूशन होता है और रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो आपको सेक्शन 9B लगेगा और साथ में 45(4) लगेगा अगर वो रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है।
अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन में 2 सेक्शन लगेंगे 9B 45(4). अगर सिर्फ डिसोल्यूशन है तो 9B। 9B को टैक्स नहीं लगाना, 9B सिर्फ डीम्ड ट्रांसफर कहता है। टैक्स तो लगेगा रिस्पेक्टिव सेक्शन में। मैं 1-2 लाइनों में सिखाते बताता हूँ क्या कहता है 9B। जरा ध्यान से सुनिए। पहले क्या होता था, पार्टनर अपनी फर्म में लाया, मेंबर एओपी में लाया, दोनों बार हर बार रिपीट करना पड़ता था। अब उन्होंने उसका नाम रख दिया स्पेसिफाइड एंटिटी। स्पेसिफाइड एंटिटी मीन्स अ फर्म और एओपी एज अ केस। क्लियर हुआ कि भाई मैं आपकी मर्जी है, फर्म की बात कर रहे हो तो फर्म कर लो, एओपी कर रहे हो तो कर लो स्पेसिफाइड। एक नाम रख दिया स्पेसिफाइड पर्सन। स्पेसिफाइड पर्सन इज पार्टनर इन केस ऑफ फर्म, मेंबर इन केस ऑफ एओपी। ठीक हो सर? एक रिकॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर दिया। डिसोल्यूशन सबको पता क्या होता है, फर्म बंद होती है चलता। रिकॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन कर दिया क्या, जहां पर 1 या 1 से ज्यादा पार्टनर रिटायर हो रहे हैं लेकिन फर्म कंटिन्यू कर रही है। कैसे फर्म कंटिन्यू करेगी? 1 से 2 ज्यादा पार्टनर रिटायर, 1 या 2 या 3 हो रहे, फर्म कंटिन्यू करेगी, कम से कम 2 तो बचेगा, तभी तो कंटिन्यू करेगी। फर्म तो कंटिन्यू तभी कर सकती है जब चाहे 4 है, 2 रिटायर हो गए, 2 करेंगे, 5 है, 2 रिटायर हो गए, 3 रिटायर हो गए, 2 तो बचेंगे, 3 है, 1 रिटायर हो गया, 2 बचेंगे। ठीक है? मतलब फर्म कंटिन्यू करनी चाहिए रिटायरमेंट में। 1 चला गया, 2 चले गए, 3 चले गए, लेकिन कम से कम जो बचे हैं 2 तो होने चाहिए। उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कई कहते हैं हमने एडमिट भी किया है और रिटायर भी किया। करिए एडमिट और रिटायरमेंट, लेकिन फर्म शुड कंटिन्यू। तीसरा तक कुछ नहीं किया, हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, प्रॉपर शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं किया। आप एडवोकेट है, सीनियर है, आपने कहा मेरा पार्टनर भी है, पहले उसको 20% देता था, मैं 80 लेता हूँ, अच्छा काम करता है, अब इसको 50 कर देता हूँ, मैं भी 50 कर देता हूँ। इसे कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्या आपने उसके पैसे लिए? लिए टैक्स लगे, कुछ नहीं लिया तो टैक्स। इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर हुआ सर? अब जरा ध्यान से सर, सेक्शन 9B क्या कहता है? आराम आराम से जो भी समझा रोक लेना। Where a specified person, partner और member, मैं पार्टनर ले, where a specified person received during the year from a specified entity, from a specified entity, any stock in trade or capital asset और बोथ। क्या मिला पार्टनर को? क्या मिल रहा है? स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट। क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट नहीं, स्टॉक इन ट्रेड में बिजनेस इनकम होता है, कैपिटल एसेट में कैपिटल गेन होता है। ठीक है? ही रिसीव्स पार्टनर क्या स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट और बोथ इन कनेक्शन विद द डिसोल्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी। मैंने रिकॉन्स्टिट्यूशन भी रखा है और ये भी लिखा डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्पेसिफाइड एंटिटी। इट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ट्रांसफर। ये क्या माना जाएगा? डीम्ड ट्रांसफर माना जाएगा। फर्म ने एज ए ट्रांसफर किया। आप नहीं कह सकते फर्म ही मालिक है, पार्टनर मालिक है। नो, फर्म अलग होगी, पार्टनर को जो दिया था वो ट्रांसफर माना जाएगा। एंड प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम दिस ट्रांसफर, डीम्ड ट्रांसफर, शैल बी टैक्सेबल in case of stock in trade under the act business and profession। अगर आपने stock in trade उसको दिया तो business and profession मिलना चाहिए। कैसे निकालोगे? fair market value of stock in trade minus cost। इसमें टैक्स कौन देगा? फर्म देगी। फर्म देगी, लेकिन पार्टनर को आपने स्टॉक देगा। क्लियर? और कोई लैंड दे दी, कैपिटल एसेट दे दी, तो उसमें भी टैक्स किसने देना है? फर्म। लेकिन टैक्स कौन से सेक्शन में लगेगा? 45(1). भाई ट्रांसफर ही तो है। 45(1) क्या कहता है? वही स्टैंडर्ड ड्यूटी वैल्यू माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ कॉस्ट। और 28 कहता है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस वो, क्योंकि वो स्टॉक इन ट्रेड ऐसे बिजनेस। अब मैं एक बता रहा हूँ, एक फर्म है, एक डिसॉल्व कर दो तो आपस में एसेट बांटो, या तो बेचोगे। अगर एसेट बेचोगे डिसॉल्व करने के बाद तो वैसे टैक्स लग जाएगा, कैपिटल गेन होगा। आपने कहा नहीं बेच नहीं रहे,
इस पार्टनर को ये दे देते, इस पार्टनर को ये दे देते। इनको स्टॉक इन ट्रेड दे दिया, लैंड दे दी, इनको 2 लैंड दे दी, कहता ये ट्रांसफर है, टैक्स लगेगा। किसको? इनको नहीं, इनको नहीं। किस रेट से? इनको क्या दिया? लैंड दिया, स्टॉक इन ट्रेड दिया, ओके। कितनी कीमत का दिया? सर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख की है और 1 करोड़ की हमारी कॉस्ट है, तो 10 लाख रुपए पे टैक्स कौन देगा? फर्म देगी, ये नहीं देंगे, फर्म देगी। लेकिन इनको 1 करोड़ 10 लाख का माल मिल गया, ठीक है। इनको इन्होंने 2 लैंड दे दी, एक लैंड की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ है, दूसरे की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 1.5 करोड़ है। इनको क्या मिला? 3.5 करोड़। इनको कुछ नहीं टैक्स लगना, फर्म को दोनों के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स देना है। 2 करोड़ माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ दैट लैंड, अगर लॉन्ग है, नहीं तो कॉस्ट ऑफ दैट लैंड, लॉन्ग है तो 2 करोड़, 1.5 करोड़ माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ लैंड, वो टैक्स कौन देगी? आप। लेकिन टैक्स लग गया, इनको स्टॉक मिला, लैंड मिली, इनको स्टॉक लैंड मिली, और टैक्स फर्म को दे दिया, क्योंकि आप डिसॉल्व कर रहे हैं। या तो बेच देते तो भी यही टैक्स लगता। आप समझो पार्टनर को दे रहे जैसे पार्टनर को बेचा है, यही तो हुआ इसका मतलब। भाई पार्टनर को आपने बेच दिया, पार्टनर अलग है, आप अलग है। मार्केट वैल्यू से स्टॉक दे दिया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से वो दे दिया, टैक्स दे दिया। इनकी कॉस्ट क्या होगी? 1 करोड़ 10 लाख। इनकी कॉस्ट क्या होगी? 3 करोड़ वो जो भी वैल्यू, ठीक है, टैक्स। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी फर्म में आप प्रोफेशनल है, कम से कम 3 पार्टनर, 2 भगवान ना करे एक की डेथ हो गई, चाहे आप जितना मर्जी लिख दो, इसके बाद मेरा लीगल है, वहां पर पार्टनर बनेगा, वो रेजोल्यूशन मानी जाती है। वो पार्टनर तो तभी बनेगा ना जब वो मरेगा, तो एक बार तो एक ही रह गया, एक टाइम पे तो एक ही रह गया। तेरे बात को समझ रहे? 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो, ठीक है, अगले दिन उसके बेटे को ले लिया, वो भी एडवोकेट है से, लेकिन 2 घंटे बाद लिया, एक बार तो एक ही रह गया। इसे डिसोल्यूशन कहते हैं। टैक्स लग जाएगा किसको? फर्म का। पार्टनर को थोड़ी लगना है, एक ही आदमी रहेगा उसको नहीं लगना, किसको लगना है? फर्म। कितना? मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट और इंडेक्स। 3 होंगे तो कम से कम बच तो जाएगा, क्योंकि डिसोल्यूशन नहीं मानी जाएगी। एक चला गया, रिटायरमेंट है, डिसोल्यूशन नहीं है, रिटायरमेंट इंक्लूड, डेथ भी ऑल्सो रिटायरमेंट में है। लेकिन 3 हो तो बचेंगे ना, अगर 2 और 1 चला गया तो खत्म हो गई ना फर्म, और टैक्स देना। तो एक पार्टनर बना, चाहे उसको आधा % दे दो, 1% दे दो, लेकिन डर नहीं। तो कहता 3 चले गए, तो मैं क्या करूँ, सब चले गए, तो वो तो बात अलग है, वो चीज़ अलग है। लेकिन सेफ्टी के लिए एक मैं एडवाइस कर रहा हूँ ऑल प्रोफेशनल को और इवन योर क्लाइंट्स को जो फर्में चलाते हैं, कि कम से कम 3 रखें, क्योंकि डेथ अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है, और वो हो भी गया, डीड में जो मर्जी लिख दो, एक बार तो एक ही रह गया, और टैक्स लग गया। ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि ये टैक्स लगेगा, ये डिसोल्यूशन है, क्योंकि उस वक्त जब डेथ हुई तो पार्टनर एक ही रहेगा। क्लियर है सर? ये डिसोल्यूशन का केस था। अब आइए रिटायरमेंट। मैं अपनी फर्म से रिटायर, पार्टनरशिप है, मैं रिटायर। रिटायरमेंट में मुझे क्या मिला? सवाल पूछा जाए तो कह रहा है एक तो ये 45 वो लगेगा, क्या 9B that is 28(1) and 45 मैं रिटायर हो रहा हूँ, मुझे कुछ स्टॉक मिला, मुझे लैंड मिल गई, मुझे एक बिल्डिंग मिल गई, मैं रिटायर। पहले तो कहता भूल जाओ 45(4), वो बाद में बात करें। पहले आपको लैंड मिली है तो लॉन्ग टर्म टैक्स है, ऐसे बाहर को दिया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कॉस्ट और इंडेक्स कॉस्ट। स्टॉक मिला, लाइए बिजनेस इनकम दीजिए, कौन देगा? आपको बिल्डिंग मिली है, वही करो और टैक्स दे। ये कहाँ पे है? कैपिटल गेन आया 45(1) में और बिजनेस इनकम आई 28। ये खत्म हो गया सर, दे दिया आपने। अब रुको, उसकी कैपिटल आउटस्टैंडिंग 5 करोड़ की थी, आपने उसको 9 करोड़ का माल क्यों दिया? हम ये सवाल पूछ रहे हैं। एक फॉर्मूला है 45 करोड़ में, जब भी कोई रिटायर होगा उसमें लिखा है A = B + C - D।
A is equal to B plus C minus D. A means capital, वो तो निकालना है अभी हमने, वो शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। B सम ऑफ मनी, जो सम ऑफ मनी, C जो कैपिटल एसेट दिया फेयर बाकर गई, माइनस D हिज कैपिटल आउटस्टैंडिंग, उसकी कैपिटल आउटस्टैंडिंग कितनी थी वो बताकर उसको जो दिया, अगर वो ज्यादा दिया तो लॉ उस पर भी टैक्स देगा। कौन देगा? फर्म ही देगी। उसकी कैपिटल आउटस्टैंडिंग में अभी ले नहीं रहा, बताऊंगा कैसे निकालनी। सपोज उसकी कैपिटल आउटस्टैंडिंग 2 करोड़ है, आपने उसको 2.5 करोड़ की बिल्डिंग दे दी और 1 करोड़ रुपए कैश दे दी, कितना टोटल हुआ? 7.5। निकलता कितना था? 2.5। क्यों दिया? फालतू क्यों दिया? बताओ क्या कारण हो सकता है? वो क्यों लेट मांग रहा है ज्यादा? मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं, मेरा कैपिटल उसका जो लगा हुआ है फर्म में अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट, वो भी ले लिया मैंने प्रॉफिट, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट 2 करोड़ है, तो मैं उसको 3.5 करोड़ क्यों दे? किस चीज की एप्रिसिएशन? वो जरूरी नहीं है, गुडविल मांग रहा हूं, उसमें एसेट ही ना हो। अब हमारे में कौन सी एसेट होती है? 10 रुपए की, 20 रुपए की, 50,000 रुपए की, 2 लाख, कितनी एसेट होती है आपके पास? कैपिटल कंप्यूटर हो गया, ठीक है, हमारी बिल्डिंग है, किराए में रखी है, एसेट नहीं है। पहला पॉइंट है, उसको कहेगा इतने सालों की गुडविल है, मुझे उसका शेयर दो, मैं जा रहा हूं, मैं तो ज्यादा लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मांगेगा? मांग सकता है? नहीं मांग सकता, मांग सकता है। दूसरा कह रहा है तूने मुझे 1 लैंड दे दी, तुम्हारे पास 3 लैंड अभी भी पड़ी हैं फर्म में, वो भी तो अप्रिशिएट हुई है। आज तक जो अप्रिशिएट, उसका शेयर मेरा बनता है कि नहीं बनता? बताइए। मैं जब ज्वाइन किया उसकी कीमत 3 करोड़ थी उन लैंड्स की, आज उनकी कीमत 7 करोड़ है। जब बेचो के बाद की बात है, आज मैं रिटायर हो रहा हूँ तो 7 करोड़ बीच में 3 करोड़, 4 करोड़ के ऊपर मुझे भी तो शेयर दो, मैं जा रहा हूँ। मांगेगा नहीं मांगेगा? मांगेगा नहीं मांगेगा? बताइए। छोड़ेगा? इतना शरीफ है कि अपना माल छोड़ के चला जाएगा? वो ठीक है भाई, वो बात अलग है, वो भी मैं बताऊंगा तरीका, अदरवाइज तो शेयर मांगेगा। क्या भाई जितनी बाकी एसेट है उसकी मार्केट वैल्यू लेकर जो एप्रिसिएशन है उसका मुझे शेयर। तीसरा कहता रुको, आप बहुत बड़ी कंपनी है, आपका ब्रांड नेम है, आपका ट्रेड नेम है, आपके पास लाइसेंसेस हैं, आपके पास इंटेंजिबल एसेट है, हालांकि वो डेप्रिशिएट हो रही है, लेकिन मार्केट तो बढ़ रही है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? ब्रांड वैल्यू की वजह, लाइसेंस की वैल्यू बढ़ रही है, मुझे उसका भी तो शेयर दो। आज आपका नाम चला है तो उसके नाम का जो वैल्यू है उसका शेयर मेरा भी हक है। मांगेगा नहीं मांगे? आपकी फर्म है AK श्रीवास्तव, वो कहेगा AK श्रीवास्तव चल रहा है, AK श्रीवास्तव मैं जा रहा हूँ, नाम तो मेरा चल रहा है, लाओ ना मुझे कुछ दे दो। वो सिर्फ गुडविल नहीं है, कई बार इंटेंजिबल एसेट भी होती है, उसके बगैर तो ये मांग रहा है, आपने उसको दिया है तो लॉ टैक्स दो। सर उसे लिया है, आपने बेचा थोड़ी है, तो एप्रिशिएट दिए, कहता आपने ज्यादा दिया है इसलिए आज टैक्स दो, आज दे दो। जब भी आप उस एसेट को बेचोगे तो जितने पे टैक्स दे रखा है उतने में कॉस्ट से लेस कर दो, लेकिन आज टैक्स दे। आप बात समझ रहे हैं? जब भी कोई पार्टनर रिटायर होगा, कैपिटल आउटस्टैंडिंग से ज्यादा पैसे दोगे तो फर्म को टैक्स देना। अगर वो गुडविल की वजह से दिया तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, अगर इंटेंजिबल एसेट की वजह से दिया तो क्यों डेप्रिशिएबल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। अगर लैंड पड़ी है जो पुरानी है 2 साल से ज्यादा, लॉन्ग टर्म होगा। लैंड दी है तो 2 साल से कम है तो शॉर्ट टर्म, ये देना पड़ता है। तो बड़ा गलत काम होगा, तो जब भी वो लेके जाएगा टैक्स फर्म को देना पड़ेगा। सर अभी कुछ कमाया तो है नहीं, ना एप्रिशिएशन दे दो, वो ले गया हमें टैक्स दे। तुम अपने पास नोट कर लो, फॉर्म 4C भर दो। जब भी वो बेचोगे लैंड फ्यूचर में, उतनी जो कॉस्ट आपने जितने पे टैक्स दिया है वो हम लेस करेंगे, लेकिन उसमें डेप्रिशिएशन कुछ नहीं देंगे। लैंड पे तो होती ही नहीं, मतलब इंटेंजिबल एसेट हम नहीं देंगे, लेकिन सर ये रूल है लेना 45 को ज्यादा क्यों दे रहे हो जितना, और ज्यादा निकालने के लिए मुसीबत भी तो है। पहली अप्रैल की कैपिटल होगी, फिर वो रिटायर सपोज अक्टूबर में हो रहा है, तो अक्टूबर का आप प्रॉफिट निकालोगे, उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एवर राइट के नहीं। फिर वो कहेगा जो स्टॉक मेरे को दिया 1 करोड़ का 1 करोड़ 10 लाख में, वो 10 लाख के प्रॉफिट पे मुझे भी तो दो। तुम 10 लाख मेरे से ले रहे हो, लेकिन प्रॉफिट का शेयर मेरा भी तो है, लाओ मुझे तो। कहेगा नहीं कहेगा?
वो सब कैपिटल आउटस्टैंडिंग है, उससे ज्यादा अगर दोगे तो आपको टैक्स देंगे। अगर उतना ही लोगे जितना आपका कैपिटल आउटस्टैंडिंग है तो फिर कोई टैक्स नहीं। जितना कैपिटल आउटस्टैंडिंग वो तभी होगा जब घर का आदमी हो, आउटसाइडर मानेगा। मैं तो 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा, मुझे तो सारे पैसे चाहिए, और क्योंकि एप्रिसिएशन आपको मेरी वजह से हुआ है या एसेट में हुआ है या गुडविल से हुआ है, वो मुझे दो। टैक्स लगता है सर, रिटायरमेंट टैक्स लेके जाओ, फॉरम टैक्स देगी, पार्टनर नहीं देगा, फॉरम देगा। ये क्लियर हुआ सर? सारे ऐसे लग रहे हैं जैसे मैंने कोई फ्रेंच पढ़ा दी या डच पढ़ा दी। ये तो लॉ है, ये लॉ है। कोई कहता है सर हम तो इधर बढ़ जाएंगे, टैक्स देना पड़ेगा, क्लियर तो कहीं नहीं, सामान तो हमारे को पड़ा हुआ है। ये लॉ है, यहाँ तो उतना ही लेगा जितना बना करता है। ऐसे कैसे करूँगा? ये तो लॉ है। A इक्वल टू B प्लस सी, B प्लस सी माइनस D बराबर हो जाए, 0 हो जाए, तो मना थोड़ी करते। प्रॉफिट नहीं तो भाई भाई तो हो सकते हैं कि यार तू इतना दे दे, बाकी तेरे को गिफ्ट दे दूंगा बाद में। गिफ्ट तो वहां पे है भाई भाई में, लेकिन रिटायरमेंट पे अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिला, जितना आपकी कैपिटल आउटस्टैंडिंग है, तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। पार्टनर को नहीं, रिटायरिंग पार्टनर को नहीं। सो 45 कोड में दो रिटायरमेंट में 2 टैक्स है। एक तो जो एसेट मिली उसमें तो कैपिटल गेन हो गया, और दूसरा आपको ज्यादा क्यों मिला उससे। ये क्लियर हुआ सर? मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं देना चाहता, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने आपको आइडिया दिया। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये 2 पार्ट, 3 पार्ट। अगर देख कुछ आपस में लेते देते तो गए, नहीं लेते तो अब एक पार्टनर को एडमिट कर देते, 10,000 रुपये जा रहा है, 90% दे दो, लेकिन उससे कुछ लिया नहीं तो कुछ नहीं होगा। उससे अगर कुछ लिया नहीं तो कुछ नहीं होगा। चाहे 90% दे दो, तो हम वो कर रहे हैं, मैं नहीं कर। लेकिन अगर उससे कुछ लिया, चाहे गुडविल के फॉर्म में या किसी और तरीके के फॉर्म में, तो आपको टैक्स देना। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन है? इधर मुश्किल वाला था, मैंने अपनी तरफ से जो आसान करना था कर दिया। एग्जाम्पल दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर एक एक चीज लिखनी पड़ेगी। क्लियर है? 45 ये है 44 9B रेड विद 41 51 28 एंड 45 4 ये हाँ क्या हाँ आराम से बैठ के सर, आराम से हाँ 55 सेक्शन क्या कहता है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, वो 55 कहता है। और क्या कहता है? हाँ वो यही कहता है ना, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है, इंडेक्स कॉस्ट क्या होती है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यही तो 55 है। हाँ ये भी कहता है गुडविल, टेंजिबल एसेट है, सुन तो लो, टेनेंसी राइट, लूम आवर्स, ये सब उसकी कॉस्ट नहीं लोगी अगर आपने सेल्फ जनरेट किया। ये 55 है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ए गुडविल ऑफ ए बिजनेस और इनोवेशन, cost of issuing a right to manufacture or produce an article, cost of acquisition of a trade name or a brand name, cost of acquisition of a tenancy right, सबकी कॉस्ट नील होती है अगर आपने सेल्फ जनरेट की। अगर आपने खरीदी है तो उसका आपको मालूम, और इसमें इंडेक्सेशन अलाउड। तो ये टेनेंसी है, आप टेनेंट खाली कर दूंगा 5 लाख या 50 लाख, भाई नंबर 2 किताब देते हैं, वो मैं नहीं कुछ कह रहा, वो मैं नहीं कह रहा, वो वाइट के मुझे 10 लाख चाहिए, ठीक है, वो 10 लाख लोगे आपको तो टैक्स लगेगा। आपकी कॉस्ट क्या है? 0। टेनेंसी राइट की कॉस्ट क्या हो? कोई 0 ही तो है, टेनेंट ही तो हो, 10 लाख का टैक्स देना, 10 लाख का टैक्स देना। ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन की गुडविल है ना, आप किसी को प्रोफेशन नंबर दे देते हो। Sir, my question is, somebody has inherited certain property. That property, when he will make 49(1) है सर, 55 नहीं। तो किसे सब बता कॉस्ट टू द प्रीवियस, मैं आपको बता रहा हूँ। इफ आई हैव गिवन ए प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ ए गिफ्ट, बाय वे ऑफ ए बिल, डेवल्यूशन और एनी अदर मेथड, व्हाट विल बी कॉस्ट टू मी? मैंने क्या पैसे दिए जब गिफ्ट आया? जो माफ है गिफ्ट उसको छोड़ दो, जिस पे टैक्स लग गया, मैंने को पैसे दिए, मुझे फादर ने विल कर दी प्रॉपर्टी, मुझे फादर ने विल कर दी, तो मेरे की कॉस्ट क्या है? 49(1) कहता है कॉस्ट टू दी प्रीवियस। Sir, if that other person also gets that gift, will it be 0 or something else? Just क्या बोलो?
I got a gift from my relative. Have you paid tax on that? A gift If you have paid tax, the cost is known to you. आपने जो उसकी वैल्यू ली, मैंने अपने भाई को गिफ्ट दी, उसने टैक्स दिया। नहीं, मैंने अपनी बहन को गिफ्ट दी, टैक्स दिया। फादर ने मुझे दी, टैक्स दिया। उस साइज जो मुझे प्रॉपर्टी मिली, उसकी क्या कॉस्ट है? कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर। previous owner also gets a gift. सर मेरी बात तो सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, ये कोई प्रीवियस टू प्रीवियस नहीं होता, छोड़ो, मेरे कार की बात है। मुझे प्रॉपर्टी फादर के मरने के बाद मिली, मेरे फादर को प्रॉपर्टी अपने को अपने दादा के मेरे दादा के मरने के बाद मिली, वो भी प्रॉपर्टी परदादा की थी, परदादा बना, दादा के पास आ गई, दादा को बना, पापा के पास आ गई, फिर मुझे मिल गई। मेरी कॉस्ट क्या है? लॉ कहता है कॉस्ट लो, कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, जीरो नहीं है। The cost of the previous owner. The previous to previous owner नहीं होता. Cost to the previous owner who paid for it. Somebody must have paid it. But we are allowed to assume the market value as on 1st April 2001. क्या बातें कर रहे हैं सर? ऐसे नहीं कहते cost to the previous owner. ऐसा कोई owner नहीं है. Cost to the previous owner who paid for it. Somebody must have paid it. That is cost. But what will be the my cost? अरे वो तो 1936 में खरीदी थी, गोल्ड उसमें 20 रुपए तोला था। कहता है मार्केट वैल्यू एज ऑन 1st अप्रैल 2001, पहले 81 होता था, अब 2001 होता था। क्लियर है? उसने कहा पीरियड होल्डिंग क्या माना जाएगा? शॉर्ट है कि लॉन्ग है? मुझे कल ही फादर की डेथ हुई है, आज मुझे प्रॉपर्टी मिल गई। तो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस क्या है? कहता है कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, द पीरियड ऑफ द प्रीवियस ओनर शुड आल्सो बी कम। ये नहीं है कि मुझे कल मिली फादर से मरने के बाद तो मैंने आज बेच दी या उसे गिफ्ट दी। जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ली हमने, फिर मार्केट वैल्यू ली उसकी, फिर सोचा कि इंडेक्सेशन कैसे करें? अरे सर आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। लॉ ने लिख दिया कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर इनटू इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एसेट इज ट्रांसफर्ड डिवाइडेड बाय the market value as on 1st April 2001 of the assessee. उसने कहते नहीं जो प्रीवियस ओनर जो है वो नहीं, आपकी कब एक्वायर करी तब की मार्केट वैल्यू चीन पीरियड प्रीवियस ओनर का लिया। Am I right? कॉस्ट प्रीवियस ओनर की ली, तो आप वो क्यों लेंगे? इंडेक्सेशन प्रीवियस ओनर का नहीं लेंगे? नहीं, कहता वो हेल्ड बाय द एसेसी लिखा, इट विल बी हेल्ड बाय द एसेसी। Market value was on 1st April 21 or the date it was held by the assessee. मैंने उसको कहा सर सोचिए, जब उतर रहा था मैंने कहा टीचर पढ़ा रहा था फिजिक्स, कंडक्टिविटी थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स में सुनते हैं कि अगर कोई लोहे की टेबल है, लकड़ी की नहीं है, उसके ऊपर कोई चीज रख दो, इलेक्ट्रिसिटी नीचे पास हो जाती होती है ना। दूसरा टीचर पढ़ा रहा था A is equal to B, मैथमेटिक्स, B is equal to C, therefore A is equal to C. A is equal to C. तो लड़का खड़ा हो गया, सर I love you, you love your daughter. तो क्या लॉजिक हुआ? Sir I love you, हाँ, and you love your daughter, therefore I love your daughter. यही हुआ ना A to B, B to C. सर लॉ डिसाइडेड हो चुका है, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट लेंगे, प्रीवियस ओनर का पीरियड लेंगे और प्रीवियस ओनर का ही इंडेक्सेशन। ये नहीं लेंगे जब आपको मिला तीनों चीजें इकट्ठी, मंजुला का जजमेंट है, उसके बाद तो कई जजमेंट आ गई, तीनों चीजें प्रीवियस पीरियड, कॉस्ट एंड इंडेक्स। क्लियर सर? अब तो जो याद रहेगा। चलिए सर आगे चले, ये क्वेश्चन और कोई कुछ पूछ रहे थे? ये तो बीच में आ गया तो मैंने बात दे दिया। और बोलिए, कोई पूछना, कोई सवाल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ नहीं। 56 केवल कैपिटल एसेट्स भी है। 56 कैपिटल एसेट है, हाँ। मैं कह रहा हूँ कैपिटल एसेट क्यों, क्या चीज बोल रहे थे? रूरल एग्रीकल्चर लैंड पे पहले मुझे ये बताइए रूरल एग्रीकल्चर लैंड होती क्या? मैंने एक सवाल पूछा सर, आप बता दो क्या, व्हाट डू यू मीन बाय ये रूरल एग्रीकल्चर है? It is not a capital asset. क्या बात? रामलाल, श्यामलाल इज नॉट ए रामलाल, ये नहीं कह रहा। व्हाट इज द रूरल एग्रीकल्चर लैंड?
6 kilometers, 2 kilometers, 8 kilometers from the area distance. But what does it mean? कौन से किलोमीटर कहाँ से? And the municipal limits. हाँ? किसकी लिमिट? All municipality around it. Simple one municipality नहीं है. यही तो गलती करते हैं. Rural agriculture land है. अरे अगर ये भुवनेश्वर है, इसके अगर 8 किलोमीटर है, कोई और भी तो म्युनिसिपैलिटी हो सकती है, कटक आ जाए, कटक से भी तो 8 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, कोई और वहां से 2 हो, कोई 6 हो, पहले वो प्रूव कर लो। आप सर्टिफिकेट ले लेते हो भुवनेश्वर के पटवारी से, उसको क्या पता बाकी कितनी दूर है? ये गलत है। रूरल तब होती है जब 2 कंडीशन हो, सर्टेन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम ऑल द म्युनिसिपैलिटी अराउंड दैट, एंड सेकंड इज यू मस्ट हैव कैरिड ऑन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ये 2 काम तो रूरल तभी मानी जाएगी। पहले वो रूरल है, सिर्फ एक सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा। आप तो कहेंगे देखो पटवारी ने लिख के दे दिया, वो तो आपने पैसे दे के ले लिया। यही तो करते हैं, वो बगैर पैसे तो देते ही नहीं सर्टिफिकेट, लेकिन वो करेक्ट नहीं है। उसको अपनी एरिया से पता कि नहीं दो। हाँ अपनी मिले घबरा कर खड़े नहीं होना क्या, पहले वो रूरल होनी। अगर रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, फिर आप किसी को भी गिफ्ट लो, कैपिटल एसेट नहीं है, उसमें कैपिटल गेन नहीं। आप 50C की बात कर रहे हैं, 50C किस सर 50C किसके? 56 पहले 50C समझिए, 56 आएगा। 56C भी कैपिटल एसेट क्या है? 56 में कहता है एनी कैपिटल एसेट बी, पहले लिखता है इमूवेबल प्रॉपर्टी बी लैंड और बिल्डिंग, ठीक है ना? लेकिन जब डेफिनेशन देता है कैपिटल एसेट मींस, नहीं सॉरी, प्रॉपर्टी मींस एनी कैपिटल एसेट नंबर 1 बीइंग लैंड और बिल्डिंग और पोर्ट, एनी कैपिटल। तो उसने कैपिटल बोला तो रूरल अपने आप अलग हो गया। एनी कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और पोर्ट, बाकी मूल। इसलिए अगर रूरल है और आपको गिफ्ट में मिली है, तभी तो 56 to 10 आएगा, वो टैक्सेबल नहीं होगी, प्रोवाइडेड इट इज रूरल। तो आज तो रूरल ना निकली तो टैक्स रूरल और प्रोपोज्ड यूज भी आता है। प्रोपोज्ड यूज जब ट्रांसफर होती है तो प्रोपोज्ड यूज कैसे भी लिखते हैं। क्या प्रपोज? प्रोपोज्ड यूज ऑफ लैंड, proposed use of land, proposed use of land transfer। जब रजिस्ट्रेशन होता है टाइटल डीड का, उसमें proposed use of land भी लिखा जाता है। पर्पस ऑफ यूज, मतलब जो खरीद रहा है वो कैसे क्यों खरीदने वाले को क्या मतलब, बेचने वाले का मतलब एग्रीकल्चर है, खरीदने वाले के लिए चाहे उसको बिल्डिंग बनाए, चाहे वो अर्बन काम करे। सेलर के लिए रूरल होनी चाहिए, बाहर के लिए कल वो कॉलोनी बना ले, उसमें हमें क्या लेना देना। I have sold him as a rural. I have not said that he will continue rural activity on that. अगर वो कंटिन्यू करेगा तो उसके लिए भी रूरल है, नहीं कंटिन्यू करेगा तो सेल जो देने वाला है उसकी रूरल है, लेने वाले की। अरे सर रूरल एग्रीकल्चर कैपिटल एसेट ली कहाँ, उसने तो रूरल ही ली है, उसने रूरल ली है। उसने अगर उसको रूरल रखा है तभी तो बचेगा, अगर उसने बाद में चेंज करी है, उस वक्त तो रूरल थी जब ली, बाद में ट्रांसफर करेगा तब की बात आएगी, तब जब बेचेगा तब टैक्स लगेगा उसके ऊपर। कन्वर्जन आप पहले आपने ली क्या 56 आपका एज ए रूरल एग्रीकल्चर ली और आपने रूरल ही रखी, ठीक है, तो फिर तो कोई टैक्स नहीं, रिसीट के हाथ में टैक्स है ना। उसके बाद आप चेंज कर दे तो मना है, कर दो आदमी, आप कन्वर्ट करा लो, लैंड यूज चेंज करा लो, लैंड यूज चेंज करा लो, फिर उसके बाद बिजनेस इनकम हो जाएगी। आप कराएंगे तो बिजनेस इनकम होगी या कैपिटल गेन होगा, दैट डिपेंड्स। तो कॉस्ट तो रहेंगे प्रीमियम वो वाली चिंता नहीं। और बोलिए सर, in case of purchase of agricultural land, the difference between the fair 50C that will be 50C may not apply, but for the purchases it may be applicable because they did not define an agricultural land any immobile property. So 56 110 110 या 210 210 यही तो प्रॉब्लम है। वहाँ लिखा है इमूवेबल प्रॉपर्टी बीइंग लैंड और बिल्डिंग, लेकिन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दे दी उसने एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मींस प्रॉपर्टी मींस एनी कैपिटल एसेट बी नंबर 1 लैंड और बिल्डिंग और बोथ। तो फिर कहाँ कैपिटल एसेट कहाँ है? ये डिफ्यूज है, ये डिफरेंस चल रहा है। ही इज राइट,
but he has read 56 subsection 2 clause 10 clause B. Yes. उसमें ये लिखा है immovable property being land or building, लेकिन आपने जब प्रॉपर्टी की डेफिनेशन देखी तो वहाँ immovable प्रॉपर्टी को कह दिया कैपिटल एसेट होनी चाहिए। अब देखो ना कुछ तो है नहीं है, आज तो मिलता चल मुझे तो हमेशा ही होता है। एक दिन मैं चेयरमैन के पास बैठा था, सिर्फ आ गई, उस पर मेरी बीवी पीछे बैठी थी, उसको लिख दिया KISS किस। आपकी बीवी इस वक्त भी ये बातें करती है, या क्या हुआ? तो क्या है ये? मैंने लिखा कीप इट शॉर्ट स्टूपिड। तो वो भी ये बात कर रहे 5 मिनट है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो जो कहोगे वो करूंगा। और कोई चीज पूछने पूछ लो, चलिए। नथिंग एनीथिंग ऑन इनकम टैक्स, नॉन नेसेसरी कैपिटल गेन। लैंड ट्रांसपोर्ट मैं बोल दूंगा लैंड ट्रांसपोर्ट टू सपोज माय लैंड ट्रांसपोर्ट टू माय डॉटर। हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गिफ्ट टू द रिलेटिव इज फ्री, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। आई डोंट नो व्हाट इज द स्टैम्प ड्यूटी हियर। In Delhi there is a 6% stamp duty. In Haryana there is only 2,000 stamp duty. In Punjab there is only 2,000 stamp duty. In UP it is 5,000. The stamp duty at the time of registration. Yeah. Now I can't say it is a state law. हर state का अलग-अलग law. So I can't say if you give a immovable property stamp duty is payable. If you give a movable property nothing is payable. So my हमारे हरियाणा में 2,000, पंजाब में 2,000, यूपी में 5,000, दिल्ली में 6%। अपने बच्चों को गिफ्ट देंगे तो विल करा दो। एक चीज और बता दो, विल में सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ता, प्रोबेट सर, एक्सेप्ट इन महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड तमिल, वहाँ कंपल्सरी प्रोबेट लेना पड़ता है, लेकिन वहाँ फीस ही बहुत कम है, मैक्सिमम 75,000, वहाँ 50,000, वहाँ 25,000, बाकी सब जगह प्रोबेट लेना नहीं पड़ता अगर डिस्प्यूट नहीं नो। इतना तो मैं उड़ीसा में रहूंगा थोड़े दिन तो देखूंगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हमारे यहाँ हम लोग प्रोबेट नहीं लेते, सक्सेशन जो ले लेते हैं और उसको म्यूटेशन करा देते हैं, और प्रोबेट तभी ली जाती है जब देयर इज अ डिस्प्यूट, और जब बिल होती है अगर कुछ जरूरत नहीं है गिफ्ट अगर कर दिया गिफ्ट रिवर्स कर दिया, रजिस्टर करो या अनरजिस्टर्ड करो। गिफ्ट टैक्स रिमूवल प्रॉपर्टी में आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी है, वो रजिस्ट्रेशन की। हाँ सर, वो अदरवाइज इट इज नॉट वैलिड। एक सेकंड क्वेश्चन, माय वाइफ गिफ्टेड द लैंड टू हर सिस्टर्स चिल्ड्रन, अलाउड है? आपको देखो ना, चाहे इंडिविजुअल relative की definition पता क्या दी हुई है? Spouse of the individual, brother and sister of the individual, brother and sister the spouse of the individual, brother linear descendant of the individual, linear descendant of the spouse of the individual. तेरे बच्चे, मेरे बच्चे, हमारे बच्चे, ये अलग अलग कैसे हो सकते हैं? लिखा है ना, linear descendant of the individual, और लिखा linear descendant of the spouse of the individual. बीवी के बच्चे अलग हो सकते हैं, लॉ है। जिस दहेज में लाएगी तो क्या करें? वही हो गया, ठीक है सर, बेटा करे, बिल करे, क्या बिल क्या करे? गिफ्ट भी कर सकती है, करो। आफ्टर डेथ बिल होती है, गिफ्ट नहीं होती है। आफ्टर डेथ बिल या फिर इनहेरिटेंस है, कुछ नहीं, नथिंग, नो टैक्स, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। भाई टाइम नहीं है, नहीं तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ सर, एक क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा ट्रिकी है समझाना। हाँ बोलिए। असेसमेंट ईयर 22-23, I filed my return within last date, मैंने after due date, it was the within last date after due date, ये क्या हुआ सर? एक चीज बोलिए ना, within last date after due date, belated return. You filed a belated return, yes. And उसका 143(1) आया दिसंबर के बाद, एक साल के बाद। हाँ, इससे क्या हुआ?
फिर उसमें बाद में पता आपका तो चला 143 इमीडिएटली आ जाता है, शाम के दिन भी आ जाता है, अगले दिन भी आ जाता है, आपका लेट आया चलिए। मेरा लेट आया, 1 साल बाद आया। हाँ। तो तब तक मुझे पता चला कि कुछ इनकम स्किप हो गई है मतलब। तो बड़ी यू आप अपडेटेड रिटर्न भर दो ना 139A Is there इसलिए तो लाए। is there any way I can save additional tax? हम नहीं सुधरेंगे। No way. I am ready to pay the interest. You are ready to pay the interest, but you are not allowed to file any return after the date. What is 31st December? कैसे करोगे? और रिटर्न फाइल कर चुके हो तो फिर तो आपको कंडोनेशन भी नहीं मिलती। अगर रिटर्न ना फाइल करो तो कंडोनेशन ले लो, तो आपको तो कुछ नहीं मिलेगा। You pay tax first. Updated return. सर उसमें नहीं आप पकड़े गए ना, इसलिए आप कह रहे क्या? नहीं पकड़ा नहीं गया, रिटर्न स्लो मोटो पकड़े जाए तो देख लेना। तो उसमें फिर पेनल्टी का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा। सर देखिए अपडेटेड के सिवाय कोई करेगा और अपडेटेड 25% या 50% इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, 25-50 एक्स्ट्रा देना। अरे बच गए, फिर तो बहुत कुछ है। कोई 31 दिसंबर को रिवाइज हो ही नहीं सकती, क्या बात कर रहे हैं? 31 दिसंबर को अब आपके पास रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, चाहे वो डिलेटेड हो चाहे ऑन टाइम हो, but not after 31st December. सर वो पर्ची में दूसरा आ जाएगी। हाँ बोलिए। Suppose a person convert is landed property into stock in trade. Landed property into stock in trade. Can he offer tax under section 4480? 4480। आपको एक चीज बताऊं, 4480 में लिखा है notwithstanding anything contained under section 28 to 43C. Notwithstanding anything contained under 28 to 43C. आपने 4480 में लैंड बेची है, यही कहना चाहते हैं? लैंड बेचना चाहती है, 43A तो लगेगा, 43C लगेगा, स्टैंप ड्यूटी पे बेचनी पड़ेगी। 4480 में लिखा है notwithstanding anything contained under 28 to 43C, लेकिन जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का वर्ड है इन्वेंट्री का वो 43CA है। तो आप तो स्टैंप ड्यूटी पे बेचें, हमें कोई मना नहीं है 4480 ले लें, लेकिन रुकना 4480 आपके फायदे के लिए नहीं है, सरकार के फायदे के लिए। अगर 8 या 6 से कम है तो 6 और 8 जो भी दिखाइए, और उससे ज़्यादा है तो ज़्यादा दिखाना पड़ता है। उतने 8 से नहीं काम चलेगा। अभी सोचो ये कितना गलत सोचते हैं। 50% दिखा दो प्रोफेशनल और वो हो गया। अगर 80 कमाते हो तो 80 दिखाना पड़ेगा, 70 है तो 70, 40 है तो 50 दिखाना पड़ेगा। तो कहेंगे किताब तो बनाते नहीं, फिर कहाँ से पता लगेगा? बैंक अकाउंट तो है ना आपका, इन्वेस्टमेंट तो करते हो, वहाँ पकड़ लेंगे आप। प्लीज इट इज नॉट मिनिमम, इट इज जो आपको मिनिमम दिखाना ही दिखाना है, ज्यादा है तो ज्यादा दिखाना। तो आप कर लो 40 लैंड, लेकिन 50C भी लगेगा। यहाँ आपको इन्वेंट्री है 43C लग जाएगा, कर लो, मना नहीं है। लेकिन 8 मिनिमम है या 6 मिनिमम है। अगर ज्यादा प्रॉफिट है तो सर ज्यादा सरकार पागल नहीं है कि आपको कह रहा जो मर्जी कमाओ और 6% दे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ? कैसे आएगा? बोले ना ये कैपिटल गेन करवाया 15%, 4480 में 8 दिखा दे, दिखा ही नहीं सकते, 15 ही दिखाना पड़ेगा सर, 15 ही दिखाना। वहाँ लिखा है मिनिमम 8 और 6 और एनी हायर इनकम क्लेम बाय मी एज द केस मे बी। आपको हायर दिखानी है, मत करना। अब मोदी जी का जमाना है, मत करना। तो वहाँ पे तो हेड ऑफ इनकम भी चेंज हो जाता है ना? वहाँ पे हेड ऑफ इनकम भी चेंज हो जाता है ना सर? वो तो नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? हेड ऑफ इनकम तो चेंज हो जाता है कैपिटल गेन तो 44 नहीं वो कैपिटल गेन नहीं है, इन्वेंट्री है। इन्वेंट्री है 4480 में जा रहा है, जाए, मना नहीं करता, लेकिन 8 से कम नहीं है, 6 से कम नहीं है, और ज्यादा है तो ज्यादा दिखाना। और 2 करोड़ से ऊपर जा नहीं सकते। दिल नहीं मान रहा, मना लो, दिल करना तो पड़ेगा सर। अब वो जमाने चले गए, अब नहीं होगा, अब सब फेसलेस होने जा रहा है। हो गया और भी
So please, thank you very much for the patient hearing for speaker. Thank you. We should give a standing ovation. Thank you so much, sir. It was really an enduring experience. I would request our National President, Shri Narayan Prasad Ji, to kindly come up on the dais. I would request the organizers to get the felicitation of our two members of the Bhubaneswar Tax Bar Association, Shri Diptiman Mahanti and Shri Lakshmidhar Tripathi. जो जरूरी है वो है कि मेरे को ऑब्जेक्शंस कैसे रेज करने हैं। एक परफॉर्मा है 147 के लिए, 147 जब आता है तो उससे पहले मुझे 148 AB का नोटिस आता है। तो मैं नोटिस से शुरू करूंगा दोस्तों। 148 AB का जो नोटिस है, पहली बात है, मस्ट बी डिजिटली साइन। वी ऑल आर अवेयर रिगार्डिंग दिस दैट नोटिस डिजिटली साइन होना चाहिए। ठीक है? The notice must be digitally signed. बात कर रहे थे डिजिटली साइन नोटिस है, तो क्या वो नोटिस, अगर एक नोटिस डिजिटली साइन नहीं है तो क्या उसकी वैल्यू है? This was the topic today. Friends, we all are aware that there are numerous of judgments. Bombay High Court has given the judgment which has stated that, और किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि नोटिस का साइन होना जरूरी है। मैं आप लोगों से पूछता हूं, हम कभी इनकम टैक्स में जब शुरू करते हैं, कभी चेक किया है किस सेक्शन में दिया है? बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन सेक्शन एंड वी टेक पावर फ्रॉम द सेक्शन रूल। किस सेक्शन में लिखा है कि नोटिस का साइन होना मैंडेटरी है? सेक्शन 282 कैपिटल, वो कहता है सेक्शन 282 कैपिटल ए, इट स्टार्ट्स विद दैट ईच एंड एवरी नोटिस डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी साइंड मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल। तो बात ये हुई, ये तो बात पता लग गया डिजिटली साइन होना जरूरी है। बट इशू ये अराइज हुआ, अगर मेरे पास 148 AB का नोटिस जो साइंड नहीं है, क्या उसके लिए क्या वो वैलिड नोटिस है कि नहीं? इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट ने जजमेंट दी और उन्होंने बताया कि ये नोटिस इनवैलिड है कंसीडरिंग सेक्शन 282A। आगे चले, इसका मतलब जब मेरे को पहले नोटिस आएगा तो मैं सबसे पहला काम क्या करूंगा? आई विल चेक वेदर द नोटिस इज साइंड और नॉट, बिकॉज दिस इज वेरी मच कंपल्सरी फॉर अस। दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूं, नोटिस डिजिटली साइन नहीं है और उस पे नेम लिखा है और डेजिग्नेशन लिखा है एओ का, क्या वो नोटिस वैलिड है? फ्रेंड्स, आप गलत बोल रहे हैं। अगर एक नोटिस खाली डिजिटली साइन नहीं है बट उसका नेम है एओ का, एड्रेस है, दिन नंबर लगा है और वैलिड ईमेल से आया है, तो वो नोटिस भी वैलिड है। ये किस सेक्शन में दिया हुआ है? 282A सबसेक्शन 2 which says that every notice which was not digitally signed but mentioning the name of the AO and designation of the AO is a valid notice. So मैं आपको ये बातें क्यों बता रहा हूं, ये मेरे को ऑब्जेक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। तो ये किस केस में हुआ? अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, सुमनजीत अग्रवाल। उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, असेसी ने रिट ये लगाई थी कि द नोटिस इज नॉट डिजिटली साइंड, बट द इशू इज दिस, if the notice is not digitally signed but it mentions the name and the designation of the AO, then it is a valid notice. दूसरी बात मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं, ये मैंने पहला ऑब्जेक्शन आपको बताया कि अगर एक नोटिस में एओ का नाम वगैरह कुछ नहीं लिखा हुआ तो वो नोटिस क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। आई एम नॉट कमिंग टू सेकंड पॉइंट, प्लीज लिसन टू केयरफुली। मेरे को जितने भी नोटिस आ रहे हैं आजकल की 148 में, वो कैसे आ रहे हैं? दे आर कमिंग बाय मेल, दे आर कमिंग बाय मेल और they are reflecting on the online portal.
अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कौन सी मेल। एक एग्जांपल लेता हूं आपसे, मेरे पास मेरा 16-17 असेसमेंट ईयर का केस फिक्स हो गया। नोटिस जो आया मुझे वो कौन सी मेल पे आना चाहिए? जो 16-17 पे आईडी पे रिटर्न पे मेल गई है उसी पे आना चाहिए। पहला क्वेश्चन ये आया। सेकंड, नहीं, जो 16-17 से पहले रिटर्न गई थी उस पे आना चाहिए। And these are the prepositions I am just trying to figure out which is the correct mail. Because बहुत सारे चांसेस में क्या होता है कि पहले कोई और सीए भरता था, बाद में कोई और भर रहा है रिटर्न। इन केसेस में हमारे पास नोटिस की वैलिडिटी क्या है? This is the core question which I am going to raise. Which mail is valid, which mail is not valid? This is the question. और ये कौन से सेक्शन में लिखा है और कौन से रूल में लिखा है कि कौन सी मेल वैलिड है, कौन सी मेल नहीं वैलिड है? तो रूल 127 डील्स विद द मेल। रूल 127 क्या बताता है? मेल को बताता है। उसने 4 जगह में बताया है क्या? पहली बात, जिस साल की सिलेक्शन हुई है, जिस साल की सिलेक्शन हुई है उसमें जो ईमेल मेंशन है that says it should be for that assessment. Second is or, इसका मतलब पहली मेल कौन सी थी मेरे क्वेश्चन में? असेसमेंट ईयर 16-17, तो 16-17 की मेल डिपार्टमेंट को यूज करनी चाहिए थी। सेकंड, जिस साल में आपको नोटिस आया है, जिस साल का नोटिस नहीं, जिस साल में नोटिस आया है। अगर मुझे नोटिस 22 मार्च 2022 को आया है, उससे बिल्कुल इमीडिएट पिछला साल, वो कौन सा हो गया? 31 मार्च 21। जो 31 मार्च 21 में आपने लास्ट रिटर्न फाइल की है उसमें कौन सी मेल डली हुई थी? So, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं? Because many of the notices, if you are going through the rates, many of the notices are only being quashed because they are not properly served. So this is very vital issue. हमें क्या देखना है? पहली बात मैंने आपसे बता दी कि जी डिजिटल सिग्नेचर जो नहीं लगे होंगे, पर अगर नाम और डेजिग्नेशन नहीं है तो वो क्या रहेगा? इनवैलिड रहेगा। अगर नाम और डेजिग्नेशन है वो क्या रहेगा? वैलिड रहेगा। दूसरा ऑब्जेक्शन मैंने आपको बताया वैलिड ईमेल का। तो वैलिड ईमेल में मैंने ये डिस्कस किया कि जी नोटिस किस पे आना चाहिए, या तो उस मेल पे जिस साल में असेसमेंट ईयर का केस सिलेक्ट हुआ है, या फिर जिस साल में नोटिस आया है उससे बिल्कुल लास्ट रिटर्न में जो फाइल की है उसमें जो मेल आईडी डली। एंड आई एम सपोर्टिंग माय ऑल फैक्ट्स विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स। मैं पहली बात आपसे डिस्कस कर रहा था, यहां से शुरू हुए थे हम, नोटिस व्हिच इज नॉट साइंड। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन में दिया है कि नोटिस आया है, दिस इज नॉट साइन नोटिस, और नीचे लिखा है नो नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर इज मेंशन। ये बात डिस्कस की। इसके लिए मैंने बताया था डिपार्टमेंट ने क्या कहा। डिपार्टमेंट ने कहा सेक्शन 292B, जब मैटर कोर्ट में ट्रेवल हुआ तो डिपार्टमेंट ने कहा इट वाज ए मिस्टेक, और इस मिस्टेक के लिए मेरे को सेक्शन 292B का बेनिफिट दे दिया जाए। सेक्शन 292B में क्या लिखा है? अगर आपके रिटर्न में, असेसमेंट में, सम्मन में, नोटिस में कोई भी मिस्टेक रह जाती है तो उसको हम इग्नोर करते हैं। पर इसके बाद हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी मिस्टेक्स जो हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा ऐसी मिस्टेक्स जो हैं हम उसको कहेंगे दीज आर नॉट मिस्टेक्स, 292B बेनिफिट विल नॉट बी गिवन। मीनिंग देयर बाय, अगर मैं प्रकाश कृष्णावतार का केस याद करूं, बॉम्बे हाई कोर्ट की जो रिपोर्टेड है जजमेंट 150taxman.com 60 पे, उन्होंने क्लियर कर दिया दिस इज नॉट ए मिस्टेक, बट इट शुड नॉट मेंशन नेम ऑफ द AO एंड डेजिग्नेशन ऑफ द AO आल्सो। दिस वाज द केस। नाउ आई एम जस्ट रेफरिंग टू अनदर नोटिस। दिस इज द अनदर नोटिस। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज कंपेयर बोथ द नोटिसेस। इस नोटिस में नाम लिखा हुआ है और डेजिग्नेशन भी लिखा हुआ है। तो इसको किसने अप्रूव कर दिया? सुमनजीत अग्रवाल ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कह दिया ये नोटिस क्या रहेंगे? वैलिड रहेंगे। अब आगे चलते हैं कि जी अनसाइंड नोटिस की कहानी हमने पढ़ ली। अनसाइंड नोटिस का क्या हो? No, what about the jurisdictional item has to give the notice or not? This is the issue. 148AB notice or 148 notice is required to given by the jurisdictional officer or by in the faceless manner. There are two judgments. One is from the Calcutta High Court and another is from Telangana High Court. Telangana High Court says because there is a notification in the March 2022 which says that all the procedure
even 148B procedure, it should be in the faceless manner. तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये फेवर ऑफ एसएससी में दिया है कि 148 का नोटिस भी जुरिसडिक्शन लोनियो नहीं दे सकता, पर क्या दे सकता है, कौन दे सकता है, वो सिर्फ फेसलेस में हो सकता है। बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, मैटर इज लिटिगेटेड। साइमल्टेनियसली जो कैलकाटा हाई कोर्ट है उसकी भी एक जजमेंट है, उन्होंने एक मेमोरेंडम रिलाई किया है, उन्होंने कहा है कि the powers of the assessing officer, jurisdiction assessing officer are co-terminus with the officers in the faceless. Therefore, they have approved. But matter is still to be decided by the Supreme Court. तो आज की डेट में हम ये ऑब्जेक्शन जरूर लेंगे कि 148AB का नोटिस भी किससे इशू होना चाहिए, फेसलेस मैनर में होना चाहिए। तो बात मैं ये कर रहा था आपसे, इस केस की बात कर रहा था, लोक डेवलपर्स की केस। फ्रेंड्स देखना इस केस में क्या हुआ। केस था 15-16, 16-17 और 17-18। डिपार्टमेंट ने ईमेल में दिया 13-14 असेसमेंट ईयर। कौन सी ईमेल यूज की? असेसमेंट ईयर 13-14। नाउ द क्वेश्चन इज, असेसी ने चैलेंज किया that the notice is improper, I am not in receipt of the notice, therefore 148 proceedings along with the assessment is required to be quashed. And the Bombay High Court has given the judgment in the favor of the SSE by observing rule 127 जो मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा, मैंने रूल 127 लिख दिया यहाँ पे, मैंने कहा, उन्होंने क्या बोला कि आपको मेल कहाँ पे भेजनी है, जिस साल का केस सिलेक्ट हुआ है, केस कौन सा साल हुआ है, 15-16, 16-17 और 17। और आपने किस पे ईमेल किया? असेसमेंट ईयर 13-14 की, इसलिए ये गलत है। दूसरी बात, डिपार्टमेंट की दूसरी गलती, एक और गलती डिपार्टमेंट ने की, डिपार्टमेंट ने सेकेंडरी ईमेल आईडी यूज की। फ्रेंड्स, जब आप रिटर्न भरते हैं वहां पे पूछते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, तो डिपार्टमेंट ने किस पे भेजा था मेल? ओनली ऑन सेकेंडरी ईमेल आईडी। हाई कोर्ट ने ये पॉइंट भी ड्वेल किया कि जी ईमेल शुड बी प्राइमरी ईमेल एंड इट शुड नॉट बी सेकेंडरी। सो बाय टेकिंग इनटू कंसीडरेशन रूल 127, अब बात कर रहे थे हम यहाँ पे 147। मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ सारों से। हम अभी ऊर्जा सर की बात कैपिटल गेन्स करके आए हैं सर के साथ। पहले 147 में और आज के 147 में डिफरेंस क्या है? मैं 147 की बात करूं, मैंने 148 शुरू नहीं की। मुझे ये बताइए, पहले 147 में और आज के 147 में मेन डिफरेंस क्या है जो बिल्कुल एपरेंट है और जो क्लियर है? पहला डिफरेंस, पहले 147 में वर्ड था रीजंस टू बिलीव। 147 की बात करो, 148 की बात नहीं कर रहा मैं अभी। और नए 147 में क्या है? देखिए, वर्ड रीजन टू बिलीव रिमूव कर दिया गया। इसका मतलब there is more, if I compare the both laws, if I compare both 147, erstwhile 147 and new 147, तो बहुत डिफरेंस है। पहले वो क्या था? प्राइमा फेसी होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब एक बारी मेरा केस 148 में खुल गया तो एस्केपमेंट तो होनी जरूरी है, बिकॉज 147 क्या कहता है? इफ एनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द केस ऑफ असेसिंग हैज एस्केप्ड असेसमेंट। मैं आप लोगों से केस डिस्कस करता हूं। मान लीजिए मैंने एक स्कूल है और मेरी रिसीट्स 5 करोड़ से कम है, तो मैं कौन से सेक्शन में रिटर्न फाइल कर देता हूं? 1023C 3AD में। अब हुआ क्या? 147 में केस सिलेक्ट हो गया, असेसी ने रिटर्न नहीं फाइल की। डिपार्टमेंट मुझे नोटिस में कहता है देयर इज एन एस्केपमेंट ऑफ इनकम। आई हैव गिवन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, I have given the all the things under 148AB proceedings and said that there is no escapement of income because all the income is exempt under section 1023C 3A। तो friends, यहाँ पे मैं सिर्फ इतनी बात पे आपको फोकस करना चाह रहा हूँ। आज की डेट में इंफॉर्मेशन आ रही है ऑनलाइन पोर्टल्स पे। जैसे सर ने बताया कि जी ऑनलाइन पोर्टल पे आप 50 लाख से कोई ज्यादा ट्रांजैक्शन करें या 30 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें या 10 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन करें, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन इज पॉपिंग ऑन द सिस्टम। अब इशू ये आया, मैंने एक प्रॉपर्टी सेल की, लेट अस सपोज करो 30 लाख, मैंने आईटीआर नहीं फाइल की, तो क्या डिपार्टमेंट हैज ए स्टैट्यूटरी राइट टू ओपन माय केस? डिपार्टमेंट आपको 148AB में नोटिस दे सकता है, बट आपकी ड्यूटी बनती है कि this should be income chargeable to tax, must be taxable as per the provisions of law। और provisions of law सर ने भी क्या बताए?
सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन के बाद क्या करेंगे हम, सेक्शन 48 जो क्या कहता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर, और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी क्या, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। और अगर सब कुछ करने के बाद भी वो लॉस में हुए तो क्या मेरा केस खोल सकता था, नहीं खोल सकता। मैं जो आपसे डिस्कस कर रहा हूं, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन केस लॉज एंड ऑल बेस्ड ऑन माय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। मेरे पास 148 के काफी मैटर्स पैन इंडिया लेवल पे ट्रेवल। इशू क्या है, ऑल दी जो जितने भी मेंबर्स हैं, दे आर नॉट properly filing the replies. I will tell you what are the mistakes we are doing and what precautions we can take. अभी तो मैंने सिर्फ 2 प्रिकॉशंस आपको बताई, एक मेल वाली और दूसरी प्रिकॉशन आपसे बता दी डिजिटल सिग्नेचर। अब मैं आपसे शुरू करूंगा कि प्रिकॉशंस हैं कौन कौन सी और क्या क्या जरूरी है। अगर मैं बात करूं आपसे इस केस की, ये मैंने एक केस स्टडी बनाया। एक पार्टी पे सर्वे हुई थी 1/4/2021 से पहले। सर्वे कब हुई थी, 1/4/21 से पहले। लेट अस से सर्वे हैपेंड इन फाइनेंशियल ईयर 2019-20, मान ले 10 अप्रैल 2019 को सर्वे हो। सर्वे के दौरान पता लगा कि एक्सेसी के वहां पे क्या था, एक्सेस स्टॉक था। जब एक्सेस स्टॉक आ गया, आपने तब फेसलेस नहीं थी, असेसमेंट पूरी करवा ली और आपने क्या लगाया, 115 बीबी एओ ने नहीं लगाया। आज की डेट में नोटिस आ जाता है, इस पे तो कौन सा सेक्शन लगना चाहिए था, 115 बीबी। तो मैंने उनको कहा, मैंने ऑब्जेक्शन रेज किया, व्हाट यू आर सेइंग इज इनकरेक्ट। मुझे आंसर चाहिए आपकी तरफ से, क्यों, देयर इज ए वेरिएशन ऑफ टैक्स बट देयर इज नो वेरिएशन ऑफ इनकम। वहां पे वर्ड क्या है, इनकम एस्केपमेंट। इनकम तो मेरी सेम ही है। अगर मैंने पहले एक्सेस स्टॉक एओ के सामने ऑफर कर दिया था 60 लाख, आज भी 60 लाख ही है। पहले टैक्स का रेट कितना दिया था, 30%, आज कितना एओ कह रहा है, कितना होना चाहिए, 78%। तो ये है वेरिएशन ऑफ इनकम, इट इज नॉट वेरिएशन ऑफ टैक्स। सो ऑन दीज इश्यूज 147 कांट बी रीओवर्ड। दिस इज क्लियर कट मैंडेट। और ये जो भी मैं आपसे बात करूंगा, ये मैं भी आपको भी फैक्ट्स पे लेके चलूंगा कैसे। चलिए आगे चलते हैं। बात हुई इस बात का, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं। मेन जो जजमेंट है, देखेंगे ये जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और क्या थी। Now in such a case, can they do 154? No, 154 का एक अलग डोमेन है। 154 कैन ओनली बी मिस्टेक apparent from records। बहुत सारी जजमेंट्स आ गई हैं कि अगर आप चेंज ऑफ रेट टैक्स कर सकते हैं, उस पे 154 इज नॉट परमिसिबल। अब बात समझना ध्यान से प्लीज। मैंने आपको बताया 147 कहां से एमिनेट हो रहा है, इंफॉर्मेशन जो हम कहते हैं इनसाइड पोर्टल पे। कोविड में लोगों ने क्या किया, शेयरों का काम किया। शेयरों का काम किया, इंफॉर्मेशन क्या आ गई, पोर्टल पे आ गई। पोर्टल पे आ गई, रिटर्न नहीं फाइल की, केस खुल गया 31/3/24 में। और ये इशू अराइज हुआ कि क्या ये ठीक है, गलत है। इस केस में जो मैं भी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, अगेन इट इज फ्रॉम मुंबई, द कोर्ट हैज सेड दैट the return income, the income has to be seen in real sense, should not be million। आप ये नहीं कह सकते कि full sale is the income। आपको जिस इनसाइड पोर्टल पे ये इंफॉर्मेशन अपलोड हुई थी, आपको वहां से इंफॉर्मेशन कॉल करनी चाहिए थी और देखना चाहिए था क्या आपने इसकी इनकम स्टेटमेंट बनती भी है कि नहीं। So this is the case। If you go to the case please, राम ने ध्यानी HUF, मैंने रेड में क्वेश्चन किया हुआ है, इट इज वेल सेटल्ड लॉ, ओनली द नेट इनकम दैट इज ट्रांजैक्शन ऑफ बाय एंड सेल शुड बी स्केयर्ड ऑफ। इसका मतलब मैं क्यों कह रहा हूं आपको, बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो पोर्टल पे आ रही है दैट इज इनकरेक्ट, बट अगर आप ऑब्जेक्शंस रेज ही नहीं करोगे तो क्या बनेगा। इसलिए आई सजेस्ट माय ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स कि जी अपने प्लीज अपने इसको अच्छे से ऑब्जेक्शंस रेज जरूर करें। ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड केस का जो मैं बात कर रहा हूं, दिस इज अगेन फ्रॉम द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, नितिन वाला केस। फैक्ट्स बहुत अच्छे हैं, असेसी ने पहले रिटर्न भी नहीं फाइल किया। असेसी हैज नॉट फाइल्ड द रिटर्न अर्लियर, देन आल्सो कोर्ट हैज गिवन द बेनिफिट। असेसी क्या हुआ, एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शंस वर फ्लैग्ड ऑन द पोर्टल कि असेसी ने एक्सपोर्ट किए। असेसी को नोटिस आया 148 AB का,
148 AB में ने उसने अपना प्रॉफिट एंड लॉस बनाकर अलॉन्ग विद द बैंक स्टेटमेंट सब कुछ दे दिया और कहा मेरी इनकम मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स से कम है। एओ ने कहा नहीं जी ये जो आप कह रहे हो गलत कह रहे हो और उसके रिप्लाई को नेगेट कर दिया। मैटर ट्रेवल टू द हाई कोर्ट बाय रिट। डिपार्टमेंट ने जब वहां पे एफिडेविट फाइल किया, उन्होंने कहा एसएससी ने रिटर्न नहीं फाइल की थी, हाउ वी कैन वेरीफाई द सेम। एंड अगेन द कोर्ट सेड दैट, उन्होंने कोर्ट ने क्या कहा कि इन द डिपार्टमेंट देयर इज ए सच मैकेनिज्म दैट इफ द सेसी हैज मेड एक्सपोर्ट एंड एंटायर सेल्स कैन नॉट बी प्रॉफिट, व्हाट इज टू बी टैक्सेबल इज द रियल प्रॉफिट। और 148 proceedings and subsequent proceeding quashed. So what is the beauty of 148 AB? We have to understand in the real sense. We have to consider कि हमें ये 148 AB जो नई अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट ने दी है, हमें इसको अच्छे से देखना है कि इसको कैसे करें। एक और बात आगे लेके चल रहा हूँ, फिर 148 AB से शुरू करूंगा। मुझे एक बात बताइए, आज मैं आपसे पूछूं, कौन सा अगर मेरी इनकम की स्टेटमेंट 50 लाख से नीचे है, अगर मेरी स्टेटमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से नीचे है तो पीरियड इज 3 इयर्स, वी ऑल आर अवेयर। और अगर मेरी स्टेटमेंट 50 लाख से ज्यादा है तो पीरियड इज 10 इयर्स। दिस इज एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 149(1). ये प्रोविजंस 149(1)A और 149(1)B में दे रखे। इशू ये राइज हुआ कि सर मुझे नोटिस 31 मार्च के बाद आ रहा है, तो क्या वो नोटिस वैलिड है कि इनवैलिड है? इशू वैलिड है उनका कि भी मेरी अगर इनकम, अगर मैं इसको एग्जांपल से एक्सप्लेन करूं जो मैं भी आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बात को। इसका मतलब हम बात कर रहे थे कि जी नोटिस जो है मेरे पास अगर 50 लाख से कम है तो विद इन 3 इयर्स आ सकता है, और अगर 50 लाख से ज्यादा है तो विद इन 10 इयर्स आ सकता है, सब्जेक्ट टू दी प्रोविजोस गिवन इन सेक्शन 149 जो कहता है 6 साल से ज्यादा नोटिस नहीं इशू हो सकते। उसको बाद में देखेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया, असेसमेंट ईयर 2021, असेसमेंट ईयर 2021, और बताइए अगर इसमें स्टेटमेंट ऑफ इनकम 50 लाख से कम है तो कब तक आना चाहिए था ये नोटिस? 31 मार्च 2024। दिस इज द लास्ट डेट इफ दिस स्टेटमेंट ऑफ इनकम इज लेस देन 50 लाख। मैंने कह दिया नोटिस आया था 24/3/24 को, टाइम दिया 31 मार्च में, और ऑर्डर पास हुआ 148(1)D का 3rd of April 2024। दिस इज द केस स्टडी। मुझे बताएंगे ये नोटिस वैलिड है कि नहीं वैलिड है, कंसीडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट गिवन इन सेक्शन 149(1)A। 149(1)A क्या कहता है? 3 years फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट। फ्रेंड्स, लॉ में लिखा हुआ है 5th प्रोविजो, जितना टाइम 148 AB में दिया था उसको लिमिटेशन पीरियड में ऐड कर, तो लिमिटेशन पीरियड कितना था मेरे पास? 31 मार्च 24। तो 31 मार्च 24 में मैं ऐड कर दूं 24 मार्च से लेकर 31 मार्च 24 का टाइम, अगर मान लो वो 7 या 8 दिन है, वो ऐड कर दूं तो इसका मतलब 8 अप्रैल तक नोटिस आ सकता था, वो नोटिस वैलिड है। बहुत फोन आता है, सर ये देखो नोटिस टाइम बार्ड हो गया है, दैट नोटिस इज ए वैलिड नोटिस बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। टाइम गिवन इन द शो कॉज नोटिस अंडर सेक्शन 148 AB will be added to the period of limitation। तो 31/3/24 मेरी लिमिटेशन पीरियड बन रही थी, और 8 दिन का अगर ये नोटिस का पीरियड है, मैं 8 दिन ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा? 8 अप्रैल। तो इस केस में नोटिस कब आ गया था मेरे को? 3rd of April 2024 को ये नोटिस क्या बन जाएगा? वैलिड नोटिस। दिस वाज द इशू आई जस्ट वांट टू एड्रेस विद यू। अब देखते हैं इसी को लेके, ये है सेक्शन 148A। प्लीज देखना 148A क्या है ये। इसमें क्या है? 148 कैपिटल A, वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ऑब्जेक्शंस यहां से शुरू होते हैं, और अगर आप इस ऑब्जेक्शंस को अच्छे से डील कर लोगे, आई चैलेंज यू, मोस्ट ऑफ द नोटिसेस यू विल एबल टू एड्रेस। पहली बात क्या कहता है? 148A, कंडक्ट एन इंक्वायरी। इसका मतलब एओ को यह कहा गया कि आप नोटिस इशू करने से पहले इंक्वायरी करें, बट वहां पे वर्डिंग्स क्या है? कंडक्ट एन इंक्वायरी इफ रिक्वायर्ड। If required is the in the act means whether it is mandatory for the EO to conduct inquiry or it is directory। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, 148A में लिखा है
कि कोई भी नोटिस 148A का करने से पहले आप उसको अच्छे से इंक्वायर करें क्या वो इंफॉर्मेशन ठीक है गलत है। बट यहां पे वर्ड क्या लिखा है, कंडक्ट एनी इंक्वायरी, वर्ड इज एनी इंक्वायरी एंड सेकंड वर्ड इज प्लीज इफ रिक्वायर्ड। तो कोर्ट्स ने जजमेंट दी, एक्ट को भी ये देख के लगा इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज डायरेक्ट। आगे चलते हैं, विद रिस्पेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स। ध्यान से समझना, पहले 147 में वर्ड सजेस्ट नहीं था, यहां पे वर्ड सजेस्ट है। इसका मतलब प्राइमा फेसी एओ को ये लग रहा है कि असेसी ने एस्केपमेंट कर रखी है, प्राइमा फेसी, बट ही इज नॉट श्योर। इशू ये राइज हुआ, आगे देखते हैं, इशू ये राइज हुआ प्रोवाइड और 148AB में क्या आता है पहले मुझे बताएंगे। 148AB का नोटिस है कि शो कॉज नोटिस है? 148AB वी आर ऑल अवेयर, पहले कौन सा नोटिस आता है? 148AB का, दैट इज ए नोटिस और ए शो कॉज नोटिस। इट इज ए शो कॉज नोटिस। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए नोटिस एंड ए शो कॉज नोटिस? डिफरेंस क्या है नोटिस और शो कॉज नोटिस में? 142(1) में भी तो नोटिस ही आता है। क्या डिफरेंस है 148AB के नोटिस में और 142(1) के नोटिस में? डिफरेंस बहुत है सर। शो कॉज नोटिस में सेटल्ड लॉ है, आपको इंफॉर्मेशन साथ लगा के देनी है। अगर आपके पास इन्वेस्टिगेशन से रिपोर्ट आई है तो आपको वो रिपोर्ट साथ देनी है। अगर आप कोई स्टेटमेंट पे रिलाई कर रहे हैं तो स्टेटमेंट की कॉपी साथ देनी है। इसको हम कहते हैं शो कॉज। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, जितने शो कॉज नोटिस आ रहे हैं सब गलत। उसमें क्या लिख रहा है कि जी आपने अकोमोडेशन एंट्री ली है 40 लाख की, मुझे जिससे पैसा आया है उसके बैंक स्टेटमेंट दो, उसकी आईटीआर दो। दिस इज नॉट ए शो कॉज नोटिस, दिस इज ए क्वेश्चनर व्हिच वी रिसीव अंडर सेक्शन 142(1). इसमें आप मेरे से इंफॉर्मेशन मांगते हो। शो कॉज नोटिस में तो मैं क्या कहता हूं, क्यों ना आपकी एडिशन की जाए। तो इसमें क्या कहूंगा, क्यों ना आपका 148 कर दिया जाए, बिकॉज देयर इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल एंड वी आर गिविंग यू द पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन। पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब पूरी इंफॉर्मेशन, ये नहीं कि आप बिट्स में दे दो। यू कांट डू चेरी पिकिंग। एग्जांपल लेते हैं चेरी पिकिंग का। जीएसटी डिपार्टमेंट से पता लगा बोगस बिलिंग का केस है, इंफॉर्मेशन इनसाइड पोर्टल पे आ गई, मुझे शो कॉज नोटिस आ गया, तो आप इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई क्या देंगे? आप ये रिप्लाई देंगे, प्लीज प्रोवाइड मी द कॉपी ऑफ इंफॉर्मेशन एज रिसीव्ड बाय वे ऑफ स्टेटमेंट बाय व्हिच यू आर सेइंग दैट दिस इंफॉर्मेशन व्हिच यू आर रेफरिंग टू इज, जिससे मैं ये एमिनेट कर सकूं कि एक्चुअल में बोगस बिलिंग हुई है। तो वो कैसे पता लगेगा? किसी ने स्टेटमेंट दी होगी, अकाउंटेंट ने दी होगी या ओनर ने दी होगी। अगर अकाउंटेंट ने दी है तो क्या आप अकाउंटेंट की क्रॉस एग्जामिनेशन मांगे? और वर्ड क्या है यहाँ पे? प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ। 148A में क्या था? इंक्वायरी। और 148B में क्या है? शो कॉज नोटिस में अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। मैं आप सबसे पूछता हूं, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का मतलब क्या है? इट शुड बी फिजिकल हियरिंग और इट शुड बी ओरल हियरिंग। हाँ जी सर, अभी आप कह रहे थे कि ये फेस टेस्ट में आना चाहिए। मैं ये आपसे पूछ रहा हूं, यहाँ पे अगर मैं देखूं प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है OBH। और आप जब 148AB का नोटिस देखते हैं, जब पोर्टल पे भी देखेंगे, वहां पे आपके पास वर्चुअल हियरिंग का वहां पे कोई भी विंडो नहीं आता। तो व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? It has been explained by circular also, and it has also been explained. Please be with me. Opportunity of being heard means personal hearing. एक केस लॉ नहीं, बहुत सारे केस लॉ आ गए हैं कि आप पर्सनल हियरिंग मांगेंगे। आज की डेट में तो हमें सारे नोटिस कौन दे रहे हैं? जेओ दे रहा है, जुरिसडिक्शन एओ। तो आप उससे क्या मांगेंगे? पहली बात, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए। इंफॉर्मेशन में स्टेटमेंट दीजिए। इंफॉर्मेशन में जो इनसाइड पोर्टल पे जीएसटी विंग में कहा है उसकी रिपोर्ट दीजिए। फोर्थ बात, मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड चाहिए, क्योंकि अगर मेरे अकाउंटेंट ने स्टेटमेंट दी है मैं उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करना चाहता हूं। बिकॉज यहाँ पे वर्ड क्या है? अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मींस पर्सनल हियरिंग as conveyed in the circular also, and also the various judgments which have clearly stated that it should be by way of personal. आगे देखते हैं जी, by serving upon him a show cause notice. I have already read the show cause notice. अब यहाँ पे वर्ड क्या है कि मिनिमम शो कॉज का टाइम 7 दिन होना चाहिए।
और मैक्सिमम कितना होना चाहिए 30 दिन। 148 AB में 7 दिन मिनिमम टाइम और मैक्सिमम टाइम 30 डेज। इशू ये आया, मेरे को शो कॉज नोटिस में 3 दिन का टाइम दिया, तो क्या वो वैलिड नोटिस है? वर्ड क्या लिख रहा है प्लीज? by serving a show cause notice within such period as may be specified in the notice, being not less than 7 days. Being not less than 7 days, meaning thereby 7 days period is mandatory. But आप नोटिस निकाल के देख लेना, वो 7 दिन का टाइम नहीं है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे, वो 7 दिन कैलकुलेट करने के लिए जिस दिन नोटिस आया मुझे रात को 7:30 बजे ईमेल पॉपअप हुई कि जी मेरे पास नोटिस आ गया, वो दिन इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? For 7 days, whether holidays are to be excluded or not, whether the day of notice is to be excluded or not. और दूसरी बात, ऊपर नोटिस के नीचे डिजिटल सिग्नेचर भी लिखे हुए हैं। नोटिस पे डेट है 22 मार्च, डिजिटल सिग्नेचर लग रहे हैं 24 मार्च। इसका मतलब क्या है कि डिपार्टमेंट इज बट बैकडेटिंग। तो छोड़े, मेरे को 7 दिन कब से देखने हैं? फिर जब से डिजिटल सिग्नेचर लगे, जब से मेरी मेल पे पॉपअप हुआ, मैं तो तब से देखूंगा ना 7 दिन। आपने नोटिस बनाकर ड्रॉर में रख लिया, इट विल नॉट सर्व द पर्पस। और इसमें बहुत सारी जजमेंट्स आ गई, अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले ही इशू पे डील कर लें कि आपने इंफॉर्मेशन पूरी मांगनी है बाय वे ऑफ लेटर। You have to raise objection that you have not provided me the copy of information. I will not able to reply, and this period of 7 days will be calculated once you provide me the information. 7 दिन कब से दोगे? जब से मुझे इंफॉर्मेशन दोगे ना, उससे पहले थोड़ा गिन लो। दूसरी बात, ये 7 दिन वर्किंग डेज होने चाहिए, एक्सक्लूडिंग हॉलीडेज, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडेज। और ये जजमेंट्स हैं, इसी बेस पे हम बात करेंगे कि ये क्या है। अगली बात ये हो रही थी, ये हमें नोटिस आ जाएगा और असेसी इसका रिप्लाई देगा। बात बीच में 3 इश्यूज इसमें चले हमारे पास। एक तो चला अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको हमने कहा पर्सनल हियरिंग है। अब वो मैं इसको एक एक करके डील करूंगा। ये देखना फ्रेंड्स, पहली बात तो मैंने आपसे ये डिस्कस कर लिया कि जी इंक्वायरी करने का राइट 148A में कह रहा हूं मैं। ए में, ए कौन सा है? सिर्फ इंक्वायरी करनी। एओ को जरूरी नहीं है 148B से पहले इंक्वायरी करनी, वो ठीक है, उसके पास इंफॉर्मेशन एमिनेट हुई, आप उसको 148B के टाइम कह सकते हैं। जो आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है पोर्टल पे वो गलत आ रही है, पर इट इज नॉट ए राइट दैट 148A में आपको उसको इंक्वायरी करनी मैंडेटरी है। दीज आर द न्यूमरस केस लॉज। अभी इसमें जजमेंट आई है बॉम्बे हाई कोर्ट की सतगुरु, which has clearly stated that the 148A inquiry is not mandatory, it is direct. But ये तो बात अभी हुई सिर्फ 148A की। अब मैं बात चल रहा हूं आपसे 148AB की, जो इंपॉर्टेंट है। इशू क्या राइज हुआ ये देखते हैं। एसआर कोल्ड स्टोरेज, अगर आपको याद हो, ये किसकी जजमेंट थी? इलाहाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट। इसमें इशू में क्या था, मैं एक बारी जल्दी से क्विक आपको फैक्ट्स बता दूंगा। As per assessee, his bank account was maintained with Union Bank of India और पहले असेसमेंट हो रखी है। असेसी ने कहा मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई बैंक अकाउंट मेंटेन नहीं किया, पर कब कहा होगा? 148B में नोटिस में, 148B के नोटिस में, और कहा मेरे पास कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का अकाउंट नहीं है, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। डिपार्टमेंट ने नहीं मानी बात और बाद में प्रोसीडिंग्स ओपन करी। In this case, department was held to a cost of 50 lakhs on the assessing officer. Assessing officer पे 50 लाख की कॉस्ट लगी थी कि अगर assessee ने कहा कि ये मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं है, आपने क्यों नहीं वेरीफाई किया और क्यों नहीं बैंक अगर बड़ौदा उसका था तो क्यों नहीं कंफ्रंट कराया? So what we have learned from this judgment? We have learned this that we have to raise the objection under 148AB. Please provide me the copy of bank statement. आप कह रहे हो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट है, दो मुझे कॉपी। अकाउंट नंबर दो, किसके नाम पे है? ज्वाइंट अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है, किसके नाम पे है? सो दीज आर द ऑब्जेक्शंस व्हिच यू हैव रिक्वायर्ड टू रेज। इमीडिएटली इसके करने के बाद क्या हुआ? डिपार्टमेंट ने जब ये जजमेंट आई उसके बाद एक सर्कुलर निकाला और कहा कि एओ तुम सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करोगे जो इनसाइड पोर्टल पे आ रही है। इसका मतलब क्या हो गया?
now they are bound to verify the information. So what I am trying to say that 148 AB should not be lightly dealt. It should be well within the scope, और हमें ये भी देखना है कि जी उसको कैसे डील करना है. This is the instruction number. This is the instruction number 22nd of August 2022. इसका थर्ड पैरा का मैं जो बोल्ड में किया हुआ है सिर्फ वो पढ़ रहा हूँ. It is not out of place to mention here that information available on the data uploaded by the reporting entity means bank, आगे may not be fully accurate due to inter area errors of human and technical nature. अगली लाइन पढ़ते हैं. Therefore, due verification may be carried out and opportunity of being heard given to the taxpayer before issuing the notice under section 140. इसका मतलब अगर जब भी आपको नोटिस आएगा आज की डेट में 148 AB का, आप उससे क्या मांगेंगे? बैंक डिपॉजिट पे आता है, नाम बताओ बैंक का, बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करो, और किसके नाम का है, ब्रांच कौन सी है, कैश कितना डिपॉजिट हुआ है और चेक से कितना डिपॉजिट हुआ है. इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे कैसे पता लगेगा, असेसी को भी कैसे पता लगेगा कि 6 साल पुराना रिकॉर्ड उसका कौन सा बैंक है? इट इज नॉट पॉसिबल until you give us the information. So sharing of information is very important, and you will also rely upon the CBDT instruction dated 22nd of August 2022, which has clearly stated that all the information appearing on the online portal is not correct. So बात यहाँ से चल रही थी, इस केस के बाद क्या हुआ? अब बात आ गई 7 दिन की, जो हम बात कर रहे थे 7 days की बात कर रहे थे, भी वो कर लेते हैं पहले. आगे देखते हैं इसके क्या था. जो ये बात कर रहे थे हम 7 days की बात. यहां से देखते हैं 7 days का कंसेप्ट क्या था. ये है सर वो जजमेंट्स. यहाँ पे 148 AB में को टाइम कितना दिया? 7 दिन दिया था. मैंने नोटिस की कॉपी साथ लगाई. नोटिस किस दिन का है? 20 मार्च 2022 का, और अपीयर होने के लिए कब कह रहे हैं? 23 मार्च 2022 को. और जिस दिन नोटिस आया, मैंने आपको पहले बताया है, उस दिन को मैंने एक्सक्लूड करके चलना है. और ये कहाँ लिखा हुआ है? जनरल प्रोजेक्ट. दीज आर द जजमेंट ऑफ पेंजोस बिल्डर्स, जिसने अभी आई है 2024 में बॉम्बे हाई कोर्ट की, जिन्होंने कहा है जहां आपने 7 डेज से कम दिए, नोटिस इज इनवैलिड. सो आप ये पहली बात ये कब लेंगे? 148 AD के ऑर्डर के बाद. उसका रीजन है, अगर आप उसको नहीं देंगे तो वो एक सब्सिक्वेंट नोटिस करके आपको कह देगा आई एम ग्रांटिंग यू द अपॉर्चुनिटी. सो आई जस्ट वांट टू गिव यू दैट व्हिच इज द स्टेज ऑफ ऑब्जेक्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट. 7 days not given, very much correct. Notice is bad in law, but it should be given. You say right, simple like it. The notice under section 148 AB is not correct as it is not maintaining the statutory provisions of law. Don't mention 7 days first. After 148 AD, because there are chances that in that case has been time barred. Because 3 साल का टाइम पीरियड है वहां पे, जैसे केस टाइम बार्ड हो जाएगा उसके लिए हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं. अब बात ये कर रहे थे कि भी जब मैंने आपसे बात की थी कि जी छुट्टियों वाली डेट एक्सक्लूड करनी है, दैट इज द केस ऑफ RN फैशंस इन व्हिच इट हैज बीन हेल्ड दैट ऑल द डेज ऑफ हॉलिडेज शुड बी एक्सक्लूडेड. चलिए अब आगे देखते हैं ये क्या है. ये है नोटिस इश्यूड अंडर सेक्शन 148 AB नीड्स इंक्वायरी. मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया है कि 148 AB का नोटिस के साथ इंक्वायरी होना जरूरी है. और ये कहां लिखा है? ये इंस्ट्रक्शंस में भी लिखा है. कौन सी इंस्ट्रक्शन है? इंस्ट्रक्शन नंबर 1st of August 2022 in which they have mentioned that. So please, आप जब भी objection raise करें, you please rely upon the instruction number by stating that your notice is invalid because it is not giving the instructions, it is not following the board circular. हमें सब कुछ पता है. As per UCO Bank, it is very much necessary. As per UCO Bank, it is very much necessary. जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें लिखा है
कि डिपार्टमेंट इज बाइंडिंग टू फॉलो ऑर्डनरी सर्कुलर। अगर आपको सर्कुलर में भी कह दिया है कि अगर आपको ये इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी, फिर भी आपने क्यों नहीं दी। सो दीज आर वेरी की पॉइंट्स व्हिच वी आर डिस्कसिंग। और इसी केस में उन्होंने ये भी दिया है कि जी आपको इसमें 3 अनेक्शन है, प्लीज ध्यान से देना, इसमें 3 अनेक्शन है। अनेक्शन A1 इस सेक्शन में, अनेक्शन A2 और अनेक्शन A3, तीन है। अनेक्शन A1 जो डील कर रहा है वो डील कर रहा है कि आपको कॉपीज देनी है साहब। अनेक्शन जो A2 है वो बात करता है अप्रूवल की। 148 AD से ऑर्डर से पहले एक अप्रूवल लगती है, और वो अप्रूवल किसकी है? 3 साल के अंदर जो लगनी है वो PCIT की लगनी है, और 3 साल से जो ज्यादा लगनी है वो किसकी लगनी है? प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। अब इशू ये राइज हुआ, ध्यान से देखना, पहली बात, हम कभी भी कॉपी ऑफ अप्रूवल नहीं मांगते। You have to ask, request the AO to please provide the copy of approvals. Why I'm telling you? Because approval is given by CIT, but he is taking in the document, he is saying that approval is taken from PCCIT. So this is completely non-application of mine. So मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जी देखिए कि हमें कॉपी की अप्रूवल की कॉपी भी देनी है, और ये कहां पे लिखा है? इंस्ट्रक्शन में लिखा है कि आपको कॉपी देनी जरूरी है। मैं भी आपको उसका रेलिवेंट पार्ट दिखा देता हूं, कहां लिखा है ये इंस्ट्रक्शन का। प्लीज अनेक्शन A3, प्लीज सी अनेक्शन A3, कॉपी ऑफ अप्रूवल ऑफ स्पेसिफाइड अथॉरिटी। सो आपको आपकी इंस्ट्रक्शन बोल रही है कि अप्रूवल की कॉपी देनी मैंडेटरी है, और अगर आप नहीं देंगे तो उसमें ये मैं क्यों कह रहा हूं लोग, क्योंकि यू विल फाइंड देयर आर सेवरल एरर्स इन इट, बहुत सारे एरर्स हैं, और उसी एरर्स को देख के हम क्या करेंगे? आगे चैलेंज करेंगे कि आपके जो आपका नोटिस है वो गलत है। अब बात है पर्सनल हियरिंग की। मैंने आपको बताया था कि पर्सनल हियरिंग यहां पे है। कैसे बताया था पर्सनल हियरिंग? ये है उसका, मैंने उसका ड्राफ्ट दे दिया है। इंस्ट्रक्शन नंबर में लिखा हुआ है, प्लीज अनेक्शन A2 के पॉइंट नंबर 16 में लिखा है पर्सनल हियरिंग आपने दी कि नहीं दी। तो यहां से क्लियर होता है अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड का 148 AB में मीनिंग क्या है? पर्सनल हियरिंग है, और वहां पे हम ले सकते हैं इस जेओ से। वी कैन सी एंड देयर आर न्यूमरस ऑफ जजमेंट्स ऑन दिस इशू। दीज आर द जजमेंट्स इन द केस ऑफ B. Boy Joseph, which has held by Madras High Court, कि आपको पर्सनल हियरिंग देनी मैंडेटरी है। आपने वायलेट किया है, क्या आपने वायलेट कर दिया है? जो सर्कुलर है वो आपने वायलेट कर दिया। उसके बाद बात ये आई, अगली बात जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, प्लीज देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट, ये वाला पॉइंट देखते हैं। 148 AB का जो नोटिस है, प्लीज बी विद मी, ध्यान से समझना। 148 AB का नोटिस आया कि मैंने A प्रॉपर्टी का कैपिटल गेन नहीं दिखाया। जब 148 AD का ऑर्डर आया तो वो था B प्रॉपर्टी का मैंने कैपिटल गेन नहीं दिखाया। प्रॉपर्टी चेंज, एड्रेस चेंज, फिगर्स चेंज। तो 148 AB क्या है? शो कॉज नोटिस है, मीनिंग देयर बाय योर शो कॉज नोटिस वाज रॉन्ग। If show cause notice was wrong, then all the proceedings are required to be vitiated. So what I am trying to say that supplementary notice under section 148 AB तो मेरी जुरिसडिक्शन कंडीशंस क्या हैं? 50 लाख से नीचे 3 साल, 50 लाख से ऊपर 3 साल से ज्यादा, 10 साल तक जा सकता हूं। सब्जेक्ट टू 6 इयर्स वाली कंडीशन वो बात की है।
148A होना जरूरी नहीं है। तो बड़ा इजी सा सिस्टम है। 148A कब होना जरूरी नहीं? जब एसएससी पे सर्च हो, सेकंड या सर्च के दौरान सर्च हुई ए पे, इंफॉर्मेशन मिल गई बी पे, इंफॉर्मेशन किसकी मिल गई? बी की मिल गई, तो बी के लिए भी 148A होना जरूरी नहीं, ए के लिए भी नहीं होना जरूरी है। इसका मतलब जो पुराने 153A की बात करता था और पुराने 153C की बात करता था वो आज भी एम्बेडेड हैं। उस केस में आपको सीधा 148 का नोटिस आएगा, आपको कोई भी मैंडेटरी प्रोविजंस 148A to 148B फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो पहला केस कौन सा हो गया? सर्च केस। दूसरा, सर्च हुई ए पे, इंफॉर्मेशन मिल गई बी की, तो बी के केस में भी आपको 148A का ऑर्डर पास करना मैंडेटरी नहीं है, सीधा 148 देंगे। थर्ड केस, अगर प्लीज अगर किसी के पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा ये समझना, 135A में वेरिफिकेशन यूनिट इज पुशिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द ऑनलाइन पोर्टल और जिसको हम रिप्लाई नहीं करते, अगर आप इसको रिप्लाई नहीं करेंगे आपको 148A to 148AD डिस्पेंस कर दिया जाए। So if any information is pushed on the portal under section 135A, do reply, because otherwise you will lose the charm of making the objections। जो objections हम रेज कर सकते थे वो नहीं रेज कर पाए। तीसरी बात, एक और मिथ चल रही है कि सर्वे केस में क्या बने। सर, सर्वे के केस में 148D का ऑर्डर पास होना मैंडेटरी है। There is no exclusion in the case of survey। सिर्फ सर्च के केस में, सर्च के केस में या सर्च के दौरान किसी और के गुड्स मिल जाएं या आर्टिकल्स मिल जाएं या उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिल जाएं या फिर 135A में जो लिखा हुआ है, उन केसेस में हम ये नहीं करेंगे, अदरवाइज 148AD का करना मैंडेटरी। अब मैं बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने लगा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। Regarding 148AB, the question is whether the 148AB notice is required to be given electronically or manually. So this issue has been dealt in Rule 127, which says that in a case where there is a NMS case, there is no email of the SESI, nothing is available on the SESI. You can't only update the notice on the portal only. You have to serve the notice manually also. Where there is no email. But if where there is no email, there is a possibility I have not made the PAN, or I have made the PAN, वो पुराना था PAN, उसमें मेल नहीं जाती थी, तो उस केस में मैनुअली आना जरूरी है। अदरवाइज ऑनलाइन नोटिस जो आ गया वो माना जाए। बट इसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, 4 इश्यूज इसमें राइज हो गए। पहला इशू मैं डील करूंगा, नोटिस मैंने इशू किया 29/3/2024 को, मेरी मेल पे आया 6 अप्रैल 2024 को। तो जब मेरी मेल पे नोटिस आया, इट विल बी डिटेल्ड डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिस। वेरी रेलेवेंट पॉइंट। मैं क्यों बोल रहा हूं, मार्च में मुझे नोटिस नहीं आया, कब आया? 6 अप्रैल में आया, और हो सकता है 6 अप्रैल में आया तो वो क्या बन जाता, टाइम बार्ड। सेकंड केस में लेता हूं, नोटिस इशू हुआ 29 मार्च को, पर डिजिटली साइन हुआ 2 अप्रैल को, और 2 अप्रैल को ही मुझे आया। तो मुझे कब से देखना है? 2 अप्रैल से देखना है, मैं उसको नहीं देखूं। फोर्थ केस, जो ईमेल थी जो सुमनजीत अग्रवाल ने अभी एक रूल ले डाउन किया, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। आपने किसी और की ईमेल पे भेज दिया, बट एसएससी ने नोटिस को व्यू कर लिया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब दे आर सेइंग दैट एसएससी वाज हैविंग एक्सेस टू दैट ईमेल, एसएससी इज प्लेइंग हाइड एंड सीक विद द डिपार्टमेंट। आजकल वहां पे पता लग जाता है, जब आप नोटिस करते हैं कि आपने नोटिस को व्यू किया है कि नहीं किया, तो उन्होंने कह दिया when notice was viewed by the SESI। So please don't give misstatements while raising the objections. Objections should be very clear. Last issue मैं जो डील करना चाह रहा था वो बस एक कर लूं। With this we will just conclude the session. Viewed, deleted, every record they have. Yes, they have it. This is the case, friends, which you guys are talking about. ये जो भी केस बात कर रहा हूं, दिस इज फ्रॉम द तेलंगाना हाई कोर्ट। इन दिस केस 148 नोटिस वाज इशूड बाय जुरिसडिक्शनल AO। वेरी इंपॉर्टेंट केस। 148 नोटिस किसने इशू किया था? जुरिसडिक्शनल AO ने, और तेलंगाना हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्शन नंबर जो मार्च में आई थी 2022 में, उसको कह दिया कि the AO has no power to issue 148 notice, it should also be issued in the faceless manner। 3 रीजंस दिए।
सेक्शन 151A कैपिटल A, वहां भी लिखा है ऑल प्रोसीडिंग्स विल बी इन फेसलेस मैनर। ये जो है फेवर में है, तो सो आई ऑल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट वी शुड रेज दिस ऑब्जेक्शंस आल्सो दैट इट शुड बी इशूड इन द फेसलेस मैनर बाय रिलाइंग अपॉन दिस जजमेंट। एंड बट देयर इज वन कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट रिगार्डिंग दिस व्हिच इज ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट। दिस इज द केस ऑफ Triton Overseas versus Union of India. In this case, it has been held that even if the notice was issued by the JO, it is also valid, but it has to be tested in the court of law because the matter will definitely travel to the Supreme Court. अब मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो ध्यान से समझना। मैंने आपको भी ये कहा कि अगर A की सर्च हुई और B का सामान मिल गया तो B पे भी नोटिस क्या होएगा? 153C का नोटिस आना चाहिए था, तो उस केस में भी 148A to 148D नहीं लगेगा। बट एक ध्यान रखना, ये 148 में वेब ऑफ अप्रूवल्स है। पहली अप्रूवल कहां लगती है? ध्यान से देखिए 148A में, जब उसने इंक्वायरी करी थी तब। दूसरी अप्रूवल कब लग रही है? ऑर्डर देने से पहले। तीसरी अप्रूवल कब लगनी है? प्लीज, जब वो, अब तीसरी अप्रूवल किसमें है? तीसरी अप्रूवल है सर्च केसेस। ये तो हो गया नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केसेस में कितनी अप्रूवल्स हैं? सिर्फ 2। सर्च केसेस में हमारे पास अप्रूवल ज्यादा हैं। जैसे वहां पे 153C पे 153D की अप्रूवल होती थी, ऐसे ही यहाँ पे 148 की अप्रूवल एक अलग से चाहिए जॉइंट कमिश्नर की इन सर्च केसेस व्हेन बिफोर पासिंग द सस्पेंड ऑर्डर अप्रूवल इज स्टिल देयर। सो वी हैव n नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस टू डील विद। बस इस बात को लेके क्लोज करना चाह रहा हूं। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आप बताएंगे कि क्या ये नोटिस था वो गलत था कि सही था। मैंने अभी आपसे केस डिस्कस किया था एजुकेशन ट्रस्ट का, and I have got n number of cases in faceless assessment which was turned in the favor of the assessee after giving the notice। हुआ क्या? एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, मैंने आपसे डिस्कस किया था अभी वो केस पूरा नहीं हुआ था। असेसी ने मुझे ये कह दिया, एओ का जब फाइनल शो कॉज नोटिस आया, उसने कहा यू हैव नॉट फाइल्ड द रिटर्न ऑफ इनकम, ओरिजिनल रिटर्न ऑफ इनकम। आई आंसर्ड हिम that I have not filed the return of income because I was not required to file the return of income. He mentioned as per provisions of section 139(4)(c), you are required to file the return of income. I countered it by saying that mere not filing of return of income is not escapement once the income is exempt. कैंचप्पा की जजमेंट है उस पे, सेम फैक्ट्स हैं, और उन्होंने फेवर ऑफ असेसी पे बोला है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनकी बिल्कुल टर्नओवर, जो जिनकी बिल्कुल सरप्लस एग्जम्प्ट होता है, उसके केस में अगर उसने रिटर्न नहीं भी फाइल की तो देयर इज नो हार्म। बट माइंडेड देयर इज अ सेक्शन ऑफ फीस जो यहाँ पे है चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में, वहां पे एक फीस का सेक्शन आ गया है जिसपे 200 रुपए पर डे की पेनल्टी। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। उस एओ को तो नहीं पता था फीस की है, बट आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग कहीं मेरा केस उधर तो नहीं टिल्ट कर जाएगा। सो वी हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन एन नंबर ऑफ थिंग्स। विद दिस आई एम जस्ट कंक्लूडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन। Thank you, Kapurji. And I'm straight away requesting Srivastava to complete this 43BH. It's a very important section. And we have very less time, so any questions we can ask? It's a very specific issue. On 43BH, is it a question and answer session? We'll try and make it interactive. Okay, because it is implemented. The schedule is the conference is to come to an end at 5:15, and we are already at 5:08, so only 7 minutes left. Maybe we'll try and extend it a bit. So we can, no, but then probably the hotel also has certain other program. So Read the section first. see, Prince, my first question, in fact, we'll try to make it an interactive session. How many of us, are aware of 43 hits? How many?
very few limited, very few hands. So very few people have actually seen as to what that there is amendment in section 43B with the introduction of clause H. Finance Act 2023 made this amendment by inserting clause H in section 43B. When we read and there is an amendment, a very important amendment in the proviso to section 43B. Then under the explanation 4, there are certain amendment substitutions of the category of enterprises. Now, what does 43B(H) read? 43B, notwithstanding anything contained in any of the provision of this Act, a deduction otherwise allowable under this Act in respect of ABCD, we started statutory liability, the interest, and then bonus, blah blah blah, various things. H was introduced. Any sum payable by the SSC to a micro or small enterprise beyond the time limit specified in section 15 of the Micro, Small and Medium Enterprise Development Act 2006 shall be allowed irrespective of the previous year in which the liability to pay such sum was incurred by the SSC according to method of accounting regularly employed by him, only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him. Now, this is the section. Proviso. Very important in this, some words have been added. So we all know that we had an extended time period for payment of certain amounts of statutory as covered in the 43B, that is up to the date of filing return. Now, this particular proviso has been amended by adding the words except the provisions of clause H, and the amended proviso reads, provided that nothing contained in this section except the provisions of clause H shall apply in relation to any sum which is actually paid by the SSC on or before the due date applicable in this case for furnishing the return of income under subsection 1 or section 139 in respect to the previous year in which the liability to pay such sum was incurred as aforesaid, and the evidence of such payment is furnished by the SSC along with such return. Then the explanation 4, the different micro enterprise and small enterprises have been explained, which refer to the MSME Act. Now, on a first look, it looks very simple. That the payments to be made to micro and small enterprises under the MSME Act are also covered. But the impact of this is very large. A good number of businessmen are going to be hit by this, and people are just trying to find out how it is going to hit them. And this covers any person. First of all, it is not restricted to a particular type of SSC. That it will be applicable to all SSCs, whether even an individual, partnership firm, BOI, company, cooperative society, whatever may be the nature of the SSC, everybody will get covered under this. Before we proceed, when does it become applicable? The section is talking about that this becomes applicable from 1/4/2024 and would relate to payments that are outstanding as of 31st March 2024.
The issue that may arise here is, if you have any amount outstanding as on 31st March 2023, and that continues to be outstanding as on 31st March 2024 also, whether the provisions of clause H would become applicable or not. On going through the memorandum, I am of the view that payment which was outstanding as on 31st March 2023 would not be hit by clause H, because what it is talking is that the deduction in respect of the relative amounts would not be allowed, and would be allowed only in the year of payment. As far as 43 amount outstanding as on 31st March 2023 are concerned, they are not claimed as deduction for assessment year 24-25. So any amount which is claimed as a deduction for assessment year 24-25 onwards would only be covered under the ambit of 43BH. That is first thing that we have to keep in mind. That it is the other important thing, that a benefit cannot be availed by paying the amount before the due date of filing return, like in case of others, statute duties, bonus, bank interest, or things of that type. This is an important issue which needs to be taken care of, because proviso was there earlier too. It is only a substitute, some amendment of the proviso, and a minor amendment generally escapes attention. Now, let us come to the analysis of section 43BH. Friends, I've talked about the applicability from assessment year 24-25 onwards. Two, that this will become applicable only in determination of income under the head profits and gains of business or profession. If you have any payment outstanding payable to a small or micro or small enterprise, which is in relation to a head of income other than profit and gains of business and provision, this clause will not get. One can get out. Maybe we were talking about capital gain. Expenditure incurred for making a transfer. Now, a chartered accountant like me can get himself registered under MSA. I could, when the client takes an advice from me, and first question is whether the limitation is for the registration should be there. I'll come to that. Because you are already started with the chartered accountant paying some capital gains. No, I'll come to that registration issue. We'll come to that registration. We have, first of all, we see under which head of it. You are selling a property, you take an advice from a chartered accountant who is registered under who is a micro and small enterprise, right? Registered and also registered under the MSAB. He raises a bill which remains outstanding as of 31st March 2024. Now, for determination of capital gain, whether this clause H could be invoked, I am the view that clause H in that case cannot be invoked for determination of income under the capital gain. It is to be restricted only when you determine income under the head income from profit and gains of business. This section also talks about any sum. If you look into this, let us synthesize this section as such. Any sum payable
Now, what will be the exact meaning of any sum payable? Whether this would include, say, a bill is raised, which would include a GST, or GST or other taxes, payable by the SE to a micro and small enterprise. Here comes your question. Whether this micro and small enterprise, what is this micro and small enterprise? Is it any micro and small enterprise, or it is a micro and small enterprise as defined in MSME Act and registered under MSME? This is the question that's generally traveling in. If we look at the Act as such, it is not compulsory for a micro and small enterprise to get itself registered. This is the general impression that yes, somebody satisfies the criteria of being categorized as a micro and small enterprise, but not mandatory. It is not mandatory. Section 8 of the Act. See, we have to read this 43BH in conjunction with what are the provisions of MSA. And that's more important because under the Income Tax Act, it's a very bland statement. That's simple that, okay, this is, it will not be. But what situation would come in? You have to go to a MSME Act as such to exactly understand the applicability of the cost per edge as well as of MSME Act. See, before that, I want to say, MSME Act specifies 3 categories: micro, small, and medium. But in the Income Tax Act, they have only 2, micro and small. Not medium. The idea is this. The idea is that you are initially taking care of only 2 categories of enterprises, micro and small. They are not, for the time being, they have not covered medium enterprises. Maybe maybe it could be politically or looking at the financial capacity of these enterprises. You wanted to ensure their interests, or safeguard their interests in the future. Now, what does Section 8 of the Act say? This is talking about memorandum of micro, small and medium enterprise. Again, you see, only the requirement when we talk about income tax, we come to MSME Act. It says memorandum of micro, small and medium enterprises. Here it's talking about 3. Any person who intends to establish a micro or small enterprise may at his discretion. It's not mandatory that you have to get yourself registered. Or a medium enterprise engaged in providing or rendering of services may at his discretion. Both present for both it is may at their discretion. 3. A medium enterprise engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the first Schedule to the Industry Development and Regulation Act 1991 shall file memorandum of micro, small or as the case may be, medium enterprise with such authority as may be specified by the state government or under subsection 4 of central government and subsection 3. Provided that any person who has before the commencement of this Act established a small-scale industry and obtain a registration certificate may at his discretion an industry engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified etc. shall within 182 days from the commencement of this Act file the memorandum in accordance with the provisions of this Act. Now, here is the distinction you see. It talks of
somebody wants to establish, and then it talks about a small scale industry or a medium industry engaged in the manufacture of particular goods shall within a specified period, that is 180 days, from the commencement of this act, file the memorandum in accordance with the provisions. So what is mandatory is the entities which are covered, which were created before the commencement with this act came into force, and which is they refer to a small scale industry, and which had obtained registration certificate. Here again, at his discretion. So the first impression would be that a registration is not. This is a personal issue, but there are certain judgments where they say that if an enterprise satisfies the conditions described under everything, then they cannot be denied. Friends, this is a very brief on this, but what is important? What is the most important thing in this? Payment. The Act provides that the payment is to be made by a particular date. And what is that date? The date is to be within 15 days of receiving goods or services from a small and micro enterprise. There could be an agreement between the supplier and the buyer that instead of 15 days, it could be more. It could be 40 days, 45 days, 60 days. But the Act says that in no case it can be beyond 45 days. So, as per MSME Act, the payment has to be made within a period of 45 days. What is the consequence of non-payment of amount within 45 days? Beyond this, beyond the 45 days, the buyer is liable to pay interest at a rate which is 3 times the RBI rate. RBI rate is somewhere 6 point something, 6.5 or something. So imagine the buyer is required to pay 3 times of that. If it is 6.5%, so it is 19.5%, which is to be compounded on a monthly basis. So at the end of each month, you will have to compound to work out as to what is the amount of interest. This particular amount of interest is not allowable as a deduction in computation of income. And incidentally, this is not provided under the Income Tax Act. The Income Tax Act does not provide that it is allowed. But it is provided under MSME, in the MSME Act, that any payment beyond. Now comes the excuse. How to be monitored? How to be monitored? And what is the responsibility of the enterprise and the buyer? As far as the buyers are concerned, for corporates, for the companies, the regulations were amended, and the companies are required to file details on a 6-monthly basis, the details of amounts payable to MSME. In our audit report of companies, the auditor is required to state the amount which is outstanding, as well as the amounts, the interest paid to MSME
during the 6 month period. So we are trying to put this condition of payment, trying to enforce it through other actions. Now, MSME Act, objective of MSME Act is trying to be achieved through Companies Act, through income, so that the entities classified as micro get a fair deal in the business. And when you go on the other side and talk to the traders, a lot of people who purchase goods from MSME, they have a bigger problem. No, sir. There is one thing. The definition of enterprise does not include traders. It is only manufacturers. No. See, when we talk about traders, it does permit to some extent. Somebody who engaged in the trading of goods manufactured by micro, there are specialized agencies which were at one point of time created to help the small scale industry. When they are created under number of state acts, so they can get into trading. But a simple pure trader, maybe yes. In case of a pure trader, it could be there could be that it is not covered. But our basic problem is that coming is you are purchasing from after all, that particular trader is also purchasing from a. But how to give my audit report first? Tell me. You see, audit, as far as audit report is concerned, you are the responsibility comes only in companies. Tax audit. Tax audit, and now you will also have to state this in your return. You will have to state in the return also. Yeah. So that is the amendment now that for fiscal year 24-25, in the return form also there are columns to give the details of amount standing interest rate, which is there in the tax audit report also. So it synchronizes. Now what is to be done? The buyer are generally aware that they are buying goods which are manufactured by micro or small. So the buyer and as a chartered accountant, when you are certifying the client should be asked to get a confirmation from all the buyers whether they get covered under it. And MSMEs are required to mention this in the invoices or the invoices that they issue. So that will be one. Suppose it is not there in the invoice. Generally in discussions with the view is that the buyer should write to the supplier whether they are covered. You don't get a response, you send a reminder. You don't get a response, you send another reminder. I think that will be sufficient to ensure that you have taken enough precaution to ensure whether the supplier is there are also other issues which should be and this being just a new section, it is yet to be tested. And the more of your cry now is because we are approaching 31st March 24. Any goods purchased before the time, any goods purchased which are to be paid by 31st March 24. If they are not done, what will be there? And in case it is noticed that in particular industry, the payments which are made to MSMEs take 6 to 8 months. 6 to 8 months they will take. So if this amount is to be disallowed, so if an enterprise which may have a nominal profit
which would turn into a huge profit, or even some enterprise may be having a loss on account of non-payment to MSME, it may turn into huge profits in the first year. Though you in subsequent year when you make the payment, you get the benefit of that. But it may result into a loss and the profit that you already have. Now there is no, and you have to pay tax on it. There is no way you can travel back to recover that tax. Sir, I have a question. Yeah, sure. Sir, does it related to traders also? This is I answered earlier. It is not related to a pure trade. But some traders are taking the registration under MSME Act. No, they are the ones who are dealing in the goods manufactured by small and micro enterprises. They can, and wholesalers can. If they are registered, then it is applicable. Suppose I am registered as a MSME and somebody is purchasing from me, does it be? Yes, then it is applicable. Yes. But what I came to understand that the traders are registered only for the purpose of loan only. For the purpose of loan. No, that is one particular part. That they are registered certificates like that. That is one particular part. But then when I think we. Am I right? If I please. Only the traders who have taken MSME for priority lending under there are numbers 46, 47, 48. They are not covered. If you are a pure trader and you have taken loan only for and made registration only for priority lending, in that case you are not covered. Pure Yes, traders that's are what my question. Pure traders are. This is like because many of the traders has taken MSME registration only for the priority lending, only for the loan. They are not covered. But another There important question. would be. Those registrants can cancel their registration also. No, because in many of the cases what has been observed that some of the traders have taken the MSME registration other than 46, 47, 48. Yeah. In that case, there is a misstatement then. In that case, we have to make the payment according by seeing the registration certificate. Because we are having registration certificate, how we can say that they were earlier registered not under manufacturer or service provider? If they will provide the declaration that they don't. But once they have provided the declaration, after that, because they will withdrawn is from particular date. For the earlier period, they will go on by that only, by the certificate in hand. Because when we withdraw the certificate, it is from the particular date. And this certificate is not universal. It may keep changing from year to year. If provided then you have a particular criteria of investment in plant and machinery and turnover. So that criteria could keep changing. But registration is not mandatory. Registration is not mandatory. They have said the registration because everywhere they say at the discretion. There is one class I still doubt because SC officers may do a tick listing. This is vis-a-vis the PF time because within the due date of PF Act. This also here they mentioned within the due date of MSME Act. That is 15 days and 45 days. So if payable within the month also if they make a mesh then. For example, if I have made the purchase on 25th of March 2024 and there is no agreement with him, in that case period is 15 days. I'm not telling about March and other things. Suppose in the month of May. No, in the month of May and you have made the payment before 31st March 2024, it is allowed. It is allowed. Because in any case you made the payment during the year. Before 31st March, it is allowed. Even if the purchases were made in April 2023. Though it may be a different thing that you will become liable to pay interest. Because the interest you will be liable to pay interest there, but deduction would be available to you. But the section is bit No, because it is. You see, the concept is that any sum payable, and you have paid during. See, if you see the Vizag Special Bench which is overruled by the AP High Court in Maitri transport case, payable they have different part. That was overruled. It is very clear. No, there are on payable. There may be some other issues also, like what happens to retention money, deductions, disputed amounts. So there would be a lot of queries on this. But this being a new provision, it is yet to be tested. When we get the experience,
we come across the actual issues, maybe we'll have to sort out and take a stand at that at that point of time. Yeah. By this, we come to the end of the fourth technical session and all the sessions for today. So now I request Shri Durjadhan Rana, advocate from Jagatsinghpur Bar, to kindly join here. We will be felicitating two advocates, Kailash Sharma from Khurda Tax Bar Association and Vasudev Chatterjee from Jamshedpur Tax Bar Association. Can we expect any suspension? Is the government thinking of extending the? No guess. No assurance has come from Sati side agent. Sir, किसकी side? అప్పుడు ఇస్తాడు అలౌ చేస్తాం డబుల్ డైరెక్షన్ వచ్చేదా ఈ వచ్చింది Sir, ticket. అప్పుడు అలౌ చేయండి everybody is empty, all is empty. सब empty. You will see the consequence of what is doing. हाँ श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव तरुण कुमार अग्रवाल मेरे मैं आपको मैसेज किया था सर मिश्रा यहाँ सुन अरे आसम अरे बूढ़ा लोग तो बोलो extend our heartfelt gratitude to each and every one of you for your participation in the and chairman of the last technical session, Tarun Kumar Agarwal, chartered accountant, for sharing their expertise, insight, and valuable integrated world of taxes. Your presentation has been enlightening, thought-provoking, and beneficial to all attendees. You are filling We your are extremely grateful for your time, effort, and dedication in making this conference a resounding success. Your contribution has not only improved our understanding of tax law, whatever you will Furthermore, I would like to thank our sponsors, partners, and volunteers for last but not least, special thank you to all the participants for your active engagement and contribution for making this conference
forward to continue the running of necessary collaborating in the future. Thank you once again. Members of the Bhubaneswar Tax Bar Association are requested to kindly come on to the dais. And by this we come to the end of all the sessions and the conference today. We hope to meet soon with new experiences and furthermore of the Gyan scenes. Bhubaneswar Tax Bar Association, please come down to dais for a group photo, please. जदू कह रहे जगह मिले नहीं जगह मिली पड़े आस आसत आस जगह मिली जदू सब जगह ओमनी प्रेजेंट से दूर से पहचान में आते Thank you. End of meeting, end of conference.